गुड मॉर्निंग तरुण जी। गुड मॉर्निंग विजय जी। मैंने आज थोड़ा मन का टी शर्ट पहनी है, मैंने कहा आज वीडियो ना बाद में ऑन करूंगा। नहीं ठीक बात है सर, संडे है आज तो चलता है सर। नहीं सर, मेरे तो एक भी संडे ऐसा नहीं गया ना कोट टाई के बिना। सर अब आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ना वो वाली टी शर्ट पहन के रखते हैं। नहीं ठीक बात है सर, ठीक बात है। सर हमारे 4 पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं, बाकी भी ऐसे। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग जतिन जी, संजय जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड अतुल सर। ये ज्वाइन कर चुके थे बस थोड़ी। हाँ हाँ ओके। सर आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मॉर्निंग तरुण जी। हाँ मॉर्निंग सर। जतिन जी डिस्कनेक्ट हो गए। चलो
Good morning, Rajesh sir. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Parveen ji. Good morning. Very good morning, sir. चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी अभी हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ थ्योरी पार्ट ही लेने वाले हैं. So it is not going to be problematic for anybody. सर हमारा टारगेट है आज मर्जर एंड एक्विजिशन, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन. So first of all, we'll study that what is the business rationale, why mergers, then what are the various types of mergers, then how to make valuation, what are the special points while making valuation for merger, and then the legal framework. What is the requirement of Companies Act? What are SEBI guidelines? What does Income Tax Act says? What is Stamp Act? What is Competition Act? What does FEMA say about it? And at last, accounting aspect about merger. You know, growth is one of the most important thing for a business. Now, growth can be either organic or it can be inorganic. So suppose you are a hotel or hotel chain situated in Delhi and you want to start your venture at Indore also. There are two ways to grow. One is you purchase a land at Indore, then you construct a building, then interior designing of the building is done as per the requirement of a 4-star hotel. Then staffing is done, then advertising is done, marketing is done, and then you start it. So that will take a very long period of time. Imagine if Oyo Room would have done this. तो सर 3-4 साल में आज वो यहाँ नहीं आए होते, वो जहाँ थे लगभग वहीं रह गए होते. So the other way is to grow through inorganic route, and inorganic route means buying a ready-made hotel in Indore, a running hotel. You buy it, you give it your brand name, make some modification to the staff, to the management style, to the building, and continue it. This is the inorganic route of growing. Nowadays, even a faster inorganic route is not to own anything, but just to become the aggregator of everything. That is the fastest one, even faster than merger. So what is benefit of merger, sir? You know, if you grow through organic route, it will take a very long time. But if you try to grow through mergers, it will be comparatively quick. It will be very fast. Number 2, economies of scale. If you are a small player, your cost of operations will be comparatively high. If you become a big player like Big Bazaar, in that case, your buying will be bulk and you will be in a position to bargain with your suppliers. Economies of scale. Some of the double effort of expenditure will also be eliminated. Then, overall cost of capital may also reduce. Sir, if I am a local entrepreneur situated in Indore only, and even the bank is not ready to give me loan, I'll approach NBFCs. Or I'll approach local money lender, Sahukar type of people. And they will charge me interest at the rate of, 1.5 रुपया सैकड़ा. I don't know, आप लोगों के वहाँ इसको कैसे pronounce करते हैं. If it is 18% per month, here in Central India, we call it 1.5 रुपया सैकड़ा. 1.5 rupees per 100 rupees per month. राजस्थान में भी ऐसे ही करते हैं सर. अच्छा, ऐसा ही है. बस 1.5 में कोई देता नहीं है, देता 2 या 5 में है. हाँ, सही बोल रहे हैं आप. सर सारी जगहों पे नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही होता है. हाँ, यूपी में भी ऐसे ही होता है. ऑलमोस्ट दिल्ली में भी ऐसे ही होता है. बिल्कुल. All right.
और सर बड़े मजे से अभी ये रेरा आने के पहले तक की सिचुएशन तो ये थी कि बिल्डर 2-2.5 रुपए में तो आराम से पैसा उठाते थे। सर 1,000 करोड़ की नेटवर्थ वाला बिल्डर भी 3% में तैयार बैठा है, हाँ, दुगनी अब तिगनी प्रॉपर्टी देके, वो भी मॉर्गेज करके। अच्छा मोर्टगेज करके, रजिस्ट्री करा के। अच्छा, रजिस्ट्री करा के, क्या बात है। तो दैट इज द सिचुएशन सर। मतलब ये इतना एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। When you grow in size and you are, very well organized and managed, you can approach NBFCs. They will charge comparatively less. If you grow further in size, you can approach banks. They will give you further a loan at a lower rate. If you are bigger than that, you issue debentures. आप अपने खुद की सिक्योरिटीज इशू करें तो बीच में से बैंक नाम का ब्रोकर हटेगा. You will directly approach public and you will be able to raise fund at 9-10% per annum. And if you grow internationally, so I know some of the companies, there are many companies, but I know some of the companies who have raised fund from Europe. अभी यूरोप की कुछ कंट्रीज में rate of interest is even negative for some of the transactions. Very low rate of interest, I just want to say. So they have borrowed money at the rate of 2% per annum, as low as 2% per annum. But then you will say there will be foreign exchange risk. That's Libor, sir. Sorry? They also pay Libor. हाँ, they also pay Libor. नहीं, हाँ, क्रेडिट स्प्रेड मिला के भी सर 2% पे भी कुछ लिस्टेड कंपनियां 6%, 6.5% you can get. पता नहीं सर, मेरी एक कंपनी है, अच्छा खासा बिजनेस करती है, उनके सीएफओ मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उनसे एक बार काफी लंबी बात हुई Good, sir. तो मे बी इट इज कंपनी टू कंपनी, इट मे डिपेंड. आई विल चेक इट सर, बट इफ यू आर सेइंग, definitely I will check it. But then you will say that this is the foreign exchange risk, management risk will be there, but it is not there for some of the companies. They are exporting goods to Europe, वहां से यूरो जनरेट हो रहा है, तो उनके लिए वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है. अब उस पैसे को वो अपना यूरो लोन पे करने के लिए अगर यूज कर लेंगे, so in that case that will be a natural hedge in the balance sheet. Yes. Yeah. So that's a double benefit in fact. So if you grow in size, then your cost of capital will also reduce and you will be able to face international competition in that case. With lower cost of capital, definitely you can sell your product at comparatively lower price, or you can enhance your quality at the same price and you'll become more competitive. Then, in suppose if there is a merger, like you buy the company who is supplying raw material to you, you buy the company to whom you are selling finished goods. So the whole supply chain is in your hand. You captured the entire supply chain. Sometimes what happen कि एक process है, एक product है जो process 1, process 2, process 3 से होकर के और आगे बढ़ता है. Process 1 पे company X is working, process 2 पे company Y is working, process 3 पे कंपनी Z is working. तो sometimes पता पड़ा X और Z ने मिलके Y का सैंडविच बना दिया और Y की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो गई और उस बिजनेस से बाहर हो गया. But if the entire supply chain is yours after merger, then the benefit is if the profit is accruing at any of the stages of production, then you will be able to survive in the market. If you are just working at one of the stages of production, then you may or may not survive. So that is another benefit of merger, sir. Then you become the price leader, like Reliance Jio is going in that direction. You become the price leader, competition will be eliminated or it will be minimized. Though we have Competition Commission of India, but still you can become the price leader, you can control entire market. Income tax benefit, सर आपकी जो हमारे छोटे छोटे क्लाइंट्स होते हैं उनकी हम HUF फाइल बना देते हैं, नॉन अर्निंग मेंबर्स की अर्निंग शो कर देते हैं, शेयर प्रॉफिट व्हाटएवर, ब्यूटी पार्लर इनकम भी चलती है. But at bigger level, the tax planning may be like this. You buy a sick company which is otherwise going to be wound up and it's carried forward losses, you can take advantage of it. अभी nowadays पिछले 1 साल से जो one of the craze of merger was group companies का merger to reduce the compliance cost. So under my umbrella there are 300 companies. Now I need services of 300 chartered accountants for auditing.
I need company secretaries, I need GST registration, I need this registration, I need that registration. A lot of compliance is there. So मैंने 10-10, 20-20 कंपनी अपने ग्रुप की मर्ज कर दी, 20 कंपनियों को मिलाकर के एक कंपनी बना दी. One of the motive of merger is to reduce the compliance cost. Now, what are the various types of merger and acquisition? So look here, the merger and acquisition may be either horizontal in nature, or it may be vertical, or it may be conglomerate, or it may be reverse merger, or it may be congeneric merger. What is horizontal merger, sir? If two companies which are operating in same line of business activity, if they are merged, it is named as horizontal merger. तो अभी अपने सराउंडिंग में यूजुअली हम जितने भी मर्जर्स देखते हैं 95% or more are horizontal in nature. So merger of banks, as you are seeing, it is horizontal in nature. Vodafone Idea merger you have seen, that was horizontal. The entire telecom industry consolidation which happened in last 4-5 years, those were all horizontal mergers. तो अपने आसपास में अभी some of the biggest merger acquisition, like Facebook ने जिस तरह से सबको acquire किया, Instagram को acquire किया, WhatsApp को acquire किया, that is kind of horizontal merger. Flipkart has been acquired by Walmart, and now in this month only, Flipkart acquired the business of Walmart in India. Now, Flipkart is a kind of division of Walmart, a subsidiary of Walmart, whatever their structure is. But Walmart are having their own setup also in the name of Best Price and some other brands. So now Flipkart acquire all those brands, not all, but some of the major brands. All these are biggest horizontal mergers, I can say. Tata Chorus several years back, $12 billion. Flipkart Walmart was $20 billion. Idea Vodafone merger, and before that Vodafone Hutchison merger, that was also $10 billion merger. Horizontal merger, same line of activity. In fact, the product is also same. Vertical merger. So if you are buying a company which is downstream or upstream, that is vertical merger. It can be either backward merger or it can be forward merger. So there is one company which is manufacturing yarn, धागा बनाने का काम करते हैं. Then other company is there who is making suitings and shirtings from that yarn. And a third company is there who is making garments, say shirts from the cloth. Now, if this suiting shirting company, this cloth manufacturing company, textile mill, if it acquires the yarn manufacturing company, that will be backward vertical merger. So you are acquiring an upstream company which is providing raw material to you. This is vertical merger, and this is the backward vertical merger. But if you acquire a company which is manufacturing shirts, a downstream company which is buying your goods, that is also a vertical merger, but that's a forward vertical merger. Mergers हो नहीं हो सर, but backward integration तो बहुत सारे business houses करते हैं. When Reliance Group started, initially it was very good example of vertical expansion, backward extension. कहाँ से चालू करते पीछे 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 आते हुए सारी चीजें ली, and now they are conglomerate into any type of business which is profitable. So backward merger and forward merger, backward integration तो बहुत common है, पर backward forward merger के real life examples जरा मुश्किल से मिलते हैं. तो अगर आपके पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल हो जहां कुछ बड़ी डील्स हुई हो बैकवर्ड फॉरवर्ड मर्जर्स में, सो प्लीज डू कोड इट. हम उसको गूगल करेंगे और थोड़ा स्टडी कर लेंगे अभी. Then there are conglomerate mergers. So it's like merger of Tata Steel and Bata Footwear. No connection. Or Infosys and ACC merger. So that's the conglomerate merger. Conglomerates are many. Like all business houses are conglomerate. They are not into one business. Now Reliance Industries Limited, अब वो अपने आप को पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कहलवाना पसंद नहीं करते. वो अपने आप को एक टेक्नोलॉजी कंपनी कहलवाना पसंद करते हैं.
So conglomerates are there, but they organize each of the business into a different company. Conglomerate merger will be when two companies doing two different business, they are merged. And under one company, under one incorporated company, they are doing more than one business thereafter. That will be conglomerate merger. Conglomerate mergers are actually rare. जब मैंने सर्च किया तो हिंदुस्तान में तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के बड़ी डील के एग्जांपल तो मुझे नजर ही नहीं आए. अगर आपको मिलते तो जरूर मेरे साथ भी शेयर करिए. So at one point of time in 1960s and 1970s, you know, the antitrust law, अभी आपने देखा कि अमेरिका की जो 4 दिग्गज कंपनियां हैं, फेसबुक है, अमेजॉन है, गूगल है, एंड वन मोर वाज देयर, उन सब की वहां के कांग्रेस में एक तरह से पेशी हो गई कि यू आर किलिंग कंपटीशन इन दिस कंट्री, राइट? So in 1960s and 70s also the antitrust law in USA was very strong. So they were kind of discouraging any kind of monopoly, oligopoly, something like that. So mergers were kind of restricted. But sir, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास पैसा है, काम करने की इच्छा है, तो आप मुझे एक डायरेक्शन में रोकोगे, दूसरी डायरेक्शन में काम करूंगा. So when you are stopping me from doing horizontal merger, I started doing conglomerate mergers. So one such classic example is ITT, International Telephone and Telegraph Company. It acquired several unrelated businesses to become a huge conglomerate. Although ITT had acquired several related telecommunication companies previously, in 1959 the company began the acquisition of unrelated enterprise due to strong antitrust law. For example, car rental company. So telephone company acquired a car rental company, Avis Incorporated. Then a telecom company, ITT, also acquired hotel chain, Sheraton Corporation, and also acquired a banking company, Continental Banking Company. These were 3 unrelated companies that ITT acquired. Conglomerate merger, example of conglomerate merger. Then General Motors and EDS merger, Electronic Data Systems. अभी आज की तारीख में एक ऑटोमोबाइल कंपनी और टेक्नोलॉजी कंपनी का मर्जर हो तो हम उसको कॉन्ग्लोमरेट नहीं कहेंगे, क्योंकि अब कार्स भी टेक्नोलॉजी पे चलती है, सिर्फ मैकेनिकल होना जरूरी नहीं है उसका. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मर्जर ऑफ a car manufacturing company and a data processing company was conglomerate merger, though it was a failure also. 1984 it started, it lasted until 1996 only, and they again separated. Congeneric merger, this sounds something like horizontal merger only. यहाँ 2 ऐसी कंपनियों का मर्जर हो रहा है जिनकी लाइन ऑफ एक्टिविटी सेम है मगर प्रोडक्ट डिफरेंट है. सो सपोज दैनिक भास्कर डीबी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अक्वायर्ड बाय सीएनबीसी टीवी 18 व्हाटएवर नेटवर्क कंपनी, क्या नाम है उसका, जो भी है, सीएनबीसी टीवी 18 इज द ब्रांड नेम. सो इफ दैनिक भास्कर इज अक्वायर्ड बाय सीएनबीसी ग्रुप, नाउ one is into electronic media and internet, and other one is a newspaper. So both are into media business. Their line of activity is same, but one is print media, another one is electronic media. That is congeneric merger. Product is not exactly same. So Citigroup acquired Travelers Insurance. So banking company acquiring an insurance company also. Finance company acquiring an insurance company also. They are into finance business. Both of them are into finance business, but their product offering is not exactly same. That's why it is congeneric merger. Sometimes the line between congeneric and horizontal may be blur. Reverse merger. So usually big companies acquire small companies, but when small companies acquire big companies, usually holding companies acquire subsidiary companies. But when the associate or subsidiary company acquires its parent company, that is reverse merger. छोटी कंपनी बड़ी को अक्वायर कर ले, एसोसिएट अपनी पेरेंट को अक्वायर कर ले, that is reverse merger. It is also named as takeover by reverse bid. It is also named as takeover by reverse bid.
So one such example was merger of ICICI into ICICI Bank. So ICICI was a public financial institution. Probably it was incorporated in 1950s or somewhere. Year मुझे ठीक से याद नहीं, but काफी पुराना इंस्टीट्यूशन था. But eventually सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का बोझ ढोते हुए ICICI started to begin sick. Meanwhile it floated a bank, ICICI Bank. ICICI बैंक ने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में क्रांति लाई हमारे देश में. Later ICICI Bank became so strong and ICICI became so weak that eventually ICICI Bank acquired ICICI. That was takeover by reverse bid. Similarly, the Indian steel company Tata Steel, it acquired a European steel company named as Chorus. So what happened in this deal was, this dark blue bar is production of Tata, and this light blue bar is production of Chorus. So Chorus was much bigger in size as compared to Tata. Still, Tata has acquired it because Chorus was not in good financial position. And that's why this merger happened. Later, they named it as Tata Steel Europe. And eventually, that is also not a success story. The company is in debt trap. Probably some 12 billion euros of debt is there in their balance sheet. They are not in good position. Tatas play very ethical, and sometimes, that may or may not be successful. Now Tatas are in talk to acquire AirAsia from their Malaysian partner, because that's also a loss-making venture now. And after COVID-19, they are suffering further loss. So the Malaysian partner, Mr. Fernandez, probably his name is ready to sell his stake 49% just for $50 million. Okay, so why reverse mergers happen? One of the reason is the small company is strong and the big company is sick. Okay. Other reason is, in India, if you acquire a sick company and its business and shareholder and asset, everything is acquired, and thereafter the sick company's entity comes to an end, वो sick company को आप बंद कर देते हो क्योंकि उसका सब कुछ आपने अपनी कंपनी में ले लिया. तो इंडिया में तो आप उसका लॉस यूटिलाइज कर सकते हो, बट देयर आर सम कंट्रीज जहां सर्वाइविंग एंटिटी का लॉस ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. इफ एन एंटिटी कम्स टू एन एंड, इट्स लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड. सपोज इंडिया में भी यही लॉ होता, फिर हम क्या करते हैं, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो जाके छोटी सिक कंपनी में मर्ज हो जाती है, और छोटी सिक कंपनी का एग्जिस्टेंस, उसकी एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता, और बड़ी कंपनी को हम बंद कर देते. तो टैक्स लॉस तो जो करवाएं वो कम है सर. जहां टैक्स की बचत होते हुए दिखेगी, वी विल डू एनी काइंड ऑफ प्लानिंग. वी आर रेडी टू डू एनीथिंग. बहुत अजब गजब निराली डील्स लोग बनाते हैं, उसके बाद अगर टैक्स प्लानिंग हो सकती है तो. Then sometimes in some countries, some trademarks or licenses or patents, they are not transferable from one company to other company. So even if you acquire other company, you will not get its patents and trademark and license. So better है कि आप उस कंपनी में जाके मर्ज हो जाएं. वो छोटी आप बड़े हैं तो भी आप उसमें जाके मर्ज हो जाएं, क्योंकि पेटेंट्स तो उसके पास वहीं कंटिन्यू हो सकते हैं, ट्रांसफर नहीं हो सकते. One more motive for reverse merger is backdoor listing. In USA, it was a popular route for Chinese companies. So unlisted big Chinese company, they will search for a US listed company which may be small in size, and the big company will go and merge into the small listed US company. So big Chinese unlisted company will go and merge into small US listed company, backdoor listing, which is called. Now in India, I am not really aware about it, but sometimes some of the participants said it happens in India also. I have never practiced it, so I can't comment on it. But yes, some people say it happens in our country also. Sir, आज मैं जिस एरिया में आपके साथ में हूँ, merger, this is not my core area, sir, because it talks more about law and less about finance.
So I wish that if you have any information to supplement, feel free to contribute, sir. Now, mergers may be either normal or reverse, that we have already seen. Now we will talk about demergers, which may be a sell-off, spin-off, or equity carve-out. And then we will talk about acquisition. So sometimes you don't do the merger formality. I don't know whether that example is a perfect or not. If merger is like marriage, acquisition is like live-in, and demerger is like divorce. So this acquisition is you purchase shares in the company or you just acquire some of the assets in the company, and the merger formalities are not done. You may acquire share or you may acquire just asset. Acquire share and make it your associate, make it your subsidiary, and acquire asset and don't have any organizational connection. So first let's explore sell-off, spin-off, and equity carve-out. So I'll give you one example of sell-off. ABC Industries Limited. It has two divisions. They are into steel scrubber manufacturing. स्टील स्क्रबर एकदम लोकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो बर्तन मांजने का पूंछा. सर बहुत बड़ा बिजनेस है ये. खैर हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है. We are more than 130 crores. So whatever we do, it is big. In years to come, India will be most populated country. China will be at number 2. Division B, software division. So originally it's a steel scrubber manufacturing company. Later the promoters thought that, this technology guys are booming crazily. So they tried their hands on software business also. They did it for 5-6 years, 7 years. Later they realized that we are manufacturing people, we are industrialists. The software is quite a sophisticated business and we are not a good fit for it. So let's get rid of it. Here demerger means sell off. So I'll sell off my software division to a third party, not to my group company, but to a third party. I found a buyer, XYZ Limited. We negotiated a price and my software division was transferred to this third party. This third party will give me cash. This cash will be utilized in my core business to grow its size. This is sell-off, sir. One business is going out of your portfolio. It will not remain in your group at all. It will go to a third party. Spin-off. Same example. ABC Industries Limited. There are shareholders in the company, obviously. 2 divisions. Steel scrubber, software. Then there is the promoters of ABC Industries Limited, same promoters, they form a new company, ABC Software Limited. So it's a group company. Now it's not a third party. That's the major difference between sell-off and spin-off. In sell-off, it goes to a third party. In spin-off, just the organization is separated, but it remains within the same group. This division is transferred. Suppose both of these divisions are profit-making, sir. Steel scrubber is a profit-making division. Software is also making a little profit, but still, yes, it's a profit-making division. और promoters को लगा यार इसमें जो time और energy लगती है ना वो अगर यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा profit कमाएंगे. यहाँ profit उतना मजा नहीं है तो सही पर वो करारा profit नहीं है एकदम. So they decided to spin it off into a separate company. Okay. Now this new company, ABC Software Limited, it has to give consideration. It's a newly formed company. It doesn't has cash. So it will issue its shares to the shareholders of ABC Industries Limited. So earlier, shareholders were holding shares in one company. They were getting one AGM notice. They were attending one AGM. Now they are having shares in 2 companies. Their demat account, demat statement will show 2 companies.
They'll get AGM notice for 2 companies. They can attend 2 AGMs. They can cast vote for 2 AGMs. There will be 2 board of directors. There will be 2 managing directors. A separate set of management will be there. What is the benefit, you know? There is a saying, Hindi saying, बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पौधे बड़े नहीं होते. मैनेजमेंट के पास जब एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है ना, तो सारा फुटेज वही खा जाता है. The second, other projects, they don't get attention. उनको attention चाहिए, उनको नई breathing space चाहिए. They need some sunshine. Software division was saying, give me some sunshine, give me some rain. So to give them separate sunshine and some separate rain, इस shadow से बाहर लाना पड़ेगा. तो एक अलग industry बना दिया, अलग company. Probably it was year 2004 जब मुकेश और अनिल अंबानी साथ में हुआ करते थे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में स्पिन ऑफ हुआ था. तो 4 नई कंपनियां बनी थी उसकी वजह से. जैसे यहाँ मैंने एक नई बनाई है. So shareholders who were shareholder in RIL, they become shareholder in 5 companies. So my uncle was having shares in RIL. ये एग्जांपल मुझे हर बार ही याद आ जाता है पढ़ाते समय. So he used to say, उस जमाने में वो उनके लैंग्वेज में कहते थे, हमारे शेयर्स ने अंडे दिए, हमारे शेयर्स ने बच्चे दिए. अब हमारे पास ज्यादा कंपनियों के शेयर्स हैं. ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर. आफ्टर दिस स्पिन ऑफ, व्हाट विल हैपन टू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड? Lower. Reduce. Okay. Who said? Atul sir. Okay. And Shubham ji is saying fall. Okay. And what do other people say, sir? Okay, Rajesh sir is also saying fall. Jatin ji is saying reduce. It depends. Normally reduce. That's true, sir. Both are profit-making companies. That's why I told you at the beginning. Anju ma'am, what do you say? It may both increase or decrease. Fall. Okay. Amardeep ji, have you probably you spoken out, no? I have not, I couldn't see at that time. Yes, so majority is saying it will fall and majority is right, sir. It's very simple, na? Because your asset base is reduced, na? Land, building, plant, machinery, furniture, fixture, सब तो कम हो गया. फ्यूचर में आने वाली सेल और कैश फ्लो भी कम हो गया. सो प्राइस ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड विल डेफिनेटली फॉल. जेपी इंडस्ट्रीज का भी ऐसे ही होता ना, वो जेपी नहीं, नॉट जेपी, जेके इंडस्ट्रीज, उसमें से जेके सीमेंट अलग आ गया था. But shareholders will not suffer a loss. Suppose this share was earlier quoted at 1,000 rupees. After spin-off, its price may come down to 700. But at the same time, this newly listed company, ABC Software Limited, it may command a price of 400 rupees. So 700 rupees plus 400, 1100. You know why merger? For wealth maximization. Why demerger? For wealth maximization. So in 2004, around when RIL demerger happened, spin-off happened. So within 6 months or within a year, the price, if you make a sum total of those 5 companies' market price, the sum total was much bigger than the pre-demerger price. Value unlock हो जाती है sir. Bajaj Group में भी sir spin-off हुए. That's perfect. Bajaj demerged into Bajaj Motor and Bajaj Finance. Okay. Thank you for sharing, sir. Perfect, sir. तो अभी यहाँ पर ये स्पिन ऑफ मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं, बट इट डिपेंड्स, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है. सर स्टेट्स तक के स्पिन ऑफ होते हैं. मध्य प्रदेश वाज स्पिन्ड ऑफ इनटू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड काइंड ऑफ दैट वाज सक्सेसफुल. Combined GDP of MP Chhattisgarh is much better than the individual MP GDP before demerger. Bihar and Jharkhand and Uttar Pradesh and Uttaranchal. But about Telangana and Andhra Pradesh, people say it's not really a success. Some people are suffering.
and some people are at advantage. Network and Hathway are Geo Telecom cable business companies for dish TV sector. Yeah, they acquired actually. They acquired these two companies which are into the broadband business. Probably that was not exactly spin-off. Right. It's recent, yes, but not spin-off. Now, equity carve-out. So, several mergers may. Okay. So, equity carve-out is ABC Industries Limited, Division A, Steel, Division B, Software. Now they form a new company, ABC Software Limited. Software division is transferred. But this time, AB equity carve-out we are studying, sir. ABC Software Limited is not going to issue its shares to the shareholders of ABC Limited. This can also be a way of demerger. This newly formed company, it is allotting its shares to its parent company, main company, ABC Industries. So this will become a wholly owned subsidiary. Now tell me, sir, what will happen to the share price of ABC Industries Limited? Will it reduce, increase, or expected to remain same? Or let's may remain same. It can increase due to some benefits, but definitely it will not reduce. There are chances to increase ना भाई wealth बढ़ाना इसीलिए तो demerger कर रहे हैं तो there are chances कि वो increase हो सकती but I just wanted to check कि वो reduce होगी या same रहेगी अगर दो ही choices मैं आपको दूं तो reduce तो वो नहीं होगी क्योंकि शेयर्स तो अभी भी ABC इंडस्ट्रीज के पास ही हैं बट ये इक्विटी कार्व आउट नहीं है सर ये अभी तक तो स्पिन ऑफ ही है व्हाट इज इक्विटी कार्व आउट अभी आपने एक सेपरेट डिवीजन बना दिया बट अब इस सेपरेट डिवीजन को फ्रेश फंड भी तो चाहिएगा बरगद के पेड़ के नीचे उगे हुए पौधे को आपने जमीन में से निकाला और बाहर सनशाइन में लगा दिया पर वो अपनी जड़ें पकड़े उसके लिए थोड़ा पानी खाद तो डालना पड़ेगा इट नीड्स फंड so they will come up with a public issue or a private placement to new people still it will remain a subsidiary but now it will not be a wholly owned subsidiary it will be just be a subsidiary with this money division B will grow this issue of share to new people it is actually equity carve out so that is the difference between spin off and equity carve out now rather than merger you can go for acquisition also so either you can acquire shares in the company or you can cherry pick assets in the company so you like the business of a company you target that company you crack the deal but you organize the deal on papers in such a manner that I am acquiring all assets of the company but not the company itself once I acquire assets I'll pay consideration to the company's shareholder and then this company either may continue or it will be wound up you know why asset acquisition in place of share acquisition reason is very simple that if you go for asset acquisition if you acquire shares in the company will become your company and it may come in with some hidden liabilities पूरा बैगेज अगर आप खरीदते हैं
तो उसमें से कुछ सांप कुछ बिच्छू निकल करके बाद में आ सकते हैं. So if you are worried about some contingent liabilities which will be materialized, or there may be some hidden liabilities which may pop up in future, then rather than acquiring shares in a company and making it your own company, better to acquire assets in that company and not to acquire ownership of the company, because then all liability will be yours. But there is a disadvantage sometimes of asset acquisition. Later we will study that mergers are also subject to stamp duty. Now in some states, in most of the states, the stamp duty rate for merger are very much similar to the stamp duty rate for transfer of immovable properties, because mostly there are immovable properties in the company. But in some states like Telangana, they charge favorable stamp duty for merger, say 2%, and unfavorable for immovable property, say 5%. So now that's the thing. If you go for asset acquisition, then from the point of view of stamp duty, it will be costly. And from the point of view of liability, it's okay. But in most of the states, the rate of stamp duty on immovable property and asset acquisition is more or less same. Like Madhya Pradesh, it is same. Madhya Pradesh is a very unfavorable state as far as stamp duty is concerned. So if you are not worried about, income tax implications will also be there. If you only acquire assets, then the capital gain will arise. Lots of problem will be there. Na? Merger may be tax neutral, but asset acquisition may be chargeable to income tax also. So you will have to look at all the angles. Reasons for failure. I told you mergers are like marriages. So mergers can also fail. Overestimation of growth. So you target a company, you make valuation कि मैं क्या भाव में खरीदूंगा. You estimated that it will grow at the rate of 10%. Accordingly, you paid the price. But after acquiring later, you realize that, oh my God, this will grow at a rate not more than 3% per annum. Okay, tell me, sir, अगर आपने एक कंपनी की ग्रोथ रेट का हायर एस्टिमेट करा है, तो उस हायर ग्रोथ की वजह से वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट आया होगा? वैल्यूएशन would have gone up, high valuation or low valuation? High. Okay. बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज. आपने ग्रोथ रेट कुछ ज्यादा ही सोच ली, उतनी है नहीं एक्चुअली. यस, योर वैल्यूएशन मस्ट हैव गॉन अप. महंगा खरीदेंगे तो मर्जर विल बी अ फेल्यूर. Then overestimation of expected synergies. You thought that 2 plus 2 will become 22, जबकि 2 plus 2 5 हुआ. हाँ, कुछ सिनर्जी आई मर्जर से, मगर उतनी ज्यादा नहीं जितना आपने सोचा था. मर्जर तो नहीं, लेकिन फेसबुक ने शेयर अक्वायर किए रिलायंस जियो में. अमेजॉन सोच रहा है कि रिलायंस स्मार्ट में वो शेयर परचेज करे, रिलायंस रिटेल में. उन लोगों को काफी सिनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि फेसबुक एंड रिलायंस जियो टुगेदर वी विल टैंगो वाली बात उनको दिख रही है. हो सकता है उतना बेनिफिट उनको ना मिले जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया है. ओवर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सिनर्जीज. नाउ दैट्स द थिंग. आपने ज्यादा सिनर्जी सोची, ज्यादा प्राइस पे कर दी, मर्जर विल बी अ फेल्यूर. Failure to undertake a thorough due diligence of the target. Sir,
जो आप खरीद रहे हैं उसको ठोक बजा के तो देखना ही पड़ेगा ना। एक मटका भी आदमी खरीदता है तो उसको भी टक 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 बजा करके और चेक करता है, अच्छी आवाज आ रही है मतलब अच्छा है। So due diligence is very much required. If there was not proper due diligence तो सर वैसा होना चाहिए जैसा अरेंज मैरिजेस में पेरेंट्स करते हैं। काउंटर पार्टी की एवरी पॉसिबल इंक्वायरी, बस इतना मालूम होना चाहिए कि काउंटर पार्टी बिलोंग्स टू एक्स सिटी। फिर वो एक्स सिटी में अपनी सारी रिश्तेदारी और फ्रेंडशिप के सोर्सेस लगा देंगे। यू डोंट नीड डिटेक्टिव एजेंसीज, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि उनके 4 जनरेशन के बारे में सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट 4 दिन में आपके सामने होते हैं। दैट काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस इज गुड। अगर वैसा कंपनीज में हो तो फेलियर के चांसेस कम होंगे। Then failure to successfully integrate after the merger or acquisition. Integration may pose many problems. No? Sometimes it may be a technological integration. So I'm working on X technology platform, your accounting and everything is on Y technology platform. One company is on SAP, other is on Oracle. Merging two together is not going to be easy. Cultural difference. So when a private sector undertaking acquires PSU, तो साहब पीएसयू में जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे लोग तो मेहनत करते नहीं है, या उनको टारगेट भी नहीं दिए जाते इस तरीके कि वो मेहनत करें। एंड व्हेन अभी years back I was having account in Bank of Rajasthan, yes, management issue. So Bank of Rajasthan at that time was acquired by ICICI Bank. सर क्या नक्शा बदला है, मैंने अपनी आंखों से 2 साल में सब बदलते हुए देखा है। First of all, the interior design of the premise was changed. It became fancy, attractive. And second thing I observed, they become very polite and service oriented. They were ready to help me crazily. Third thing, what I saw, many people who were like in their 50s of age, they took voluntary retirement. Because ICICI Bank, yes, ICICI, no, some people remained there, some lower level staff, it remained there. Most of the people went out क्योंकि ICICI के प्रेशर में काम करना उनके बस का नहीं था। जो रह गए, जो बच गए कुछ साल बाद तक भी, जो अपने पूरा रिटायरमेंट तक अपनी सर्विस दे रहे हैं, आज भी हैं वहां पे, their behavior changed drastically. बड़ा अच्छी सर्विस वो देने लग गए। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज और होगी, 4 महीने उन्होंने अच्छी सर्विस दी एंड देन दे स्टार्टेड पुशिंग सम प्रोडक्ट। अरे सर वो मुझे कुछ सेविंग अकाउंट्स का, एफडी का, इसका उसका टारगेट है, कैन यू गिव मी समथिंग। सो cultural difference. Now some fancy terms, and these terms are mostly for hostile takeovers, unfriendly takeover. When I say hostile takeover, it means takeover against the wishes of the management of the company. आपने बोला X company हमको पसंद आई, हम खरीदेंगे। Management of X company is saying it's not available for sale. आपने बोला ठीक है हम शेयर होल्डर्स से खरीद लेंगे। Hostile takeover. And defenses against hostile takeover. Some of the terminology. Street sweep. So the acquirer quietly buys shares of your company from the market. You know, in different names, they will start acquiring shares in your company, and one day they will have majority stake, and they will suddenly come out. Yes, we have got majority shares in your company. Now you get out. It doesn't happen in India, na? Because SEBI takeover regulation says कि आप 25% का limit touch या cross करते हो तो you need to come up with open offer. But yes, internationally it may happen. Street sweep, bear hug. Yes, sir. In India it doesn't happen, but somewhere in the world it happens. That's why the terminology is there. If a bear hugs somebody, he'll choke you.
So if you're targeting a company, the management is not ready to compromise, choke their supply of important resources, put them in trouble, and one day they will be on their knees. फिर वो घुटनों के बल बैठ के बोलेंगे माफ करो जो ये कंपनी आप रखो या हम इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं. I don't know, but as a spectator from outside, I see that Reliance is doing the same thing. Vodafone, Idea, Bharti Airtel, and all other companies which never survived thereafter once the Jio came. So one of the way of choking them was AGR, aggregate gross revenue. अगर सर आप कभी उसका DOT वर्सेस भारती एयरटेल एंड DOT वर्सेस वोडाफोन आइडिया का जो डिसीजन है AGR का वो पढ़ेंगे तो एज अ कॉमन मैन आपको भी वो स्ट्रेंज लगेगा. So telecom companies, why is predatory pricing not preventing it? So they are the king makers. Reliance group of company, आपने गुरु पिक्चर देखी होगी ना. They are king makers. He is not king himself. You know, my brother-in-law used to say it as a joke कि बोले यार मुकेश अंबानी को प्रधानमंत्री बना दो यार, खत्म करो मतलब बात डायरेक्ट. दैनिक भास्कर was reporting ना yesterday probably कि if Reliance Industries Limited is a company, then the wealth of Reliance Industries Limited is more than GDP of 135 countries in this world. You can't stop them. So AGR thing was कि ये लाइसेंस खरीदते हैं, स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, तो कुछ फिक्स फीस देते हैं और कुछ रेवेन्यू शेयरिंग होती है. तो वो 3G के टाइम पर अगर सरकार ने बोला, DOT ने बोला कि whatever revenue you earn, you need to give, say for example, whatever 10% of revenue. 10% I'm not sure, I'm just giving example. जो भी आपका रेवेन्यू होगा उसका 10% भी लाइसेंस फीस के फॉर्म में आप देंगे. उन्होंने दिया. फिर इन्होंने डिस्प्यूट निकाल दिया कि नहीं, मोबाइल बिजनेस प्रीपेड पोस्टपेड रेवेन्यू नहीं, आपके कोई अदर बिजनेसेस हैं उसके रेवेन्यू भी जो इस कंपनी में चलते हैं वो भी जोड़िए, उसका भी 10% दीजिए. कोई एसेट बेच के आपके पास में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी नहीं, अमाउंट जनरेट होता है, उसका भी 10% आप हमको दीजिए. आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम होती है, उसका भी 10% हमको दीजिए. और पिछले कुछ सालों की रिकवरी निकाल दी और उस पर इंटरेस्ट और उस पर पेनल्टी. अब कितना, शायद वोडाफोन आइडिया से तो वो 53,000 करोड़ कुछ मांगते हैं, भारतीय एयरटेल से 12-15 हजार करोड़ कुछ मांगते थे. So they are literally now out of business. Yes, Shailendra sir, that's yes, definitely. सब दोनों हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं. इट्स बिजनेस ना, हम प्रोफेशन में भी हम में से कई लोग ऐसा करते हैं. So I'm not saying that some fellow is bad or good. हम लोग कहाँ अच्छे हैं सर इंडिविजुअली, हम भी बुरे ही लोग हैं. हमको भी जहां मौका मिलता है हम भी अपने तरह से कुछ ना कुछ काम करते ही हैं. Everybody, not everybody, but most of us. So no one is perfect sir, no one is perfect. हम पॉलिटिशियंस को बुरा बोलते हैं पर वो भी हमारे बीच में से ही हैं, हम ही ने उनको चुना है, हम ही लोग इनएक्टिव हैं उनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए. सो इट्स इंडिया ना, वी डोंट चलता, एटीट्यूड इज देयर. डाइवेस्टिट्यूचर सर, नाउ divestiture is, if now this is the merger defense technique. If somebody is chasing you because you have some valuable asset and you want to get rid of that chase, कि नहीं भाई मुझे मत खरीदो यार, बोले नहीं आपके पास तो बहुत अच्छे पेटेंट्स हैं हम आपको खरीदेंगे, तो वो जो आपकी क्राउन ज्वेल है, इंपॉर्टेंट एसेट है, उसको आप स्पिन ऑफ कर दो किसी दूसरी कंपनी के अंदर. तो मेरे पास डायमंड है, चोर मेरे पीछे हैं, मैं डायमंड फेंक के आपको पास ऑन कर दूंगा, आप मेरे भरोसे में हो.
At least they will not chase me now. And chasing you is difficult for them. Divestiture. You spin off the most valuable asset so that you no more remain a target. Poison pill. Here, the company issue warrants to existing shareholders to buy shares at a dirt cheap price in future. कंपनी में भविष्य में सस्ते शेयर खरीदने का ऑप्शन जो है वो पॉइजन पिल है. So if someone acquires your company, in that case, you know what happens? In that case, they will be in an awkward position कि अब आपके पास उस कंपनी में भी सस्ते प्राइस पे शेयर लेने का ऑप्शन है. पॉइजन पिल. ग्रीन मेल. So you see that somebody has got 15-20% shares in your company and you see them as a potential takeover threat कि यार ये हमारी कंपनी में शेयर इकट्ठे कर रहे हैं और किसी दिन ये तकलीफ देंगे, तो आप अट्रैक्टिव प्राइस से उनसे शेयर बायबैक कर लेते हैं, या तो प्रमोटर्स खरीद लें या कंपनी बायबैक कर ले. दैट इज ग्रीन मेल. व्हाइट नाइट. तो एक बात तो तय हो गई कि मुझे अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी क्योंकि मेरा सर्वाइवल डिफिकल्ट है. मुझे अपनी कंपनी बेचनी पड़ेगी क्योंकि मेरा सर्वाइवल डिफिकल्ट है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं हॉस्टाइल कंपनी के हाथों में जाने से अच्छा फ्रेंडली कंपनी के हाथों में जाना चाहूंगा. So company X is targeting me. Once they purchase my company, first of all, they will remove me out. Company Y comparatively better है, वो मुझे मैनेजमेंट पोजीशन पे रहने देंगे, तो I'll sell my business to them. The target company finds a buyer who will retain existing management. White knight. So street sweep, quietly acquire shares. Bear hug, choke supply. Divestiture, spin-off, important asset. Poison pill, right to buy shares at very low price. खुद को ही डैमेज कर रहे हैं आप. Green mail, buyback share from the person who can become a threat tomorrow at very attractive price. White knight, you find a friendly buyer rather than a hostile buyer. If hostile buyer is chasing you, then you search for a friendly buyer and sell your company. Golden parachute, management अपने आप को huge bonuses दे दे अगर उनको कंपनी छोड़ने को कहा जाए. आप आर्टिकल में लिखते हैं कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लें कि अगर मुझे निकाला गया तो मुझे 200 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे. तो अभी आप अनअट्रैक्टिव बन जाएगा, कोई आपकी कंपनी खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि खरीदेगा तो आपको रिटेन करना पड़ेगा और हटाएगा तो बहुत पैसा देना पड़ेगा. पैकमैन डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. सर, यू आर टारगेटिंग मी, आई विल टारगेट यू इंस्टेड. आप मेरे शेयर खरीद रहे हैं, आप मुझे अक्वायर करना चाहते हैं, छोड़ो, मैं आपके शेयर खरीदूंगा और मैं आपको अक्वायर करूंगा. So sometimes it may be a serious effort, sometimes it may be just a dhamki. Pac-Man defense. तो सर ये कुछ फैंसी टर्मिनोलॉजीज हैं. Yes, sir. That's a good example. In fact, India-China border dispute is an example of Pac-Man. आप हमको चोट पहुंचाएंगे, हम भी पहुंचाएंगे, मारेंगे और मारेंगे. राइट. नाउ कम्स द वैल्यूएशन पार्ट. सर, इस वैल्यूएशन पार्ट में विल टॉक सम जनरल पॉइंट्स जो मर्जर नहीं सभी वैल्यूएशंस में यूज होते हैं, एंड सम स्पेशल पॉइंट्स जो स्पेशली डेडिकेटेड टू मर्जर है. Look, if you are appointed as a valuer for a merger deal, it is your duty to calculate separate value of each of the companies under merger. 10 कंपनियों का मर्जर हो रहा है तो 10 कंपनियों की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करें सर, एंड देन also calculate an exchange ratio
which is also named as swap ratio. But here keep in mind one very important thing, that this valuation of all individual companies must be made on stand-alone basis, on as is, where is basis, and you should not consider post-merger synergies. पोस्ट-मर्जर सिनर्जीज को इंडिविजुअल कंपनी के वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए. अगर ये कंपनी एज इट इज कंटिन्यू होगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वैसा वैल्यूएशन करिए हर कंपनी का, स्वैप रेशो कैलकुलेट करिए. दैट इज द स्पेशल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ मर्जर. हाँ, अब जनरल पॉइंट्स की बात कर लें जो सब जगह पर लगते हैं. Commercial prudence. So don't do a theoretical valuation. Think like an entrepreneur कि अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या सोचते as a buyer or as a seller. That's commercial prudence. Internationally accepted principles should be accepted. Like either you follow, there are several like accounting standards, there are valuation standards. So one popular set is issued by IVSC, International Valuation Standards Council. They have issued series of international valuation standards that will be discussed by one of the faculties later. They have issued many international valuation standards, IVS. So when you are making valuation, you should follow one of the international valuation standard. Like in India, ICAI has also issued ICAI valuation standards. So if you are registered under ICAI RVO, it is mandatory for you to follow it. For other RVO members, they may or may not follow it. Similarly, in England, there is a group called RICS, Royal Institute of Chartered Surveyors. They also issue valuation rules that is popularly known as Red Book of Valuation. You can follow that also. Now some more general points, sir. It is when you are making valuation using the income approach, it is the duty of management to provide you financial projections for next several years. It is not job of the valuer, it is job of the management. But what is job of the valuer? It is the duty of valuer that he review these projections, because management को अगर ज़्यादा value चाहिए तो वो higher projections दे देंगे आपको, कम value चाहिए तो वो lower projections दे देंगे. But sir, how will I review their projections? You need to have knowledge of their business. That is very important. So अभी तो सर valuation profession start हुआ है, तो जिस भी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन आता है हम करते हैं. बट देयर विल कम अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां लोगों के स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे कि मैं केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज करता हूं, कोई सीमेंट सेक्टर में एक्सपर्टीज करता है, कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज रखता है. बिकॉज हैविंग नॉलेज ऑफ बिजनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज हाउ कैन यू क्रॉस चेक द प्रोजेक्शंस गिवन बाय द मैनेजमेंट? And believe me, you cannot have knowledge of business of each and every single industry. You need to become a specialist over a period of time. Then third point, sometimes you need to take services of other experts also. Suppose I am making valuation not as per income approach, not as per market approach, but as per cost approach. तो अभी एक बिल्डर मेरे पास कॉलोनाइजर आए, उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, फ्यूचर इनकम कुछ प्रोजेक्शंस दिख नहीं रहे हैं, तो इनकम अप्रोच फेल हो गई, मार्केट मल्टीपल अवेलेबल नहीं है सिमिलर कंपनियों के. सो आई विल गो विथ द कॉस्ट अप्रोच कि उनके पास इन्वेंट्री में अभी कितने प्लॉट्स हैं, कितने बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो वैल्यू है वही कंपनी की वैल्यू है.
So now I need services of land and building valuer. Or there may be plant and machinery valuer I may need. और I may need other experts also. एक chemical factory में valuation होना और chemicals का stock है huge 100 करोड़ रुपए का. अभी सर मुझे तो समझ में ही नहीं आता ना कौन सा chemical ड्रम में सब भरा हुआ है. How would I know? I need services of other experts. If I take services of other experts, I cannot simply get rid by putting a caveat कि उनकी report के लिए वो solely responsible. No. It's my ultimate responsibility. It's not my responsibility कि उनका valuation सही हो, but मेरी responsibility ये है कि I assess the professional competence of the expert कि वो भाई साहब qualified हैं, उनके पास certification का power है, and his objectivity मतलब वो unbiased हैं, ये मुझे समझ आनी चाहिए. Understand and review the assumption, criteria, method, and their application used by the expert. And a gross check, a hygiene check I should do कि मोटे तौर पर ये सही सब मैं लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूअर नहीं, लेकिन इंदौर की एक कॉलोनी है तो मैं समझ रखता हूं कि इस कॉलोनी में प्लॉट का रेट क्या हो सकता है. तो कहीं उन्होंने 1 का 2 या 1 का आधा कर दिया है तो कम से कम मुझे वो तो समझ में आना चाहिए. So वो सब चीजें चेक करना it's my duty. I cannot simply blindfold myself. आंख पे पट्टी बांध के नहीं बैठ सकता, जितना दिखता है उतना मुझे देखना पड़ेगा. If I'm taking services of other experts, not only for merger but everywhere. Now, one interesting thing that will be taught by some other faculty, but मैं आपको उसका glimpse देता हूं कि there are 3 approaches ना, income approach, market approach and cost approach. So choosing a right approach is the job of valuer. वो management का काम नहीं है. Once you choose the approach, then within that approach there may be many methods. So choosing a right method is also the job of the valuer. Sometimes a valuer may decide that he is going to make valuation using more than one approaches or using more than one methods, and he may also decide कि मैं 2 मेथड से वैल्यूएशन करूंगा. इनकम अप्रोच, उससे वैल्यूएशन आता है 45 करोड़ और कॉस्ट अप्रोच से वैल्यूएशन आता है 50 करोड़. सो एवरेज 47.5 करोड़ वैल्यू में कंपनी की पकड़ लेता हूं. But don't make it a practice. If it is the requirement of the situation, fine. Some people have made it a practice कि भाई साहब मैं तो तीनों अप्रोचेस यूज करूंगा, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, all the 3 approaches I will use, and then I'll assign some weights arbitrarily and calculate weighted average of 3 valuations arrived at, and that will be the final value. So sometimes it's okay to take an average, but not every time. If you are making valuation of Infosys, तो उसका cost basis पे approach तो बहुत ही कम आएगा और इनकम बेसिस पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा आएगा. उसका एवरेज करना तो उसकी वैल्यू के साथ इनजस्टिस हो जाएगा. सो यू नीड टू लुक एट दिस सिचुएशन. एवरी टाइम डोंट कंसीडर मोर देन वन मेथड एंड टेक एन एवरेज. चलिए सर, काफी देर से आप सिर्फ सुन रहे हैं. नाउ इट्स द टाइम कि आप थोड़ा कैलकुलेट भी करेंगे. We have one question now to see that how merger affect EPS and NPS of both companies. So get ready with your calculator. Question says that B Limited is a highly successful company and wishes to expand by acquiring other firms. Fine. It's expected high growth in earnings and dividend is reflected in its P ratio of 17 times. Sir, Vijay sir is requesting everybody to keep your video on
क्योंकि सर ये सारे IBBI ऑफिशियल्स कैन एनी टाइम, उन्होंने एक पावर रखा है अपने पास कि वो किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं या वो किसी भी टाइम इस रूम में एंटर कर सकते हैं विदाउट प्रायर इंटीमेशन. So that may be a trouble then for RVO. Why are you allowing them without video on? So please cooperate. Sir, I won't mind अगर आप संडे वाले मूड में है ना, टी शर्ट पहन करके भी, और अगर आप इत्मीनान से पलंग पर लेटे हुए हैं और साइड में लैपटॉप है, सर इट्स परफेक्टली फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Nobody is going to judge you. It's the weekend, sir. बनता है इतना, मतलब it's all right. हाँ, तो ये वीडियो कहीं वैसे भी आउट होने वाला नहीं है. It's all between us. So don't worry about that कि मैं कहाँ कैसे बैठा हुआ हूँ. It's fine, sir. It's fine. वो बिल्कुल acceptable है. Okay, sir. So its expected high growth in earning and dividend is reflected in its high PE ratio of 17 times. Can somebody explain this line? Its expected high growth in earning and dividend is reflected in its PE ratio of 17. चलिए सर, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं. थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता हूं कि क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है कि चूंकि इस कंपनी की ग्रोथ रेट ज्यादा है इसलिए इसका पी रेशो ज्यादा है. इट्स हाई पी रेशो इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट्स ग्रोथ रेट इज हायर. कैन यू जस्टिफाई इट सर? ऐसा कैसे कि ग्रोथ रेट ज्यादा है तो पी रेशो ज्यादा है? इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट? इफ करेक्ट, व्हाई? इफ इनकरेक्ट, हाउ? चलिए पहले मैं एक और इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता हूं. तो क्या ग्रोथ रेट ज्यादा होने से प्राइस ऑफ द शेयर ज्यादा होगा? यस और नो सर? So market price is more than the earning per share. हाँ, मतलब माय क्वेश्चन इज कि Yes. ग्रोथ रेट हायर होने Maybe ग्रोथ रेट हायर होने से क्या मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी? क्या ये लॉजिकल है? यस और नो? यस इट इज. ट्राई टू रिकॉल द गॉर्डन्स मॉडल फॉर्मूला. नॉर्मली ज्यादा होगी, लेकिन सिचुएशन डिपेंड्स अपॉन है मार्केट में कितने लिक्विडिटी शेयर है और है सभी को. परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. थियोरेटिकली नॉर्मली ज्यादा होगी, पर कुछ दूसरे एडवर्स फैक्टर उससे ज्यादा काम कर रहे हो तो कम भी हो सकती है. यस. तो नॉर्मली तो ग्रोथ A1 अपॉन R माइनस G सर. हायर द ग्रोथ हायर द प्राइस. नाउ व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो इज मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. तो अब हायर ग्रोथ मींस हायर मार्केट प्राइस, हायर मार्केट प्राइस मींस हायर प्राइस अर्निंग रेशियो. ओके, सो इट्स जस्ट अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. अच्छी रेपुटेशन है कंपनी की तो वो कम भी पैसा कमाती है तो भी लोग उसके ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाएंगे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड, इनफैक्ट सर एमपीएस और ईपीएस में क्या होता है, मिसमैच ही होता है. एमपीएस हमेशा फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है और ईपीएस आज करंट प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो 2008 में जब रिलायंस पावर लिमिटेड का पब्लिक इशू आया था, बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन था वो, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी चर्चा का विषय था. हजारों डीमेट अकाउंट खोले गए थे, कई लोगों ने कई डीमेट अकाउंट खोले थे ताकि वो वहां सब्सक्राइब कर सकें. उस समय पर रिलायंस पावर की जो अर्निंग थी वो ₹1 से भी बहुत कम थी पर शेयर.
और वो ऑफर प्राइस उनकी थी 450 रुपीज, तो अगर उसका ईपीएस में 10 पैसे मान लूं और मार्केट प्राइस 450 मान लूं, तो 450 डिवाइडेड बाय 10 पैसा इज 4500 टाइम्स प्राइस अर्निंग रेशियो। क्योंकि एमपीएस इज अबाउट फ्यूचर एंड ईपीएस इज करंट, तो ये कई बार बहुत एक्सट्रीमली हाई भी हो सकते हैं। The board of directors of B Limited have been advised that if it were to take over firms with lower PE ratio, बोल रहे हैं ऐसी कंपनीज को टारगेट करो जिनका PE रेशो आपसे कम है, then it could increase its reported earning per share. ऐसा करा तो इनका EPS बढ़ेगा। C Limited has been suggested as a possible target for takeover. B Limited is acquirer, C Limited is target. MPS, market price per share, is 12 rupees and 15 rupees. Price to earning ratio is 17 times and 10 times. Number of shares are 5 lakh and 1 lakh. So first you try to calculate, sir, what is the earning available to equity shareholders in case of B Limited. Earning available to, that is profit, net profit, amount of net profit for B Limited you have to calculate, sir. Better words are earning available to shareholder, but roughly I can say calculate the amount of net profit for B Limited as well as for C Limited. I am giving you 5 minutes time, sir. Right, Shubham ji, that appears to be correct. That's perfect. 3,50,000 and 1,50,000. So now question is asking us to calculate change in earning per share of B Limited. What is change in EPS for B Limited? If it acquires shares of C Limited for rupees 15 per share in exchange of share for share ratio.
So before we proceed for that, let me tell you one thing. So how do I calculate exchange ratio? People also name it as swap ratio. Exchange ratio or swap ratio is equal to data of target company divided by data of acquiring company. This is how you exactly calculate exchange ratio or swap ratio. Like in this question, target company has market price per share of 15. An acquiring company has market price per share of 12. So 15 divided by 12 must be 1.25. And you know what does it mean? It means shareholders of target company will get 1.25 shares in acquiring company for their each share held. So this is how you calculate the exchange ratio or swap ratio. Now getting back to this. Look, sir. So first of all, exchange ratio is 1.25 times. How do you calculate? I didn't able to solve it. Yeah, sure. Shalin sir, it's here. So MPS is 12 and 15. Now we know one thing, sir. And that one thing is like this. The price earning ratio is equal to market price per share divided by earning per share. If I rewrite this formula, it will become EPS multiplied by price earning ratio will give me MPS. EPS multiplied by price earning ratio will give me market price per share. So, or I can rewrite it like this also, that EPS is equal to MPS divided by price earning ratio. Cross multiplication, EPS is equal to MPS divided by price earning ratio. And we are using this. So MPS is 12 divided by P ratio of 17 times will give us EPS of 70 paisa. Here MPS of 15 divided by P ratio of 10 times gives us EPS of 1.5. Once you get earning per share, then you multiply it by number of shares to arrive at earning available to equity shareholders. So that's 3.5 lakhs and 1.5 lakhs roughly. Now, if I want to calculate post-merger MPS, so post-merger MPS is post-merger EAES. Post-merger MPS is post-merger EAES. Divided by post-merger number of equity shares. So post-merger EAES will be like 353 plus 150. That should be divided by post-merger number of shares. Now this is important, sir. Here we are assuming that there is zero synergy. Therefore, post-merger earning will be simply a sum total of pre-merger earnings. Simply it is the sum of parts. No synergy is there.
after merger, B was already having 5 lakh shares. But to the shareholders of C, for their 1 lakh shares held, we will issue them 1,25,000 shares. So that way it is 5,03,000 divided by 6,25,000. So post merger EPS will be 0.805. If I want to calculate change in EPS for B Limited, it is post minus pre. So post is 0.805 and pre was 0.706. So approximately 10 paisa. Approximately 10 paisa is the increase in EPS due to merger for shareholders of B Limited. Now, I request all of you to first observe this carefully and then to calculate the same thing for target company. What is change in EPS for shareholders of target company? That is C Limited. Calculate change in EPS for shareholders of target company. हाँ जो मम्मी की अलग फेवरेट आएगी बताओ टेस्ट करो मैं बताऊं एक मिनट Okay, Shubham ji is getting 0.49 negative. Fine, sir. सर सी कंपनी मर्ज हो गई तो उसका तो फिर अर्निंग पर शेयर इसमें मर्ज हो जाएगा ना बी लिमिटेड में। हाँ, पर हम मर्जर होने के पहले ये विजुअलाइज करना चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा पोस्ट मर्जर हमारे ऊपर। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस माइनस प्री मर्जर ईपीएस, बस वही यहां भी करना है सर।
change in EPS for C Limited is equal to post-merger EPS लेकिन अब यहां पर एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर. I cannot simply say कि post merger is 0.805 and pre merger was 1.5. No, that will be wrong actually. मुझे यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स भी एडजस्ट करने पड़ेंगे सर. पोस्ट मर्जर तो मेरे पास 1.25 शेयर्स हो गए और प्री मर्जर मेरे पास सिर्फ एक शेयर ही था. So considering that, this is change in EPS for the shareholders of target company. And you know why it is there? Why it is negative? Because there is no earning synergy, no extra earning due to merger. Post-merger earning is simply sum total of pre-merger earnings, sir. And in that situation, if one company is saying that they are at advantage, then the other company's shareholders must be suffering, must be at a disadvantage. So post-merger, their EPS will actually reduce. So just keep in mind, while doing this calculation for acquiring company, you did not make any adjustment of number of shares, because for shareholders of acquiring company, their number of shares remained same before and after merger. But for shareholders of target company, their number of shares changed before and after merger. Okay, sir. So we'll have a tea break at 11 a.m., sir. If you're waiting for it, let me tell you. Not only tea break, it is breakfast as well. Oh my God, yes, because we started early today. And demanding breakfast at 8:30 at home, you will not get even lunch or dinner thereafter. Today is Sunday. Right, sir. I'm sorry for that. Okay. Legal framework. तो सर अभी कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सारे एक्ट क्या कहते हैं? Let's see about that. So let's see. The term merger is not defined under the Companies Act, sir. Right. That's true. इतना लंबा सिटिंग एक साथ बैठना, देखिए बैठते तो ऑफिस में भी हैं, पर बैठ के किसी को चुपचाप सुनते रहना, that's a kind of torture. So
the term merger is not defined under the Companies Act. There is no precise definition. But without defining the term merger, Companies Act talk about combination of two or more entities into one, wherein assets and liabilities of distinct entities are combined into a single business. Then as far as Income Tax Act is concerned, it does not define merger, but it defines amalgamation. It says that amalgamation means merger of either one or more companies with another company, or merger of two or more companies to form a one company in such a manner that all properties, liabilities of the amalgamating companies become the properties, liabilities of the amalgamated company. So this is as per Income Tax Act and as per Companies Act. But generally speaking, in an amalgamation, none of the original entities survive. But in merger, one entity survives. This is not a legal definition, but this is how people use these terminologies. So there is one company A, there is one company B, and after merger, both these companies will come to an end, and a new company C, which is formed, all the assets and liabilities and shareholding will be transferred to C. And A and B will not survive, only the new company C will survive. This is amalgamation. What is merger? There is one company A, there is one company B. After merger, B will not survive, but A will survive. That is A, all the assets and liabilities of B will be transferred to A, not to a new entity. Right, sir? Okay. Just a second, please. Now, what does Companies Act and SEBI guidelines say about merger? So there are two prominent sections. One section is section 230, which actually talks about compromises and arrangements, all kind of compromises or arrangements. Say you are not able to make repayment to bank, so you are going for some debt restructuring. That is also a compromise. You are changing right of some of the shareholders. That's also compromise and arrangement. So it is the general term. But when I talk about 232, it deals with merger and acquisition. So merger and acquisition is a special type of compromise and arrangement. So for merger and acquisition, we have to follow 230. So 230 is compromise and arrangement in general. 232 is amalgamation. When you read 232, it says that besides the condition mentioned in 232, you need to follow all the conditions which are given in 230. In summary, follow both 230 and 232 under the Companies Act. Now, what are the requirements of section 230 and 232? Apply to National Company Law Tribunal with necessary documents that we want to merge. Pass a resolution in the meeting of members and also in the meeting of creditors that they are ready with this merger. Obtain a letter from the auditor about the liquidity test. And if some of the people don't agree, you will be able to make payment to them. And compliance with accounting standard, that this merger accounting will be done as per the prescribed accounting standard or Ind AS as the case may be. Management to file creditors responsibility statement and compliance with RBI guidelines for corporate debt restructuring if at all it is involved. Notice to be given to say SEBI if it is listed company, to RBI, to ROC, to Competition Commission of India if required, to sectoral regulator like Department of Telecommunication, Insurance Regulation and Development Authority or something like that. And also notice to income tax authorities. अभी हर चीज का नोटिस तो आजकल इनकम टैक्स अथॉरिटी को जाता है. तो इंदौर शहर में एक चोरी हो गई और रिपोर्ट लिखाई गई कि 1 लाख रुपए की चोरी हुई. चोर पकड़ा गया, पता चला चोरी 1 करोड़ रुपए कैश की हुई थी.
नाउ न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नोटिस दिया गया दैट दिस हैपेंड. NCLT to determine if it is fair and equitable and thereafter approve it. तो सर एक छोटा सा हमको प्रोसेस दिखता है, बट जब रियल लाइफ में अगर हम किसी लिस्टेड एंटिटी कोई इन्वॉल्व है मर्जर में, तो एक बड़ी भारी प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होगी इन केस ऑफ मर्जर. सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने वोडाफोन आइडिया मर्जर की एक सैंपल डेट लाइन तैयार की उस केस को देखकर कि क्या स्टेप बाय स्टेप हुआ इस पूरी प्रोसेस में. तो सबसे पहली जो चीज हुई वो हुई वैल्यूएशन रिपोर्ट. डेफिनेटली वैल्यूएशन रिपोर्ट के पहले दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया होगा कि चलिए हम मर्जर अटेम्प्ट करते हैं. मर्डर नहीं सर, मर्जर अटेम्प्ट करते हैं. तो उन्होंने वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया. इट इज 2017, तब वैल्यूअर नहीं थे. तो वैल्यूएशन एट दैट टाइम वाज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. नाउ इट विल बी डन बाय कंपल्सरीली बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स. So joint valuation report issued by chartered accountants on 19th of March 2017. Also, fairness opinion was issued by Axis Capital Limited, a merchant banker, on the same date. Fairness opinion by merchant banker means, in general, this merger is going to be fair for all parties. It is not to the disadvantage of some of the parties. Then board of directors of Idea company, it adopted the report on very next day, 20th March 2017. No adverse observation letter, a complaint report was submitted to BSE and NSE on 13th of May 2017. As the Idea was listed entity, so kind of that no investor grievance complaint is pending against us, kind of a report कि कितनी कंप्लेंट पेंडिंग है उसकी रिपोर्ट दो मर्जर के पहले. तो नील कंप्लेंट की एक रिपोर्ट यहां पर फाइल हुई. देन नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन लेटर फ्रॉम BSE and NSE was obtained on 4th of August 2017. BSE ने कहा कि हमको कुछ फिलहाल इसमें एडवर्स नहीं दिखता. With this basic steps, then the company moved to NCLT Ahmedabad, which passed an order on 21st of August 2017. तो मार्च से अगस्त 5 महीने इस प्रोसेस में लग गए. And NCLT ordered meeting of shareholders. You went to NCLT, we want merger. NCLT said, okay, first you conduct the meeting of shareholders, of secured creditors, of unsecured creditors separately. Now for meeting, you need to publish newspaper notice. So notice of the meeting is published in 2 newspapers, one at the national level English newspaper and one at the local language newspaper at regional level. It was published on 11th September. And the chairman of the meeting filed an affidavit with NCLT. फिर NCLT को एक कसम दिखाओ कि भाई साहब हमने आपकी लिखी हुई कंडीशन की न्यूज़पेपर नोटिस पब्लिश करो, वो कंप्लाई कर दी. मीटिंग के लिए न्यूज़पेपर नोटिस. Idea sent notices to BSE and NSE and SEBI also on 11th September. Company did not receive any objection from stock exchange. उनको कोई आपत्ति नहीं है. SEBI in its letter dated 25th September 2017 observed that comments of SEBI have already been incorporated in notice to shareholders. Then जो e-voting है वो तो ठीक है, बट पोस्टल बैलेट अगर होता है तो वो 1 महीने पहले ओपन होना चाहिए. Postal ballot and e-voting started on 12th September. Postal ballot and e-voting ended on 11th October. Now, e-voting must end 1 day before AGM at 5 p.m. That's the rule.
So on the next day, meeting of shareholders was held and resolution was passed. Then chairman's report dated, suppose you wouldn't pass the resolution, तो ये सारे exercise यहीं खत्म हो जाएगी. But resolution was passed. Chairman's report dated 13th October was filed with NCLT. फिर 15 नवंबर को फिर NCLT गए कि भाई साहब मीटिंग हो गई, लोगों ने अलाउ कर दिया, अब ना हमको मर्जर के लिए अलाउ कर दो. NCLT ने बोलो रुको, इतना क्या जल्दी है, अभी तुम एक काम करो, सबको नोटिस दो. बोले सब कौन? रीजनल डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट, ROC अंडर कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, sectoral regulator, that is Department of Telecommunication. As it is a big merger, so you need to give notice to Competition Commission of India also. Give notice to SEBI because IDEA is a listed company. Give notice to RBI official liquidator कि ये कंपनी बंद करेंगे, दूसरी कंपनी में सब शिफ्ट करेंगे. And publish it in newspaper also. नोटिस पब्लिश हो गया कि NCLT ने हमको ऐसा कहा है. एफिडेविट फाइल हो गया NCLT के पास कि न्यूज़पेपर नोटिस पब्लिश हो गया. Then regional director made a representation on 27th of October 2017. उसका रिस्पॉन्स देते हुए आइडिया ने बोला कि ठीक है सर, हम आपकी बताई हुई सब बातों को फॉलो करेंगे. DOT से RBI से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई. 19 नंबर IDEA filed an affidavit that it will comply with SEBI guidelines also. हाँ, इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन नोटिस दे दिया because Vodafone India Limited is having a tax dispute with government of India of roughly 11,000 crores. वो सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, आप जानते ही हैं सब. तो गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया with retrospective effect. Vodafone India Limited went to international arbitration. Now that is still pending. People say that its political settlement is already done. अब कुछ नहीं होने वाला है. But Income Tax Department sent a notice that after merger, if that liability materializes, then the merged entity will have to pay the tax liability of Vodafone India Limited. To which kind of NCLT rejected कि this is premature to comment on this. There is no decision as of now कि जिससे हम अभी कुछ कहें, तो let the merger happen. And finally in January 2018 NCLT Ahmedabad bench allowed petition subject to order of NCLT Mumbai bench for VIL. जो process IDEA ने करी वही process Vodafone ने भी की. Two different NCLTs. Official liquidator की फीस भी फिक्स हो गई और जनवरी में पास हुआ मर्जर, करते करते अगस्त एंड तक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. सो दिस इज द कंप्लीट डेट लाइन ऑफ वोडाफोन आइडिया मर्जर. व्हाट डू यू थिंक शेयर प्राइस ऑफ आइडिया? आई डाउट सर, मतलब मैंने बहुत रिसर्च रिसेंट उसके नहीं किया है, बट आई सीरियसली डाउट दैट दे विल बी एबल टू फ्लरिश देयर बिजनेस. बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर उनका नजर नहीं आता है. सो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट आई थिंक. एंड नाउ लास्ट पॉइंट बिफोर वी टेक अ ब्रेक. This is there are two more sections are there in Companies Act. 236 is squeeze out the minority and 235 is acquire shares of dissenting shareholder. So let's first discuss the last paragraph, that is acquire shares of dissenting shareholders. Here, so you are acquiring a company, special resolution is passed. In fact, 90% votes are cast in favor of the resolution that go for the merger. But 10% people are still saying, no, we won't go. We will not go away. Dissenting shareholders, which are 10% or less, Section 235 says that वो उनका शेयर सर्टिफिकेट भी आपको ना, अब तो खैर डीमेट में होते हैं शेयर, वो उनका शेयर सर्टिफिकेट भी सरेंडर ना करे ना, तो वो आप उसको कैंसिल कर दो, उनके घर कंसिडरेशन भेज दो, वही प्राइस पे शेयर एक्वायर कर लो जो प्राइस आपने मेजॉरिटी को दी है. इन लोगों की कोई अब हैसियत नहीं है.
उनका शेयर कैंसिल करके उनके घर पैसे भेज दो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। अभी तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए 75% की गाइडलाइन भी आ गई है, वो इधर हम पढ़ते हैं, स्क्विज आउट द माइनॉरिटी। नाउ 236 इज अबाउट स्क्विज आउट द माइनॉरिटी। अभी मर्जर डील की बात नहीं चल रही, इन जनरल बात चल रही है कि अगर 90% शेयर एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास में ऑलरेडी हैं and they want to throw out remaining 10% people in the company. It's not a merger, but still remaining 10% people you want to throw out. You give them an offer कि यार तुम तुम्हारा शेयर दो और चलो यहाँ से। They say कि नहीं हम अपना शेयर नहीं देंगे, बिकाऊ नहीं है। 236 says it is बिकाऊ। They'll have to give their share. पर किस प्राइस पे देंगे? अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वैल्यूएशन will be done by registered valuer. And if it is unlisted, listed company तो फिर वो जो सेबी गाइडलाइन बोलेगी वैसे जाना पड़ेगा। अभी तो इसमें एक नोटिफिकेशन फरवरी में और आ गया था कि 75% शेयर होल्डिंग भी अगर चाहे, अनलिस्टेड कंपनी ओनली 75% शेयर होल्डिंग चाहे तो 25% को थ्रो आउट कर सकती है, स्क्विज आउट द माइनॉरिटी। राइट सर? लास्ट, दिस वन इज लास्ट एक्चुअली। So now in case of merger, there are two dates. One is the appointed date and one is the effective date. तो आज अगस्त 2020 में मैं जाता हूं कि मुझे मर्जर करना है NCLT के पास and it gives approval. तो appointed date may be 1st April 2020, a retrospective date. Generally the appointed date is retrospective date because accounting 1st April से सब थोड़ा easy हो जाएगा। And the valuation must also be done on that appointed date only. तो सर क्या ये बैक डेटिंग नहीं हो जाएगी कि आप आज वैल्यूएशन कर रहे हैं और अप्रैल का वैल्यूएशन दे रहे हैं? नहीं नहीं, दिस इज नॉट बैक डेटिंग। मैं आज वैल्यूएशन 2012 का भी कर सकता हूं। There are two dates. One is the date of valuation and one is the date of signing report. Date of signing report की मैं बैक डेटिंग करूंगा तो वो बैक डेटिंग है। मैं आज की तारीख डाल के आज का यूडेन जनरेट करके साइन कर रहा हूं और उसमें लिख रहा हूं that valuation date is 1st April 2020, that's perfectly fine. There is no issue at all. Now effective date. It is the date on which merger process will be actually complete in all respect. That will be the appointed date. Right, sir? तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। Sir, how we can go in case of 100 date? सर एक बार फिर से वॉइस ब्रेक होगी। अब कितने बैक जा सकते हैं? मैं आज यदि एप्लीकेशन डालता हूं NCLT में तो जैसे 1420 के बजाय कितना बैक जा सकते हैं? मैं मिड ऑफ द ईयर जा सकता हूं? इसको लेकर के ना क्लैरिटी कुछ नहीं आ रही है। नहीं ये तो ठीक है सर। मैं तो एक दूसरी बात और भी कर रहा हूँ कि मान लो मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट आज साइन करी है, सो वी हैव कंपनी सेक्रेटरीज विद अस। आज मैंने एक वैल्यूएशन रिपोर्ट साइन करी है तो कंपनी उसको कब तक यूज कर सकती है? नहीं, वैल्यूएशन जैसे मैंने करा लिया 1 जनवरी 20 का, तो क्या मैं मर्जर 1 जनवरी 20 से कर सकता हूं? नहीं सर, यूजुअली वो इतना रिट्रोस्पेक्टिव नहीं जाता है। अच्छा, शैलेंद्र सर सेइंग 60 डेज तक यूज कर सकते हैं, इतना नहीं जाता है वो। एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एट द मोस्ट, उसके पीछे नहीं जाएगा, नॉट बिफोर दैट। थैंक यू। यस सर। ओके, सो शैलेंद्र सर इज सेइंग 60 डेज तक मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट यूज हो सकती है। ओके सर, कभी कुछ भी इस पे कोई लिटरेचर होगा आपके पास कहीं से भी, कुछ सेक्शन नंबर रेफरेंस, तो मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहले ऐसे कुछ था नहीं और लोग पुरानी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी यूज कर रहे थे। चलिए सर, तो एक ब्रेक लेते हैं। इट इज 11 o'clock, तो कब मिल रहे हैं हम? 11:15 या 11:20? जैसा आप लोग कहें। 11:30 सर। अरे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप यहीं बैठ के हमारे साथ में नाश्ता कीजिएगा, हम भी देखेंगे। This is breakfast break and it should be at least 30 minutes, half an hour sir, please. What is opinion of other people sir? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट जैसा सब कहेंगे।
सर आप आइए ना 11 अभी, क्योंकि किसी की ओपिनियन नहीं आ रही है तो आप ब्रेकफास्ट आप हम आपको 11:30 40 तक वीडियो आप ओके हाफ एन आवर प्रवीण जी सेइंग हाफ एन आवर. I need vote of all other people quick, sir. We don't have much time. Okay. चलिए सर, 3 वोट हमारे पास फेवर में आ गए, तो हम इसको 30 कर देते हैं सर. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. But 11:30 sharp we will start, sir. Sure, sir. Sure, sure. Sure, sir.
खाना भी दो फिर मैं तो क्लास हो जाएगी। चावल का हाँ आलू को भी थोड़ा अच्छी नहीं थी दाल का थोड़ा बढ़िया है। अरे मेरा क्लचर लाके दियो बेटो कहाँ पे जरा पापा ने क्लचर डालो बाथरूम में रखा होगा जहाँ मैं लाई थी। लाइए बेटे जरा ना वाले पूरा है ऐसे मारी जा रहा आलू जूस भी देखे हैं ना इसी को है ही छोड़ गया ना। क्लचर ला दे जरा कार्तिक हाँ क्लचर ला दे बेटे बाथरूम में से मेरे बाल गिर जाएगा और रोटी रखेंगे पापा करेंगे क्या क्लचर ला दे जरा उस बाथरूम में उधर वाले में ठीक है दीदी चलती है सॉरी चल दीदी ने चाय पीना भूल गई है मैं हाँ मम्मी look at कैसे आपने कैसे नहीं नो अरविंद बोला कि लाइट नहीं ब्लॉग लाइट नहीं गई कि उसका गिलास है उसने रखा हुआ अपना इसने वो बार-बार में पानी अरे बल्ले को बात फूट जाएगा और क्या ऐसे ऐसे लगा लो यहाँ पर पानी हेलो अरे हेलो अंदर से रख रखा है ना भैया अरविंद को भेजना है इन्विटेशन कौन हेलो भैया जो तुमने ये भेजा अलर्ट इनकम टैक्स वाला सर को भेजा तो वो मेरे पास आया हुआ है तो उसमें डेट तो वो रिवाइज डेट तो नहीं आ रही वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है वहां पर अच्छा वो मेरे को ब्लैक आ रहा है तो अच्छा वो टेबल अच्छा वो जो एक हमने पिछली बार कुछ कर दिया था जो तुम बता रहे थे वो डेट हमने गलत है वो ठीक कर दी ठीक है अब तो केवल चेंज इसी में 18-19 में हुआ ना 19-20 में तो कुछ चेंज हुआ अच्छा मतलब वो हाँ 20-21 में तो कुछ नहीं है ना असेसमेंट ईयर में हाँ वही है ना
तो वो फिर सारा रिव्यू कर ही रखा हमने, उसमें क्या बस वो एक करेक्शन करना था वो तुमने कर ही दिया। वो करेक्शन वो था ना 31 अक्टूबर वाला था। अच्छा उनको 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर। हाँ तो टैक्स ऑडिट पहले 30 सितंबर थी ना, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर हो गई। खाना दे दो, मेरे तो स्टार्ट हो जाएगी 5 मिनट में। छवि देख किसका फोन आ रहा है, कट गया किसका ना, पता नहीं अपने आप ही कट गया, काट क्या होगा किसी ने, अननोन नंबर से था नहीं, शिवानी ईएम। अभी थोड़ी देर में करूंगी, रुक जा मैं खाना बना, पहले पापा को नाश्ता दे दो, पापा मैं फिर से
हाँ जी, हाँ मैं अभी बुलाया बिजली वाले को, वो ऑर्बिट की भी मिल गई आपकी, ऑर्बिट की चकोर वाली है वो जो आपने दी थी ना गाड़ी में भेजी थी, वो मिल गई मेरे को। अच्छा पैनल, तो ये ऑर्बिट वाले कितने वाट की है जी? तो 6 की फिर 18 में बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी लाइट? हाँ 5 हाँ हाँ। अब वो लगाना था, एक तो लगाना था जो लॉबी है ना, जो हमारी कॉरिडोर है, दोनों दोनों रूम के सामने है वहां पर, और 4 लगी हुई थी हमारे किचन में। तो ये 18 वाट की 4 होगी, फिर तो 4 लगेंगे 18 वाट की। अब 5 पीस चाहिए, 5 में से 4 तो किचन में लगे हुए हैं और एक लगा हुआ है वहां पर लॉबी में। तो वहां तो एक ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बड़ा लग गया, और बड़ा भी 18 वाट का बहुत हो जाएगा, और यहाँ पर तो 4 पीस बहुत हो जाएंगे फिर किचन में। तो 18 वाट के ट्यूबलाइट आती है 18 वाट की तो मेरे हिसाब से। तो इसमें फर्क कितना है, ये 18 वाट वाला पैनल जो ओरिएंट का है? तो फिर नहीं, अगर लाइट का आप बताओ, लाइट ज्यादा तो नहीं हो जाएगी? फिर 18 का लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है अगर सबसे हैं तो। नहीं मैं नहीं। हाँ अच्छा, तो फिर एक काम हो सकता है कि फिर अपन, क्या दिक्कत है, ओरिएंट लगवा लेते हैं। बड़ी कितना बड़ा पैनल, मतलब कितना है, 6 इंची का है? नहीं जगह तो है, जगह तो हमारे पास 8 क्या 12 इंची भी लग जाएगी, जगह तो पूरी 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 छती है ना। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं देखो ऐसा ना, जगह तो आप अपने पास पूरी छत है। अच्छा चलो ले लो फिर, ले लो, और क्या कहते हैं ना, वो पैनल वो भी देख लो। मैं ये चकोर वाला ले लेते हैं, फिर चकोर वाला भी सोना लग रहा है, वो ऑर्बिट वाला। मैं दोनों लगा के देख रहा हूँ अभी। किसके, कौन से के? हाँ तो ले लो ना वो, किस साइज के हैं वो? मैं आ रहा है अभी अभी अपन 10 मिनट में आ रहा है, मैं आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ सारा चेक करवा के, ठीक? हाँ, और सुनो, छोटी लाइट है ना, 2 इंची, 2 इंची की भी अगर कोई लाइट है ना? हाँ 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 हाँ। कितने वाट के हैं, और ये इंच कितना है? 3 इंची, 3 इंची तो फिर मैं छोटा, वो छेद बड़ा रह जाएगा। मम्मी हाँ बिछा दी मैंने दोनों चादर। हाँ हाँ
मेरे को लगता है 3 वाट भी ना हो, 2 वाट ही हो। क्या मुझे तो लगता है 1 वाट ना हो। चद्दर काम मेरा था। चलो मैं बुला रहा हूँ, वो बुला के अभी बुलाया मैंने, फोन कर दिया है, वो आ रहा है 10-15 मिनट में, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ 2 फुट की ट्यूबलाइट भी चेंज कर लेंगे, पुरानी होगी हमारी, 3 लग जाएंगी 3। हाँ 2 फुट वाली लगी हुई है, 3 लगी हुई है तीनों रूमों में, बट वो पुरानी सी हो गई है। हाँ 2 अंदर वही है, 4 फुट वाली है, 2 फुट की होती है। अच्छा सुनो, एक एक जगह हमारे ना बीच में आपने देखा होगा, जैसे घुसते तो बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं 2 हमारे, जिसमें 2 ट्यूबलाइट लगी है छोटी छोटी, अंदर अंदर 2 का जोड़ा, जो 2 का जोड़ा, 2 ट्यूबलाइट एक साथ में लगती है ना, तो ऐसे 4 ट्यूबलाइट लगी हुई है। हाँ हाँ अंदर लगी हुई है, वो मेरे ख्याल से 2 फुट की होगी, 2 या 1 फुट की होगी। डस्टिंग कर ली, उधर बिछा दी, कपड़े को उसने बिछा दी। मैं एक बार फोटो खींच के भेज रहा हूँ उसकी, वो देख लो अगर वो लाइट मिल जाए। मेरे को नहीं करने का प्लीज। हाँ मैं करवाऊंगा, आज नहीं मैं करवा। बिछाऊंगा, इसने बिछा दी, मैं डस्टिंग नहीं करूंगा, मैं कुछ और कर दूंगा। मम्मी को फ्राउट्स दे दो। पापा पापा अपने फोन से कॉल करो, भेजेंगे इन्हीं एड्रेस में बताया ना। एक बताया को तो दे दो खाना, इनका फोन आ, नंबर दे, नंबर दे, नंबर दे। मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। तरफ पे हर चीज मुझे पता है, मेल खोल के बैठ जाता है, व्हाट्सएप खोल के बैठ जाता है, ऐसे दिखाता है तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है। कौन? बहुत बार देखा है। मेल खोल के बैठ जाता है, पता है क्या करता है? अपान मेल खोल लेता है अपनी, व्हाट्सएप खोल लेता है, ऐसे दिखाता है बड़ा बिजनेसमैन है, मेल खोल के देख के आता है बार बार। मेरे को प्राउड दे दो और प्राउड को दे रहा हूँ, भाई तो खाना है ऐसा ना, पटने खाता है बड़ा बिजनेसमैन है, बार बार मेल खोलता रहेगा। और रेगुलेशन ले पाती ले प्राउड। बहुत अच्छे बने ना, और मंगाने पड़ेंगे, नोट खत्म हो गई। मैं सोच रही हूँ अब सब चीज मिला के डाल दिया करूंगी इसी में, सारी तरह की दालें।
Okay, welcome back to the session. All right, sir. So here we go. Now there are some SEBI regulations also with respect to merger. And this is SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulations. An acquirer except promoters going to reach 25% holding in a company, or who is already holding 25% shares and who is going to acquire more than 5% shares in any one financial year shall make an open offer. या तो आप 25% को टच कर रहे हैं कुछ शेयर खरीद के, यू आर ऑलरेडी होल्डिंग 23% शेयर्स, you want to acquire 2% more shares, that way you will touch 25% holding in a company, or you are already holding 30% shares and you want to buy 2% more shares, 5% more shares in the company, then he shall make an open offer to buy such number of shares which make their holding 26% or at least 10% additional shares, whichever is more. तो आपको कम से कम 10% शेयर और खरीदना होंगे, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू कम अप विद ओपन ऑफर. ओपन ऑफर में किस प्राइस पर शेयर अक्वायर किए जाएंगे? इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक्स और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 60 डेज, whichever is higher, दोनों में से जो भी ज्यादा. या फिर दो और चीजें हैं, नेगोशिएटेड प्राइस पेड विच ट्रिगर्ड द ओपन ऑफर, जो अभी रीसेंट ऑफर आप लाए थे जिसमें आपने कोई नेगोशिएटेड प्राइस पे की थी, वो प्राइस, और हाईएस्ट प्राइस पेड बाय अक्वायरर इन 26 वीक प्रायर, पिछले आधे साल में शेयर अक्वायर करने के लिए जो भी प्राइस आपने पे की थी वो प्राइस, राइट. तो इन चारों में से जो भी प्राइस हाईएस्ट होगी, कम से कम उस प्राइस पर ओपन ऑफर लाना पड़ेगा. दिस इज अबाउट लिस्टेड सिक्योरिटी. बट इफ द सिक्योरिटी इज नॉट लिस्टेड, और इवन इफ इट इज लिस्टेड बट नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, then the valuation must be done by a registered valuer. Right, sir? Income Tax Act. अभी एक तो चीज होती है इनकम टैक्स में स्लम सेल, और फिर होता है मर्जर एंड डीमर्जर. स्लम सेल का मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बार देख लेते हैं उसको क्विकली. स्लम सेल मींस ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग. Like we were taking example, you know, the sell off example under demerger qualifies for slum sale. कि हमने अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर डिवीजन उठा करके बेच दिया. Transfer of undertaking for a lump sum consideration. Software division is sold for 50 crore rupees without value being assigned to individual assets and liabilities. How much for land, how much for building, how much for equipments. No separate valuation of each item. The whole undertaking is sold lump sum. So if in case of slum sale,
if the assets which are sold were held for more than 36 months, then it is chargeable to long-term capital gain. If it was held for less than 36 months, then it is chargeable to short-term capital gain. Indexing benefit is not available even in case of LTCG. Even if stock is sold as a part of the undertaking, inventory is sold as a part of undertaking, on that also the capital gain tax is chargeable. GST, it is written no clarity, but actually GST is applicable at the normal rates. Now, here there have been some important points with respect to slump sale, that is sell-off. Slump sale can be taken as a sell-off under demerger. You know, the consideration for transfer is lump sum, arrived at without assigning value to individual asset and liability. This is one condition. But calculating value of individual asset and liability for the purpose of GST, for the purpose of accounting, for the purpose of stamp duty, etc., it does not disqualify you from slump sale. Transfer of assets only without transfer of liability, it is not a slump sale. NCLT approval is not required because it is not a merger, it is just acquisition of asset for the buyer. And for seller, it is simply the sell-off. As per Calcutta High Court, even if some defunct assets are not transferred, it will still qualify as a slump sale. Now let's talk about demerger and merger. If you want your merger or demerger to be tax neutral, otherwise in case of merger, all the assets and liabilities of a company are transferred to other company. So assets are transferred. So there may be a situation that the gain will arise and you should pay tax on that in that situation, But if you want your merger to be tax neutral, here, look here, merger under capital gain tax under section 47, 47.6 and 47.7, no tax liability for capital gain in the hands of transferor company, that is target company, as well as in the hands of shareholders of transferor company. If you want to achieve this position, that is, if you want to make your merger tax neutral, then you will have to fulfill condition number 1, 2, 3, and 4. Condition number 1 is all the properties and liabilities of the transferor company, that is target company, are transferred to acquiring company. Cherry picking of assets and liabilities is not allowed. All assets and liabilities should be, now we are not talking slump sale, now we are talking merger. So whatever assets and liabilities are there in the balance sheet of company, all should be transferred. Number 2, shareholding minimum 75% of value of share in target company should become shareholder in acquiring company. All assets and liabilities should be transferred. At least 75% of the shareholding should continue in the new company. Business should be acquired as a going concern. Business should be continued. You cannot close the business. Payment of consideration should be made in terms of shares. Shares of acquiring company to the shareholders of target company should be given. Though partial cash consideration is also allowed. But make sure your cash consideration should not be so high that shareholding in the new company is less than 75%. If these 4 conditions are fulfilled, then your merger will be tax neutral. Now, similar conditions are there for tax neutral demerger also. No tax liability for capital gain in the hands of transferor company as well as the shareholder of transferor company will be there in case of demerger. If these 1, 2, 3, 4 conditions are fulfilled, all the properties of the demerged undertaking are transferred to the result. So after demerger, there will be 2 companies.
One is the demerged company. The original company will be called demerged company, and a new company which is formed will be the resulting company. So now here we are talking either spin-off or equity carve-out. Now we are not talking sell-off. Sell-off will be covered under slump sale. We are talking of spin-off. So the company, the previous company which continues even after demerger is the demerged company, and the new company formed is the resulting company. So whatever assets are transferred from demerged company goes to the resulting company. There should not be a transit loss. It means it should not be sold to someone else. Meanwhile, 75% shareholders of demerged company should also be shareholders in the resulting company. Business should be carried on as a going concern. Payment of consideration by the resulting company to the demerged company or to the shareholders of demerged company should be in the form of share for share, and it should not be cash. Partial cash may be allowed, but at least 75% shareholding should be continued. So this is tax neutral merger and tax neutral demerger. Now, what if you acquire a SIG company under merger? Then the losses of SIG company, how much loss of the SIG company can be used by the merged entity after merger? Whatever quantum as assessed in the target company. So I'm targeting A Limited. So whatever assessed loss are there in A Limited, I will be able to take benefit after merger. If the loss cannot be used in the same year, it can be carried forward. If it is unabsorbed depreciation, not about merger, in general also, unabsorbed depreciation can be carried forward indefinitely. There is no time limitation. But business losses can be carried forward only up to 8 years. So that condition is applicable here also. If you are not able to set off the losses of SIG company in the current year, you can carry forward and set off the losses of the SIG company. And you can carry forward it for 8 years. And the beautiful thing is, countdown starts afresh. So there is a SIG company which has been carrying forward losses for last 8 years, and this is the last year to set it off. And in this year, I acquire that SIG company. Now I can carry forward those losses for next 8 years. So this 8 years countdown actually starts afresh. Who is eligible to carry forward loss? Not all the undertakings can carry forward loss. You must be either an industrial undertaking. If you are industrial undertaking, then carry forward of loss is allowed of the target company in the merged entity. If you're a ship, it is allowed, carry forward of loss. If you're a hotel, it is allowed. If you're a banking company, it is allowed. If you're a public sector company engaged in the business of operation of aircraft, it is allowed. Not to others. What is definition of industrial undertaking? That's not our business, sir. For that, you will have to explore Income Tax Act. But there are several conditions to be fulfilled. If you want to carry forward and set off loss of the target company after merger, condition number 1, the business in which loss occurred to the SIG target company was in existence for at least 3 years. Business where the SIG target company sustained loss is not a young new business. It must be at least 3 years old. Fixed assets of the target company, at least 3/4 of the fixed assets of the target company are held for at least last 2 years. अभी नई खरीदी हुई फिक्स एसेट्स नहीं है, पुरानी फिक्स एसेट्स है टारगेट कंपनी में. आफ्टर अमलगमेशन कम से कम अगले 5 साल तक ये बिजनेस मर्ज एंटिटी को कंटिन्यू करना पड़ेगा और एटलीस्ट 3/4 ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स को भी कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो ये बिजनेस मिनिमम 3 साल पुराना हो, मिनिमम 5 साल आगे ले जाया जाए. फिक्स्ड एसेट्स मिनिमम 2 साल पुरानी हो और मिनिमम 5 साल आगे ले जाई जाए, 3/4 ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल होती है
then only losses can be carried forward and set off after merger. Now, if I talk about demerger, in case of demerger, तो हमारा एक स्टील स्क्रबर डिवीजन है और एक सॉफ्टवेयर है और हमने उसको स्पिन ऑफ कर दिया. अगर लॉस आइडेंटिफाई हो सकते हैं that loss was generated by steel scrubber division or software division, so after demerger it will be carried forward by the respective company where the loss actually occurred. But if loss is general and it cannot be identified with the business, then the proportionate amount of loss will be carried forward by both companies, that is demerged company and the resulting company. But here the 8 years countdown for business loss does not start afresh. So for past 5 years, you were already carrying forward losses. Now you can carry forward losses only for remaining 3 years. So business losses can be carried forward for an expired period only. Right, sir? So that is the tax treatment in case of merger and demerger. Now let's talk about stamp duty. So there has already been a Supreme Court decision which says that this merger will be considered as a conveyance, and that is transfer of immovable property kind of thing, and therefore it is chargeable to stamp duty. Mergers are chargeable to stamp duty. So the order of NCLT, stamp duty is chargeable on instruments. Order of NCLT is chargeable as an instrument. There are two things. Number one, the scheme of arrangement which is prepared by the company. So question is whether the scheme of amalgamation prepared by the company, is it the instrument chargeable to stamp duty, or the order passed by NCLT or High Court, previously it was High Court, or the order passed by NCLT or High Court, is that chargeable to stamp duty? So it has been decided by the court that the NCLT's order is actually an instrument which will be chargeable to stamp duty, just like the transfer of immovable properties. So stamp duty implication you need to check. Some of the states charge favorable stamp duty. Some states charge unfavorable, that is high stamp duty also. So you'll have to consider that. Then here comes into role Competition Commission of India. Any combination of business that exceeds the following limits, these are all limits, is deemed that it will adversely affect competition. If your merger is resulting in a company larger in size than this limit, then it is deemed that it may affect adversely competition in India, and this merger will be void if you do not take kind of permission of Competition Commission of India. So for that you need to give notice to Competition Commission within 30 days of the board of directors meeting. So when do you need to give notice to Competition Commission of India? If after merger at the company level assets in India will be more than 2,000 crore rupees, or turnover in India will be more than 6,000 crore rupees. If it is a international merger and one of the leg is in India, then if after merger assets of the company crosses $1 billion level, that is roughly 7,500 crore rupees, or after turnover will be more than $3 billion rupees. I'm sorry, $3 billion, not rupees. With at least 1,000 crore rupees of assets in India, or with at least 3,000 crore rupees of turnover in India, then also you need to apply to Competition Commission of India. If your group, what is group? That is defined in Competition Act. If after merger your group is having a turnover asset of 8,000 crore more than,
or turnover of more than 24,000 crore and 4 billion, 12 billion, 1,000 and 3,000 crore, then also you need to apply to CCI. Look, the limits are easy to memorize. All the turnover limits are 3 times the asset limit. 2,000 into 3, 6,000. 1 billion into 3, 3 billion. 1,000 crore into 3, 3,000. 8,000 into 3, 24,000. 4 billion into 3, 12. 1,000 into 3, 3. So turnover is 3 times the asset. And see, or. एक भी limit cross होती है, apply. And you know the group level limits are 4 times the company level limit. So if it is 2,000, this is 8,000. If this is 6,000, then this is 24,000. 1 billion, 4 billion, 3 billion, 12 billion. केवल ये 1,000, 3,000 के limit same है. So if you memorize this small rectangle only, then make it 3 times to make it turnover, make it 4 times to make it group level, and then again 3 times to calculate group level turnover. Turnover is 3 times. Once you apply to Competition Commission of India, and if they do not reply within 210 days, permission is deemed to be granted. Now, this is good thing. Such kind of things should be everywhere in all acts, that if government authorities do not respond in the time limit, then it is in the favor of the person. Suppose the company does not apply at its own, then Competition Commission of India, either on its own motion. Now in this Facebook deal, it was not merger. Facebook's Reliance Jio deal, Competition Commission of India has looked into the matter. Either on its own or on receipt of a complaint or on a reference made to it by the central government, state government, may inquire into alleged contravention regarding nature of the agreement, which is suspected to be inherently anti-competitive or abuse of dominant position. Sir, competition is very much required in any country, including USA. Because if it is monopoly, then one day the monopolist will start abusing, misusing his position. पावर और पैसा आने के बाद दिमाग खराब होने के लिए सर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जब तक कंपटीशन नहीं हो, जब तक कि विपक्ष नहीं हो, जब तक सामने कोई ना हो, चाहे फिर वो कंपनी हो या सरकार, चाहे कंपनी या सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक कंपटीशन नहीं है, जब तक अपोजिशन नहीं है, anybody can anytime become corrupt and can be destructive. So government can take, CCI can take note itself if the company does not apply, but there is a limitation also. If within 1 year CCI is not activating and after 2 years CCI says you are in contravention, they cannot say. Limitation here is 1 year. But at the same time, I have rarely seen CCI, looks like CCI is a lion without teeth and nails. This is how I feel like. क्योंकि जैसा 20 साल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, 25 साल पहले कोई जानता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है, उसकी हैसियत क्या है. फिर टीएन शेषन आए और उन्होंने सारे पॉलिटिशियंस को बताया कि इलेक्शन कमीशन इज पावरफुल. सीसीआई लुक्स लाइक अभी तक तो मैंने कहीं कोई मेजर ऑब्जेक्शन इनका देखा नहीं है, स्पेशली मर्जर्स और दूसरी जगह पर कि इन्होंने रोक दिया हो किसी चीज को. बट यस, यू नीड टू अप्लाई टू देम. नाउ FEMA, if it is cross-border merger, cross-border investment, and if it is classified as FDI, foreign direct investment, there are 2 routes. One is permission, other one is automatic. So almost all investments in India comes through automatic route. There is just a small negative list for permission. And recently that list has been enhanced
after COVID-19 situation, when Chinese company tried to increase their stake in Indian banks and financial institution, government said any countries which share land borders with India, if they are making FDI in India, it must be compulsorily through approval route, irrespective of the amount of investment. So that was one thing. But any FDI which is more than 5,000 crore rupees in size, it doesn't come with automatic route. Then minister लोगों की approval चाहिए. Cabinet Committee on Economic Affairs approval is needed. Otherwise, lower than this, most of the FDI are through automatic route. You need not to take any permission. You just need to follow the procedure which is given. If it is not FDI, it is FPI, then it is freely allowed as per SEBI guidelines. No restrictions at all. Freely allowed means SEBI guidelines are there. Permission is not required. Venture capital investment, it is again freely allowed. No permission is required. Except that venture capital are not required to adhere to the pricing guidelines also. So if venture capitals are making investment in India, they need not to follow even the pricing guidelines specified under FEMA or dictated by SEBI. So pricing guidelines is applicable to FDI. Yes, exactly, Shailendra sir. You're perfectly correct. If you are FPI and you want to invest in India, first you need to get yourself registered in India with SEBI. And probably they need to maintain some books also and get it done audited and file returns, etc. annually. Yes. So once the entity is registered, then within the permissible limit, they can buy anything, sell anything. Then unlisted company, pricing guidelines for FDI. If the company is unlisted, valuation should be done either by a chartered accountant or CMA. Even they are not saying practicing CA or practicing CMA, but our own code of conduct says that if you are not practicing, you cannot do it. You cannot do certification. So a practicing chartered accountant or practicing CMA or a merchant banker can make valuation of unlisted companies. So registered valuer is not yet here. If the proposed draft registered valuer bills even become a reality, then the registered valuer will come here. And other people won't be able to do the valuation. Then listed company, and that is frequently traded, higher of the volume weighted average price of last 26 weeks or volume weighted average price of the 2 weeks prior, whichever is higher, that is the fair price. FEMA says that whatever is the fair price, you can make allotment of securities at that price or at a price higher than that. You cannot make allotment of securities at a price lower than that. On the other hand, Income Tax Act section 56(2)(7)(b) says that if you make allotment of share at a price more than the fair price, then it is problematic. If you are making allotment at a price less than the fair price or equal to fair price, that's perfect. तो इनकम टैक्स का बोलना है कि जो फेयर वैल्यू है उससे ऊपर मत जाओ, नहीं तो टैक्स लगा देंगे. फेमा का कहना है उससे नीचे मत जाओ, नहीं तो फिर बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे. ऊपर जाएंगे तो इनकम टैक्स में मारे जाएंगे, नीचे आ गए तो फेमा में फंस जाएंगे. तो बेटर है कि फेयर वैल्यू पर ही अलॉटमेंट किया जाए. Now last one, sir, accounting aspect. Accounting aspect of amalgamation. देखिए, एक या तो एस अप्लीकेबल होगा या इंडेस अप्लीकेबल होगा, दो में से कोई एक. अगर एस अप्लीकेबल है, इंडेस लगेगा अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं या उसके सब्सिडरी हैं या उसके एसोसिएट हैं, या नहीं भी हैं तो आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, देन इंडेस इज अप्लीकेबल. अदरवाइज ओनली एस इज अप्लीकेबल. एस बोलता है कि अगर 90% शेयर होल्डिंग सेम है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर लिया है, बिजनेस को गोइंग कंसर्न की तरह से लिया गया है,
तो फिर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन ब्रेक होती है तो फिर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। अगर ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से अकाउंटिंग होगी, जिसमें कोई गुडविल अराइज नहीं होती है। सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को उनकी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व इज प्रिजर्व, तो सीआरआर ही रहेगा टारगेट कंपनी से हमारे यहाँ आने के बाद भी। सिक्योरिटी प्रीमियम ही रहेगा। पीएनएल का बैलेंस ही रहेगा, और कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो कोई गुडविल या कैपिटल गेन, कैपिटल रिजर्व राइज ही नहीं होगा। बट अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो परचेज मेथड लगेगी। ऐसे में अगर आपने एक्सेस कंसिडरेशन पे कर दिया है तो दैट विल बी गुडविल, लोअर कंसिडरेशन पे किया है दैट इज कैपिटल रिजर्व। गुडविल है तो मैक्सिमम 5 साल में राइट ऑफ कर दो, और प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व की तरह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर दिखाओ। नाउ दैट इज एएस। इंड एएस में कोई दो मेथड नहीं, इंड एएस में तो सिर्फ एक मेथड है। इंड एएस 103 बोलता है जितनी एसेट्स और लायबिलिटी एक्वायर करोगे ना, यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट एट फेयर वैल्यू, नॉट एट बुक वैल्यू। एंड इफ द कंसिडरेशन पेड इज इन एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू देन गुडविल विल अराइज। गुडविल को आपको 5 साल में राइट ऑफ नहीं करना है, बट गुडविल इज सब्जेक्ट टू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। और अगर आपने जो कंसिडरेशन पे किया है इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड, सो दैट्स अ प्रॉफिट and that will form part of your P&L। डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, वो P&L से होके जाएगा। P&L में ऊपर नहीं, नीचे आएगा OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहां जाके सर हमारा मर्जर का पूरा किस्सा खत्म होता है। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उसको कवर कर लिया है। If you have any doubts on it, just feel free to ask. Or next will be option valuation। चलिए सर, जी want to speak something sir? चलिए सर आगे नया चैप्टर चालू करें, उसके पहले थोड़ी सी बात कर लें कुछ। अतुल सर आपसे बात नहीं हुई थी कल? Can you unmute yourself, Atul sir? Arun sir. Arun sir. Yes sir. Before we start this conversation, I would like to a small request to all the members, if you, with your permission.
Sorry. I'm saying with your permission, I would like to a small request to from all the learning participant and members. Yeah, Uh, sure. uh, uh, Dear everyone, basically now we are knowing that we all are going through a very difficult situation in COVID. So the company in which I am working currently, it has been shut down since long, and many employees have been, sir, either they have been asked to leave the organization or lay off. So basically, my company deals into facility management, and its business mainly dependent upon uh, malls, hotels, airports, and multi-story workplaces. So just because of since last 5 months, we have never get salaries and everything, and I'm running after to get some opportunities. So it is a request to all the distinguished members if they are coming with any kind of opportunity in the CS. So please help me. It will be a great help to me. Thank you, sir. Sure, sir. Sure, Shalendarji, sure. On the group, I will share my updated resume for your kind perusal. That will be great, sir. Please do. So a thought came in my mind. So I thought that let's because a group and now we are like a friend because it's going on, lifelong. Yes, sir. Sure. Thank you. Thank you. Most welcome, sir. Most welcome. अतुल सर, आप दिल्ली से हैं? Yes, sir. Tarun ji, I am from Delhi. So I qualified in 2002. Wow. Okay. And I did my CFA also, but that was Indian CFA. नहीं, उसका मटेरियल बहुत अच्छा है सर. इक्फाई का मैंने देखा था. अल्फा बीटा और कुछ ऐसे लेवल थे उसके. Okay. उसका मटेरियल But ठीक है, but अभी not very useful nowadays, I think. भी recognition नहीं है इसका इंडिया में ना इतना. नहीं, अब वो खत्म हो गया सर, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ही खत्म हो गया ना. इक्फाई इंस्टीट्यूट ही खत्म. राइट, राइट. आप प्रैक्टिसिंग है सर? Yeah, I'm practicing. So earlier I was in corporate. मतलब since last 15 years I was in corporate and worked in Tata, Adani, SL Group. Okay. So thereafter I started my practice. So since last 3 years I'm in practice. Okay. Okay. Great, sir. Great. Fantastic. चले सर, और बातें हम करते हैं थोड़ा सा. ठीक. So how many number of questions are asked on mergers, and if you can tell us in exam point of view? Sir, this is very simple. मतलब ऐसा क्लियर कट क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है. अगर आप IPBI का सिलेबस देखेंगे तो उन्होंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे इक्विटी वैल्यूएशन और एप्लीकेशन. मर्जर वैल्यूएशन एप्लीकेशन के ऊपर टोटल 33 मार्क्स उन्होंने कंबाइंड दिए. उसका इंटरनल ब्रेकअप उन्होंने नहीं दिया है कि मैं इसमें से क्या पूछूंगा, ऑप्शन कितना, फिक्स्ड इनकम कितना. बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा प्लस माइनस, बट मोटे तौर पर number of hours multiplied by 2 will give you number of marks. थोड़ा हमने कहीं कम ज्यादा hours डिवोट कर लिए होंगे स्पीड के हिसाब से, ग्रेस्पिंग को देखते हुए. जैसे केस स्टडीज में क्लियर है कि वो 20 मार्क्स का ही होगा. तो वैसे अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आई विल क्विकली शेयर इट. उन्होंने एक ब्रॉड ब्रेकअप तो दिया है, मैं अभी पोस्ट कर देता हूं यहाँ पर. So this is syllabus, new syllabus. Okay, so if I can post it here. अच्छा, ये वेबिनार मोड है शायद, तो इसलिए इसमें फाइल पोस्ट करने का ऑप्शन प्रोबेबली नहीं आएगा. ओके, ठीक है, मैं उसको बाद में वहां डाल दूंगा. आप IBBI की साइट से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं. उन्होंने वेटेज दिया है, जैसे मैं भी आपको यहाँ स्क्रीन पे तो शेयर कर ही सकता हूँ एटलीस्ट. चलिए वो मैं बता देता हूँ. देखिए इसमें कुछ इस तरह से सर, यहाँ पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो 3% है, तो 3 नंबर का मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया.
so I'm not taking that. Finance and financial statement analysis, ये 6 marks हो गया. Professional business ethics and standard 4 marks. अब जनरल लॉज उन्होंने इकट्ठे 18 मार्क्स बोल दिए, जिसमें कंपनीज एक्ट भी है, आईबीसी भी है, सरफासी भी है, इनकम टैक्स भी है, सेबी भी है, आरबीआई है, फेमा है. फेमा शायद किसी दूसरे में भी क्लासिफाई हो सकता है. फिर जितने भी इंडेस हैं, 4 इंडेस उन्होंने रखे हैं. 36 फॉर इम्पेयरमेंट, 109 फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी 36, 109 and then business combination 103 and fair value measurement 113. ये 5 मार्क्स का है सब मिला के. ओवरव्यू ऑफ वैल्यूएशन 4 मार्क्स है, जिसमें कि क्या क्या वैल्यूएशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, वो 4 मार्क्स. वैल्यूएशन अप्रोच ऐसा है, वो टेलिंग यू ना, कॉस्ट अप्रोच, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच वो अलग से डील होगा, वो 3 मार्क्स है. अब ये वैल्यूएशन एप्लीकेशन देखिए, ये पूरा 35 मार्क्स का इकट्ठा दिया है. इसका कोई इंटरनल ब्रेकअप नहीं है. इक्विटी एंड बिजनेस वैल्यूएशन भी इसी में ही है, पूरा ये मर्जर भी इसी के अंदर पार्ट आता है. फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, यूज ऑफ सीएपीएम मॉडल, फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, वो डीलॉग हमने पढ़ा था. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा. इंटेंजिबल एसेट्स वैल्यूएशन, सिचुएशन स्पेसिफिक वैल्यूएशन, ये सब मिला के 35. इसका इंटरनल ब्रेकअप इसमें ऑप्शन वैल्यूएशन भी इसी के अंदर होगा कहीं पे, वो यहाँ ये वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन से, बायनोमियल प्राइसिंग मॉडल एंड एवरीथिंग. इसका इंटरनल ब्रेकअप नहीं है, तो मोटे तौर पे जितने आवर्स है उसका डबल आप कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है वो. फिर 2 मार्क्स के आपके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, 5-6 केसेस होते हैं जो आपको याद करने होते हैं. और केस स्टडीज जो हमने कवर करा वो शॉर्ट 20 मार्क्स का है. 1 केस स्टडी ऑफ 8 मार्क्स एंड 2 केस स्टडीज ऑफ 6 मार्क्स ईच. वो पक्का है बिल्कुल उसी टाइम से. राइट सर? यस, थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. चलिए सर, तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन वैल्यूएशन की. सर मार्क्स जो भी हों, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपर की डेप्थ बहुत बढ़ गई है. प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन में लेवल चेंज हो गया सर. पहले और अब के पेपर में फर्क आ गया सर. पहले आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की बेसिस पर, कई लोगों को कई फील्ड में एक्सपोजर होता है, एग्जाम क्लियर कर सकते थे विद सम स्टडीज. बट अभी आपका एकेडमिक उनको बहुत स्ट्रांग चाहिए. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपका काम आएगा स्टिल, लेकिन आपका एकेडमिक पार्ट उनको स्ट्रांग चाहिए. दे आर आस्किंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके, आप फोन पे बात कर रहे हैं, मुझे लगा मुझे पूछा है. ठीक है, तो दे आर आस्किंग एनीथिंग एंड कुछ भी, सारी चीजें. पहले क्या था, इस सिलेबस में सब कुछ था, लेकिन वो पूछते थे सिर्फ कुछ खास बातें, तो वही पढ़ाई जा सकती थी और बाकी छोड़ी जा सकती थी, पढ़ी जा सकती थी. लेकिन अभी ऐसा नहीं, वो कुछ भी पूछेंगे और कहीं से भी पूछेंगे. दिस हैज हैपेंड एक्चुअली. तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट इन फैक्ट कि 50 आवर्स ट्रेनिंग में आपने सब कवर कर लिया. हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है. इसका अश्योरेंस, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है. अब एज ए फैकल्टी मेरे पास भी 2 चॉइस होती है कि या तो मैं दुनिया की सारी बातें बोल जाऊं, या फिर हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, और देन योर सेल्फ लर्निंग विल आल्सो हेल्प यू. राइट सर? टाइम इज लिमिटेड, अदरवाइज तो ये ट्रेनिंग अगर 200 घंटे चलती है तब भी इनसफिशिएंट होगी सब कुछ कवर करने के लिए. Okay, sir. So now I'm starting with derivatives introduction. So do you have any practical exposure of derivatives? अगर आप ट्रेड करते हो या किया हो? Anyone? Is anybody dealing in futures and options? या पिछले 2-4 साल में भी आपने ट्रेड किया हो, उसकी समझ रखी हो? यस सर. ओके, परवीन सर आपने किया है? यस सर.
So किया नहीं है किया है कुछ, लेकिन कुछ एडवाइस किया है, बट आई नो एवरीथिंग, अच्छा, व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शंस एंड ऑप्शन कॉल पुट एवरीथिंग आई नो। अरे वाह, फैंटास्टिक। चलिए सर, तो आपके पास एक बैकग्राउंड है इसका, बहुत बढ़िया है। राइट राइट राइट। चलिए, तो फिर हम बेसिक से ही स्टार्ट करें सर, क्या करें, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। Should I start from basic or should I assume the basic and come to the valuation part directly? जैसा आप लोग गाइड करेंगे सर। Got it sir, thank you. Right sir. So here we go. हम derivatives के introduction से शुरू करते हैं। Derivative एक contract है। What is derivative? Which is derived from any other item is derivative. Derivative is a contract which does not have its own value. Its value is dependent on value of some other item. That other item is named as underlying. अब मान लीजिए क्या मतलब इसका एग्जैक्टली कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है दूसरे आइटम की वैल्यू से, वो दूसरा आइटम अंडरलाइंग कहलाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। करंट गोल्ड प्राइस पर 10 ग्राम, इससे अभी तो ये काफी बढ़ गया तो मुझे एग्जांपल को मॉडिफाई कर देना चाहिए। क्या कर दूं मैं इसको 53,600 कर देता हूं। से करंट गोल्ड प्राइस इज 53,600 रुपीज। डेरिवेटिव सर, वो जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो डेरिवेटिव से ज्यादा वो आते ना की मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में। I teach a part of company law also just to see intermediate student. तो वहां आता है की मैनेजरियल पर्सन में the person according to whose instruction and directions board of directors is accustomed to act will also be deemed to be key managerial person in the company. तो मैं यही बोलता हूँ शेडो डायरेक्टर। तो मैं वहां पे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा तो ये डायरेक्टर वगैरह कुछ समझ में आता नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे मनमोहन जी जब काम करते थे तो वो काम पीछे कोई और ही कर रहा होता था, वो सिर्फ आगे एक पपेट होते थे। अब सर वो इट हार्डली मैटर्स कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ कि बीजेपी को, बट ये तो फैक्ट था। बाकी तो पूरा सोशल मीडिया का गेम है, जिसके कब्जे में सोशल मीडिया है पूरी दुनिया वही देखेगी जो वो दिखाना चाहता है। एक चीज मैंने बड़ी ऑब्जर्व करी सर आजकल कि अगर आप किसी पॉलिटिकल चीज पे बात करें तो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड या आपका क्लोजेस्ट रिलेटिव भी आपका दुश्मन बन सकता है। सो वो बात के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी पॉलिटिकल डिबेट में ध्यान रखिए, पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस। वो कितने भी अच्छे हों और वो कितने भी खराब हो, वो है पॉलिटिशियन। वो हमारे काम नहीं आने वाले, हमारे काम तो हम एक दूसरे के काम आने वाले। सो डोंट फाइट विथ योर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन पॉलिटिकल डिबेट्स। राइट सर, तो मैंने इसको कर दिया 53,600। करंट गोल्ड प्राइस इज 53,600 सर। ओके, नाउ आई एम फर्दर बुलिश ऑन गोल्ड। इनफैक्ट आई वाज बुलिश, जब 50,000 का भाव था तो भी मैं बुलिश था। तो मैंने अपने एक परिचित ज्वेलर को बोला, मैंने बोला खरीद लेना 2-4 दिन में। वो भाई ने 2-4 दिन के 15 दिन लगा दिए और भाव 50,000 से बढ़ के 53,000 पर चला गया। I am bullish on gold. I am means Tarun Mahajan. Suppose you are bearish on gold. You are saying नहीं, ये COVID-19 vaccine will be there, and then the world economy will recover, and people will return their faith in the economy, in the capital market, in debt securities, in banking sector. And once the faith of the people returns, then they will come back from gold to other regular assets. So gold price will come down. You are bearish. We have difference of opinion. If uncivilized people have difference of opinion, that will convert into physical fight. घूंसे मार रहे हैं एक दूसरे को।
But if civilized people have difference of opinion, first they will argue and then we can bet. आप मेरी बात नहीं मानते ना, मैं बोल रहा हूँ प्राइस बढ़ेगा, शैलेंद्र सर इज सेइंग नहीं नहीं भाव गिरेगा। यार तरुण तुमको कुछ मालूम नहीं है यार, तरुण यू आर नोविस इन दिस फील्ड, तुम बात फालतू मत करो। बोलो नहीं शैलेंद्र सर ये बढ़ेगा, आपको नहीं मानते हो ना, लगी 1-1 किलो गोल्ड की भाव बढ़ा तो मैं जीता, मुझे डिफरेंस प्राइस देना, गिरा तो मैं आपको डिफरेंस प्राइस दूंगा। नहीं मानते ना आप मेरी बात, शर्त लगा लो, आई एम बुलिश ऑन गोल्ड, यू आर बेयरिश ऑन गोल्ड। So we entered into a contract that after 3 months, by the time of Deepavali, I will buy 10 grams of gold from you at a price of 54,000, slightly higher than 53,600. So this is the future price remains slightly higher than the spot price, interest element की वजह से। तो मैं आपसे 3 महीने बाद 54,000 में 10 ग्राम गोल्ड खरीदूंगा, क्योंकि मुझे तो लगता है ये 80,000 हो जाएगा। And then I will buy from at 54,000 and immediately sell at 80,000 and make huge money. And on the other hand, आपको लगता है price will come down to 40,000. So you are ready कि ठीक है मैं तुमको 54,000 में sell करूंगा and देखना the price will come down to 40,000 and you will win and I'll pay you the difference amount. So one who is bullish, one who thinks price rises is bullish and he will take a purchasing position, क्योंकि भाव बढ़ रहा है ना तो आज के भाव पे तो खरीदना बनता है। That purchasing position, buying position is named as long position, sir. And one who is bearish, he thinks that the price will come down, he takes a selling position which is named as short position. Buying position is long, selling position is short. So I take a long position, you take a short position, I am the long, you are the short. Now, if actual price appears to be, say, 50,000 rupees after 3 months, you win, sir. You said na price girega, वाकई गिर गया. Now, we contracted at 54,000. Actual price appears to be 50,000. I'll have a loss of 4,000. You will have a profit of 4,000. So our value of contract is 4,000. Value of contract is 4,000. It is negative for me, positive for you. Derivative is a zero-sum game. If I'm winning, you are losing. If I'm losing, you are winning. Nothing is produced, only it is transferred. That is derivative. So value of contract at expiry is 4,000, and now the value of contract is dependent on value of gold in Indore Sarafa market. It is derived from there, hence it's a derivative. Now, settlement of derivative contract may be of 2 types. Either it can be delivery settlement. If it is a delivery settlement, then you know what will happen? You don't have gold to deliver. I don't have money to buy. Still we entered into contract. That's the beauty of derivative. आपके पास बेचने को गोल्ड नहीं, मेरे पास खरीदने को रुपया नहीं है, बट हमारे पास ओपिनियन है. And that way we can deal with each other. So now what's happening, I'll tell you. You will buy gold from market at 50,000. You don't have gold. And then you will deliver it to me at 54,000. That is the contracted price. Buy it from the market, deliver it to me for 54,000. So that way you will have profit of 4,000. I'll take delivery at 54,000, but I don't have holding capacity. So I'll immediately sell it in the market for 50,000 and sustain a loss of 4,000. आप खरीदो मुझे दो, मैं ले जाके बेच दूं. क्या फायदा? हमने बोला let's make cash settlement. I'll give you 4,000. बात खत्म. तरुण महाजन will give शैलेंद्र sir 4,000. किस्सा खत्म. Right, sir? Now, the long position is actually buying position. For a long position, if price rises, he makes a profit. For a short long position, if price falls, he sustains a loss. So this is very basic thing. But जब apply करने की बात आती है तो हम अक्सर ही भूल जाते हैं. अगर आप खरीद करके बैठे हैं तो भाव बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होगा और गिरने पे लॉस होगा. बेसिक बात है. बट शॉर्ट पोजीशन इज अपोजिट, जो हमारा ब्रेन इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है. शॉर्ट पोजीशन इज अपोजिट. भाव बढ़ा तो लॉस होगा क्योंकि आप बेच करके बैठे हो.
और भाव गिरा, then you will make a profit. So this is very simple practical thing, sir. Keep it in mind. इसको फोटो खींच के दिमाग में रख लीजिए आप. Long position, price rises, make profit. Price falls, sustain loss. Short position, price rises, sustain loss. Price falls, make profit. Types of derivative contracts. So there are 4 popular types of derivatives: forwards, futures, options, and swap. The example we were discussing, that we enter into a contract, after 3 months you will sell me 10 grams of gold and I'll buy it for 54,000. This was example of forward contract. How do I define forward contract? Derivatives are of 4 types: forward, future, option, swap. Last example was for forward. What is forward actually? Forward is nothing but fixing of future. Today you fix it that tomorrow you will be able to sell at 54,000 irrespective of market price. Today I am fixing it that tomorrow I will be able to buy it at 54,000 irrespective of market price. Both parties have right as well as duty to execute the contract. Sir, अगर भाव बढ़ गया तो मैं बोलूंगा yes, give me money difference. 54,000 की जगह price 58,000 if appears to be. तो मैं बोलूंगा it's my right, give me 4,000, and then it's your duty to give me 4,000. If price falls down to 50,000, it's my duty to pay you 4,000. It's your right to recover 4,000. दोनों पार्टी की right है, दोनों पार्टी की duty है. प्राइस मेरे फेवर में आया तो मेरा right, आपकी ड्यूटी. प्राइस आपके फेवर में आया तो आपका right, मेरी ड्यूटी. What is fixed? I'm saying forward is fixing. So what is fixed in a forward contract? The first thing which is fixed is underlying. Here it was gold, but it can be silver, platinum, soybean oil, guar gum, orange juice, meat, shares of Reliance Industries Limited, debentures of some company, Sensex, Nifty, temperature, rainfall, anything and everything which is uncertain and uncontrollable can become underlying. Yes, people deal in derivative on rainfall and temperature also. तो अब मैं इंदौर में होने वाली बारिश पे बेयरिश हूं और आप बुलिश हो कि नहीं आएगी बारिश, रुको अभी आएगी, इकट्ठे आ जाएगी बाद में. मैंने बोला अगस्त में इंदौर में बारिश होगी हार्डली 10 इंच. आपने बोला नहीं 15 इंच होगी. शर्त लगा लो 10 इंच के ऊपर अगर कुछ भी बारिश हो गई तो हर इंच पर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, 1,000 दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, whatever we decide. और 10 इंच से नीचे कुछ भी बारिश हुई तो आप मुझे पर इंच पेमेंट कर देना. Anything can be underlying. Then you decide the quality. 99.5 purity gold it is. कल कुछ झगड़ा होगा नहीं तो कि मैं 18 कैरेट गोल्ड दूंगा, आप 24 कैरेट मांगोगे. Then the quantity, 10 grams we are dealing. Date, it is fixed, 3 months. And the most important thing which is fixed is actually rate. And the rate is, say, 54,000. Fixed. Gold is fixed, 99.5 purity is fixed, 10 grams will be dealt, fixed. After 3 months, you will give me fixed at the rate of 54,000, fixed. Fixing of our fortune is forward contract. Now, what is future? A very simple definition. Exchange regulated forward contract. If we are dealing privately, it is forward. If we deal it on any exchange, then it becomes future. If we deal it on any exchange, then it becomes future. Sir, forward में एक problem है. One of the two parties will definitely lose money. One who lose money may deny his liability. Say, I'll buy gold 10 gram at 54,000. Now, after 3 months, actual price appears to be 50,000. So I lost 4,000. I need to give you 4,000 rupees. भाव गिर गया, long position को loss है. I will say you took it seriously. I was just joking, huh? I was just joking.
तो आपने सीरियसली क्यों ले लिया, मैं नहीं पे करूंगा. और आई कैन से ओके इट्स माय लायबिलिटी बट आई विल नॉट गिव यू. डू व्हाटएवर यू कैन डू, जो बन पड़े कर ले जाओ. Counterparty risk is there, sir, in case of forward contract. But in case of future contract, there is no counterparty risk. Because on National Stock Exchange, I am buying RIL shares in future. You are selling RIL share in future. So Tarun Mahajan is not dealing with Sanjay sir. Tarun Mahajan even doesn't know that his counterparty is Sanjay sir. Tarun Mahajan is dealing with National Stock Exchange and National Stock Exchange is dealing with Sanjay sir. So me and Sanjay sir, we are not counterparties. Me and NSE and Sanjay sir are counterparties. So even if Sanjay sir sustains the loss and does not make payment to exchange, still exchange will give money from his pocket to me. But sir, ऐसे में तो exchange को loss होगा रोज. So exchange takes security deposit from both parties. At the beginning of contract, it will take security deposit from Tarun as well as from Sanjay sir. That is actually named as initial margin. And then they charge additional margin, mark to market margin, basket margining, maintenance margin, various types of margins are there. So if the party who sustains the loss denies to make the payment, exchange will cut it from his deposit. If in extreme situation deposit is insufficient, then exchange will use its settlement guarantee fund. Counterparty risk is abolished in case of future contract. That's the beauty. But you need to pay margin. Forward, you need not to pay margin. And the more important thing, futures are standardized. You know, forwards are customized. हम जैसे चाहें customize कर लें. I say, let's not deal in 99.5 purity. Let's deal in 18 carat. And you say, let's not deal in 10 grams. Let's deal in 11.11 gram because that's a lucky number for me. And not 3 months. Let's enter into a contract for 2 months, 3 days. So we can customize as per our requirement because we are the only 2 persons who are involved. But sir, customization is facility on one hand, but it's a problem on other hand. मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी और उसको कस्टमाइज करवा लिया. अब कल को बेचने की इच्छा होगी तो कितना मुश्किल होगा काउंटर पार्टी ढूंढना. और स्टैंडर्ड बाइक के इजीली सेल हो जाएगी. So it is difficult to reverse customized contracts, but in case of standardized contracts, you will find thousands and lakhs of buyers and sellers. More liquid it is. Now let's come to option. After forwards and futures, let's talk about options. Look, sir, in this example itself, I'm bullish on gold, you're bearish on gold. Current gold price is 53,600. We enter into a contract that after 3 months, I'll buy 10 grams of gold from you at 54,000. Both of us agreed. But now I'm saying, let's introduce one additional clause in this contract that executing or not executing this contract should be my choice of Tarun, not your choice. So if the market price goes up to 55, 56, 57, 58,000, I will exercise the contract and I'll recover difference amount from you. But if market price comes down to 53,000, 52,000, 50,000, I will say, अरे भूल जाओ, कोई contract नहीं हुआ था, मैं execute नहीं करता हूँ, भूल जाओ, forget about it. I want the option to execute or not to execute this contract. I'm telling you कि आप लिख के दे दें कि आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं. So you will become option writer. आप लिख के दे रहे हैं कि आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं. So you will become option writer and I will become option holder.
Options are similar to future with one major difference. Here one party has only the right while other party has only the duty. I will have just the right, no duty. You will have just the duty, no rights. So it will look like this. We enter into a contract where if I wish, I will buy 10 grams of gold from you after 3 months at 54,000. If I wish, then only. If price goes up to say 58,000 rupees, then I'll exercise my option to buy and win 4,000 rupees and recover it from you. If price comes down to say 50,000 level, then I will not exercise my option. So value of contract will become 0 for both of us. Now in this situation, you have given me option in writing. I am holding that return document. So I am the option holder and you are the option writer. But भला आप मुझे क्यों ऑप्शन देने लगे? क्योंकि मैं आपको प्रीमियम दूंगा. Just like insurance companies. You pay them car insurance premium in case of accident, theft, etc. Insurance company compensates you. But अगर कोई नुकसान ना हो, उल्टे गाड़ी के भाव बाजार में बढ़ जाए, you don't pay anything to insurance company. You just pay one-time premium for the whole year. To serve for a premium of 25,000 rupees, my 10 lakh rupees of vehicle is secured for 1 year. Yes, it is. For a small insurance premium of 25,000, your car of 10 lakh rupees is secured. Sir, बेचारी insurance company नहीं, वो ऐसी thousands of policies sell करेंगे, on tens of claim face करेंगे, and still they may be in profit. So option holder will pay premium to you today, right? And this premium is non-refundable in any case. Insurance premium refund नहीं होता ना, चाहे claim करो या मत करो. Whether I exercise option or don't exercise option, premium is not refundable. And beautiful thing is my maximum loss is limited up to the amount of premium. Gold का price कितना भी गिर जाए, 0 हो जाए. But मैंने आपको जो suppose 500 रुपए प्रीमियम दिया है per 10 ग्राम, suppose 500 रुपए प्रीमियम मैंने आपको per 10 ग्राम दिया है, तो मेरा लॉस 500 रुपए per 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा. My maximum profit is unlimited. If the gold price per 10 gram rises to 20 lakh rupees per 10 gram, imaginary, then you will pay difference between 20 lakh and 54,000. That is 19 lakh 46,000 you will pay me per 10 gram. You are option writer, you receive premium. Your maximum profit will be premium, not more than that in any situation. Your maximum loss is unlimited, sir. As the price rises, you keep on paying me. I have paid premium and bought option. That's why it is said that I am long option. I'm not long gold. I'm not long on share. I'm long on option. मैंने option खरीदा है premium लेके, और आपने premium लेके option बेचा है. You are short option. Now you may be thinking that are there any fools who are ready to become option writer? Yes, sir. All institutional players, they prefer to become option writer rather than option holder, and they make good money also. So if you plan it properly, then even as an option writer, you can make money. Yes, it's risky position. So as an individual, you should limit your position, but definitely with the proper planning, you can still make money. Now options are of two types. पिछले example में तो मैंने बोला था कि मैं खरीदूंगा, but option may be either a call option or it may be a put option. So if I check for RIL share price,
2070 rupees. It is. So current RIL share price is 2070 rupees. What is call option? I have option to buy. तो मैंने बोला आज से 3 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर मैं आपसे 2100 में खरीदूंगा. After 3 months, I'll buy share of RIL from you. Jatin ji, sure. I'll buy money from you. I'll buy RIL share from you at a price of say 2100 after 3 months. अभी मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा कि चलो निकालो डिफरेंस अमाउंट. और अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो भूल जाओ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. ऑप्शन टू बाय इज कॉल ऑप्शन. Option to sell is put option. After 3 months, I'm bearish on RIL now, say. So I say after 3 months, I'll sell you RIL share, 1 lakh share, 1000 share at a price of 2100 rupees. अभी अगर मार्केट में प्राइस गिर के 1500 हो गया, still I have right to sell at 2100. Call option तब exercise होता है when market price rises beyond the contracted price. Put option is exercised when market price falls below the contracted price. So in a call option, I have right to buy. If I have right to buy, it means you, option writer, call writer, you have duty to sell. Option is exercised when the market price goes up above the contracted price. Rather than naming it as contracted price, the better name is exercise price or strike price. This call option is exercised if market price goes up above the exercise price or strike price, say which is 2100. 2100 में मैं RIL का शेयर खरीदूंगा. उसके लिए मैंने आपको 50 रुपए प्रीमियम भी दिया है. और मेरा ब्रेक इवन पता है कहां आएगा? My break even point will be strike price plus premium. So I'll buy share of RIL from you after 3 months at 2100 rupees. Now after 3 months, if RIL appears to be 2110, 10 रुपए ज्यादा, I'll exercise my option and recover difference amount of 10 rupees from you. After 3 months, if RIL appears to be 2110, that is 10 rupees more than my strike price, I'll exercise option and recover 10 rupees from you. But today I have already paid 50 rupees to you as premium, so my net loss will be 40 rupees. So my break even will be when the RIL price reaches the level of strike price plus premium. Strike price is 2100 and premium is 50 rupees. So if RIL is at 2150, I'll recover 50 rupees difference. I have already paid 50 rupees premium, 0 break even point. And if RIL price goes up above 2100, then I will make a profit. This is call option, sir. If I try to represent it graphically, just give me one moment and I will open one Excel file. Okay,
So I will buy Reliance Industries Limited at 2100 after 1 month. Paid premium of ₹50. So if I'm talking about call holder, call option holder situation, this is RIL price in September. That is after 1 month. It can be 1800. It can be 2000. Can be 2100, 2150, or it may be 2200, or it may be 2400. कुछ भी हो सकता है ना भाव. आज क्या बताएं? So I have taken several sample prices कि RIL share price in September may be 1800 to 2400, or even less than that or more than that. So now as far as the call option is concerned, look, if the price is 1800, तो मैं क्यों ऑप्शन एक्सरसाइज करूं? मैं आपसे क्यों 2100 में लूं जबकि मार्केट में 1800 में मिल रहा है? Here the call option is not exercised. But if the price rises to 2150 level, I have a right to buy at 2100. Market price is 2150. I have a right to buy at 2100. So I'll recover difference amount from you. कि देखो भाई मार्केट में जो चीज महंगी मिल रही है ना आपको मुझे सस्ती देनी है. चलो डिफरेंस दो, बात खत्म करो. Here I will recover 100 rupees from you. You know why? 2200 minus the strike price of 2100. और यहां तो मैं आपसे 300 रिकवर करूंगा. 2100 and 2400's difference. Look, प्रीमियम इन एनी केस मैं आपको 50 रुपीज दे ही चुका हूं, प्राइस जो चाहे हो. तो अगर मैं अपना नेट रिजल्ट देखना चाहूं तो नेट रिजल्ट लुक्स लाइक दिस. Just a minute. Oh yes, that's correct. Just have a look at it. Okay. If I try to make a diagram for the same, Excel में बहुत easy है. I'll take this price range and I'll take this one also. I'll say insert scatter diagram like this, and with some little modifications. I'll say minimum you take as 1800, maximum as 2400, and on y-axis also minimum as -50, maximum as 250. Short title I'll delete.
Look at this. See, this is how the call holder diagram looks like. There is a loss of 50 rupees. There is a loss of 50 rupees if market price is below 2100 or up to 2100. But when the price rises from 2100, then you start reducing your loss. And then at one point, that is at 2150, there is a break-even point. And after that, you start making profit. Loss is limited up to the amount of premium. Profit is unlimited. Right, sir? Now, I will just copy it down. So this is call holder. If I want to make a diagram for call writer, because call writer is the opposite party, सर उसके लिए सब मामला उल्टा हो जाएगा. जो प्लस साइन है that will become minus 50, minus 100, minus 300, and premium will be 50. Look here. Just opposite. So call holder is receiving 50, 100, 300. So call writer is paying 50, 100, 300. Call holder has paid premium of 50. So writer has received premium of 50. Holder has minus 50. That's the maximum loss. Writer has plus 50. That's the maximum profit. And then unlimited profit. Here it is unlimited loss. Now I'll try to draw the diagram for this fellow also. Just I need to change the series, remove it, add a new series. Just give me one. Series was added, but it was not. First remove this, then add, and then add, then okay. Yes, it's fine now. So minimum is minus 250 and maximum is plus 50. Yes, it's a perfect diagram now. Look here, sir. So this is the RIL share price. This is the position of call holder. Maximum loss is 50. Look here, maximum loss is 50. Maximum profit is unlimited. This is maximum profit is unlimited. Now the call writer position as far as numbers are concerned is just opposite. Minus 50 has become plus 50 and this plus 50 250 has become minus 50 250. प्लस साइन माइनस बन गया, माइनस साइन प्लस बन गया. डायग्राम की बात करें तो वो मिरर इमेज है, नीचे की साइड कांच लगा है ऐसा. So it is just the mirror image. This is call holder, this is call writer. Okay, चलिए तो हम आते हैं वापस से अपने पिछले डिस्कशन पर.
lunch break, let's plan around 1:30. I hope that will be fine. Okay. ठीक है सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Call option means right to buy. It will be exercised only if the price rises. Put option means right to sell. तो मैं आपको तभी बेचूंगा जब मार्केट में सस्ता हो जाए भाव, तो मैं आपको महंगा बेचूंगा. If I have right to sell, you have duty to buy. This is exercised if market price comes down below the strike price. So here the break-even point will be strike price minus premium. Suppose for put option, you are charging me a premium of 40 rupees. And strike price is 2100. So 2100 minus 40, when the price reduces to 2060 level, at that point of time only, below that only, I will make profit. प्राइस 1 रुपया भी कम हो गया ना सर, 2100 से 2099 भी हुआ तो आई विल एक्सरसाइज पुट ऑप्शन, बिकॉज मुझे ज्यादा में बेचने का राइट है, भले मार्केट प्राइस कम हो गया, एंड आई विल रिकवर डिफरेंस अमाउंट ऑफ 1 रुपी फ्रॉम यू. बट 1 रुपी डिफरेंस रिकवर्ड, 40 प्रीमियम पेड, 39 विल बी लॉस. सो माय ब्रेक इवन विल बी एट 2060. तो चलिए क्विकली मैं इसको एक बार आपको ये एग्जाम में एक्सेल पे नहीं करना पड़ेगा सर, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. ये तो कॉल होल्डर और कॉल राइटर हो गया. अब हम यही पोजीशन पुट होल्डर के लिए अगर बनाएं, ये चलिए सर काफी टाइम उसमें लगेगा. हम रादर देन अगर इस तरह से बात करते हैं कि पुट होल्डर को हम अगर ऐसे ही समझते हैं, यहां पर if I make a diagram ना, तो it will look like this. See, ये कॉल होल्डर है, अभी आपने देखा डाउनसाइड इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अपसाइड प्रॉफिट इज देयर व्हेन द प्राइस राइजेस. यू नो, ग्राफ के ऊपर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं मतलब प्राइस बढ़ रहा है. ग्राफ से जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं मतलब प्राइस बढ़ रहा है. सो व्हेन द प्राइस राइजेस यू मेक प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड राइटर का मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम है, और व्हेन द प्राइस राइजेस देन ही सस्टेन अ लॉस. अभी पुट ऑप्शन का भी इसका जस्ट मिरर इमेज हो जाएगा, बट नॉट मिरर ऑन द डाउन साइड, मिरर ऑन द राइट साइड. पुट ऑप्शन में क्या होगा, प्राइस कम है वहां तो आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन एज द प्राइस राइजेस यू विल सस्टेन लॉस. पुट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बिलो द स्ट्राइक प्राइस. So at higher price, you will sustain loss of maximum amount of premium. And if the price falls, you will make profit. Put writer will be opposite. If price rises, entire amount of premium will be his profit. Maximum profit is limited to premium again. And if price reduces, then he will sustain a loss. इसको आप एक स्क्वायर, एक चौराहे की तरह अगर देखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा. कॉल पुट राइटर होल्डर राइटर, तो एक ऐसा सड़क का चौराहा यहां पे बन जाता है. नाउ लुक हियर सर, इफ आई एम कॉल होल्डर, ओके, गिव मी आंसर टू वन क्वेश्चन. V2 entered into a contract, and under that contract I am the holder of call option. V2 entered into a contract. Under that contract I am the holder of call option. So who you are, sir? Are you call writer, or put holder, or put writer? Call writer. Call writer and put holder. Okay. Yes, that's the right answer.
अगर मैं कॉल होल्डर हूं और आप मेरी काउंटर पार्टी हैं तो डेफिनेटली आप कॉल राइटर हैं। मैंने कॉल खरीदा है तो आपने कॉल बेचा है। तो समटाइम्स ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर मैं कॉल होल्डर हूं तो आप पुट होल्डर है। नहीं नहीं नहीं, वी आर डीलिंग विद ईच अदर। इफ आई एम बाइंग कॉल यू आर सेलिंग कॉल, इफ आई एम सेलिंग कॉल यू आर बाइंग कॉल। अब पुट की बात करें तो इफ आई एम पुट होल्डर यू आर पुट राइटर, इफ आई एम पुट राइटर यू आर पुट होल्डर, क्योंकि हम काउंटर पार्टी है। राइट सर? हाँ सर, अब ये कॉल एंड पुट की दुनिया ऐसी है भाई। शेयर मार्केट में ना खासतौर से स्पेकुलेशन जतिन जी जब करते हैं तो मैंने नहीं देखा कि स्पेक्यूलेटर्स एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कमाते हैं। कहीं ना कहीं जाके सब हिसाब बराबर हो जाता है। पैसा तो वो लोग कमाते हैं जो बाजार चलाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन। वो पूरे मार्केट को अपने हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न करते रहते हैं। So if I have right to buy, being a call holder, I have right to buy. It means you have duty to sell. And this call option, I'm talking about call option. Call option is exercised above the strike price only. एक summary बना रहे हैं हम, जो पढ़ लिया उसकी। Put option, holder has right to sell. Therefore, put option, writer has duty to buy. And put option is exercised only below the strike price. Only if the market price reduces below the strike price. Whether you are call holder or you are put holder, if you are a holder, you pay premium. Whether you long call or you long put, if you take long position in option, then you pay premium. Whether you are call writer or you are put writer, if you are a writer, you receive premium. Now, as far as holder is concerned, whether you are call holder or you are put holder, your loss is limited up to the amount of premium, because you are the holder, you paid the premium, your loss cannot be more than amount of premium. मैंने प्रीमियम दिया, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सारी बॉल्स तो मेरे पास में है, बाकी सारे पॉइंट्स तो मेरे पास हैं, एंड द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। नाउ थियोरेटिकली ये प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रैक्टिकली कहां शेयर मार्केट एक दिन में बहुत सारा बढ़ के बहुत सारा गिर जाएगा। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना प्रॉफिट भी लिमिटेड ही। 2100 का रिलायंस का कॉल ऑप्शन आपने ले लिया एक महीने का, तो क्या एक महीने में रिलायंस 5000 हो जाएगा या 50,000 हो जाएगा? नहीं होगा ना। यूजुअल कोर्स में, भैया यूजुअली तो कुछ भी होता है, यूजुअल कोर्स में रिलायंस क्या करेगा, एक महीने में कहां जाएगा? 2100 से 2200 हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो हम कहते हैं थियोरेटिकली कि प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रैक्टिकली प्रॉफिट भी लिमिटेड है, क्योंकि शेयर वाइल्ड फ्लक्चुएशन हर टाइम तो नहीं होते, जब होंगे तब आपको आएगा प्रॉफिट। कॉल राइटर और पुट राइटर, whatever type of writer you are, your profit is limited to premium. प्रीमियम खाया है आपने तो प्रीमियम से ज्यादा आप नहीं कमा पाएंगे, but loss is unlimited. But let me tell you, loss practically is limited, क्योंकि बहुत ज्यादा तो फ्लक्चुएशन प्राइस में होगा नहीं। अब सर एक इंपॉर्टेंट बात, whether it is cash market means you enter into a contract now and settle it immediately within 2 days. Whether you are dealing in cash market or you are dealing in forward market, which is a part of derivative market, or you are dealing in future market, cash market, forward market, future market, you don't choose price, you deal at the price prevailing in the market. सर आप किसी कपड़े के शोरूम पे जाके ये नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब ये जो टी शर्ट डमी पे लगा है ना, जिसपे आपने प्राइस टैग कुछ भी लगाया 2500 का, आई डोंट केयर, ये जो टी शर्ट डमी पे लगा है ना, मुझे 500 रुपए में पैक कर देना। You don't choose price, you deal at the price prevailing in the market. Cash market, forward market, future market, you don't choose price, you deal at the price prevailing in the market. या इंतजार करो आप कि कभी आपका बोला हुआ भाव आएगा, दुकान के बाहर बैठ जाओ, कभी सेल लगेगी तो मैं ले लूंगा, नहीं लगेगी तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा। But in case of options, you choose price. You can say कि जो भी शेयर है
मान लो एक एबीसी कंपनी का शेयर है जिसकी करंट प्राइस 1200 है। अब आप चूज कर सकते हो एक स्पेक्ट्रम ऑफ प्राइस से कि मुझे तो एक महीने बाद ये शेयर 1000 रुपीज में खरीदने का राइट चाहिए, 800 में खरीदने का राइट चाहिए, 1300 में खरीदने का राइट चाहिए, 1400 में खरीदने का राइट चाहिए। यू चूज द प्राइस, यू चूज स्ट्राइक प्राइस। होगा ये शेयर 1200 का, आई डोंट केयर, बट आफ्टर 1 month आई वांट टू बाय इट फॉर 500 रुपीज, आफ्टर 1 month आई वांट टू बाय इट फॉर 1500 रुपीज, 1800 रुपीज। चूज स्ट्राइक प्राइस। सर बहुत मजे हैं ऑप्शन में तो। I choose strike price, I choose call or put, and then I am the option holder. मेरी इच्छा होगी तो एक्सरसाइज करूंगा। You choose everything, sir. You choose the underlying, you choose the expiry date, you choose the strike price, you choose whether it is call or put, you choose to exercise it. Yes, you choose many things. सब आप पसंद कर लो, एक चीज राइटर बोलेगा, प्रीमियम। हिंदी सही ना, 100 सुनार की एक लोहार की। आप सब पसंद करो, राइटर सुन रहा है आपकी बात, and then he will say, okay, you want this deal? You say yes, give me premium of 200 rupees. You say, oh, this is too much, I'll give you just 180 rupees of premium. So now there are a number of option writers who are ready to deal, there are a number of option holders who are ready to deal. अब इनके बीच जो बार्गेन होगा और जो मार्केट में फ्लक्चुएट होगा वो प्राइस नहीं है, वो प्रीमियम है। In cash market, forward market, future market, the price of underlying itself is market driven. In options, the price is decided, chosen by you. What is market driven is premium. अब इसकी वजह से सर इतने प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर आप ब्रोकर को फोन लगाओ और उसको पूछो कि निफ्टी कितने में चल रहा है, तो वो आपको एक भाव बता देगा। और जैसे ही आप उसको बोलोगे कि निफ्टी फ्यूचर का प्राइस क्या है, तो ही विल आस्क कि 1 month निफ्टी फ्यूचर और 2 months निफ्टी फ्यूचर और 3 months निफ्टी फ्यूचर और व्हाट, कौन सा निफ्टी फ्यूचर चाहिए भाई ये तो बताओ। So one nifty will become many products. But if you ask about option, my God, if you ask him कि निफ्टी ऑप्शंस के बारे में जरा बताइए, तो he will ask you कि do you want to deal in nifty call option or nifty put option? So nifty has become one call product, one put product. You say okay, call option. Then he will say 1 week expiry, 2 week expiry, 3 week, 4 week, 5 week, 6 week, 7 week, 8 week, 1 month, 2 month, 3 month, 6 month, 9 month, 12 month, up to 5 years of expiries are available. Oh my God, so many call options. I'll take 1 month call option. Sir, which 1 month call option? At 11,000 or at 11,500 or at 10,500? There are 50 strike prices available. A single nifty will become 1,000 types of products. एक निफ्टी में 1000 प्रोडक्ट बन जाएंगे, पूरी ऑप्शन चेन बन जाएगी। फिर बताइए आपको क्या चाहिए, उसके प्रीमियम की बात करेंगे। Look here, this is NSE website. So current Nifty is 11,073, Friday closing, whatever, 31st July closing. 11,073 is current Nifty. ये जितना येलो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना सर, ये सब इन द मनी ऑप्शंस है। लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा, लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड पूरा पुट ऑप्शन है। येलो बैकग्राउंड इन द मनी है, व्हाइट बैकग्राउंड आउट ऑफ द मनी है। Look here, 11,073 पर निफ्टी है ना, तो इसके ऊपर जो भी होगा वो आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको इन एंड आउट नहीं बताया, आई एम सॉरी सर। ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट। सो नाउ ऑप्शंस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। One is European option that can be exercised only at expiry. 1 month का ऑप्शन लिया ना तो बीच में मत आना,
1 मंथ की एक्सपायरी पे प्राइस डिफरेंस से सेटलमेंट करेंगे। एंड देन देयर इज अमेरिकन ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एनी डे टिल एक्सपायरी। एक्सपायरी तक किसी भी दिन आप चले जाओ, आपको लगे कि आज ही भाव बहुत बढ़ गया है, कल को एक्सपायरी तक तो फिर कम हो जाएगा, तो आज ही एक्सरसाइज कर। दैट इज अमेरिकन ऑप्शन। इन इंडिया वी हैव यूरोपियन ऑप्शंस। Earlier we were having only American options, but nowadays we have only American options. एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, Bermuda option can be exercised on a series of dates. यूरोपियन इज द एक्सट्रीम, 3 months ऑप्शन लिया है, बीच में मत आना। अमेरिकन एनी डे टिल 3 months। बर्मुडा एनी मंडे टिल 3 months। इट्स नॉट एनी डे टिल मंथ, इट्स एनी मंडे टिल 3 months, और इट मे बी एनी एट द लास्ट डे ऑफ एनी मंथ, वो जो भी हम सीरीज डिसाइड करें। यूरोपियन कैन बी एक्सरसाइज ऑन 1 day only, अमेरिकन कैन बी एक्सरसाइज ऑन एनी डे, एंड बर्मुडा इज इन बिटवीन, कि दोनों के बीच कुछ सीरीज ऑफ डेट होगी। इन इंडिया वी हैव यूरोपियन ऑप्शंस। नाउ ऑप्शंस आर ऑफ 3 types. Call and put are 2 type, American and European 2 type. Now again option may be classified into 3 types. In the money options, at the money options, एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। ऑप्शन सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है रियल लाइफ में। क्वेश्चन में भी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमको शेयर बाजार का वैल्यूएशन करना है? नहीं सर, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर में ऑप्शन होता है, कॉलेबल बॉन्ड्स में ऑप्शन टू कॉल होता है, पुटेबल बॉन्ड्स में ऑप्शन टू पुट होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में ऑप्शन टू बाय शेयर होता है, वारंट्स गिवन टू मैनेजमेंट में ऑप्शन टू बाय होता है। सो these options are actually embedded in other securities, and that's why we'll need to make valuation of those securities. Suppose current market price of a share is 500 rupees, and you say that I want to buy this share after 3 months at 400. You're asking favorable price, 500 का आपको 400 में चाहिए। In the money option, favorable price, I want to buy it at 500 after 3 months at the money option. I want to buy it at 600 after 3 months. Guys, this is out of the money option. अगर मैं बोलूं मुझे आ रहा है ये शेयर 3 महीने बाद 600 में चाहिए जो आज 500 का है, won't people ask me, have you gone out of your mind? Are you crazy? पागल हो तुम? ऐसा नहीं पूछेंगे मुझसे? क्या इसके बाद भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? Can I still earn profit if I choose strike price to be 600 rupees? Yes or no? Current market price is 500 and I'm taking call option to buy this share after 3 months at 600. तो ऐसा हो गया भैया, एप्पल कैसा दिया, 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो में नहीं दोगे? Can I still make profit? Yes, actually I will. Because if the market price after 3 months, it's not today. If market price after 3 months goes up above 600, above 600, 700 हो जाए, तो I'll make profit. तो it's not crazy. ये पागलपन नहीं है, ये भी एक डील है। ओके, पुट ऑप्शन, 500 का शेयर 600 में बेचूंगा सर, फेवरेबल प्राइस, इन द मनी। I'll sell it 500 after 3 months at the money. I'll sell it 400 after 3 months, which is currently worth 500. I'll sell at discount 400 out of the money. So similarly, it can be deep in the money or deep out of the money also. Deep in the money मतलब बहुत ही ज्यादा favorable price पूछ लिया आपने, call option दे दो मुझे 10 रुपए का,
डीप आउट ऑफ द मनी 1000 रुपए में ये शेयर में लूंगा. सी इफ यू चूज इन द मनी ऑप्शंस ना, you pay high premium. Very simple. If you choose at the money option, you pay moderate premium. If you choose out of the money options, you pay low premium. Call and put option, American and European option, in the money, at the money, out of the money option. अभी in the money एक नहीं है, in the money 500 के नीचे जो भी है सब in the money है. 550, 400, 450, 400, 350, 300 सब in the money. And 550, I'm sorry, एक गलत बोल दिया था मैंने, 600, 700, 800 वो सब out of the money. So now let's revisit that NSE web page. 11,073 rupees is current Nifty. So this is the series of strike price. देखिए तो सही कहां से कहां तक जाती है ये. It is 50 rupees interval और 8,300 से start होकर के ये जाती है 12,800 तक. तो 12,800 minus 8,300 divided by 50. 12,800 minus 8,300, 4,500 रुपए का डिफरेंस है. 50 रुपए के इंटरवल पे 90 स्ट्राइक प्राइसेस है सर ये. 90 स्ट्राइक प्राइसेस ऑन ए सिंगल अंडरलाइन. तो 90 कॉल, 90 पुट, और फिर वो भी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, अप टू 5 years. सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. अब देखिए यहां पे देखते हैं. लुक हियर, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा ही रखना पड़ेगा मुझे. 11,073 is current Nifty. So if you're asking a call option at 11,100, तो महंगा खरीद रहे हैं, आउट ऑफ द मनी सब वाइट बैकग्राउंड है. और 11,073 वाला आप 11,050 में खरीदना चाहते हैं, ये येलो बैकग्राउंड इन द मनी ऑप्शन. देखिए इसका जो प्रीमियम है वो 135 रुपीज है इन द मनी का, और आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है 106 रुपीज. फर्दर इन द मनी मोर प्रीमियम, फर्दर इन द मनी मोर प्रीमियम. तो 100 वाला प्रीमियम 600 तक भी दिखेगा और ऊपर भी जा रहा है. Here out of the money low premium, further out of the money further low premium, further out of the money और low. ये 9 रुपए प्रीमियम भी आ गया. पुट ऑप्शन में अपोजिट देखिए सर. अब आप इन पुट ऑप्शन, if you say I'll sell cheaper less than the current market price, it is out of the money put option. यहां उल्टा है. इधर आप देख रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस बढ़ने कम होने पर प्रीमियम बढ़ रहा था, यहाँ स्ट्राइक प्राइस कम होने पे प्रीमियम कम हो रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग फर्दर आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी. 4 रुपए तक आ गया. एंड इफ द प्राइस राइजेस, यू आर सेलिंग एक्सपेंसिव, so you are going in the money, in the money, in the money, in the money, in the money. Premium is rising. So price is not market driven. Premium is market driven, sir. Any question on this? This is all for expiry of 6th of August. And then you have 13th August, 20th August, 27 August, 3rd September, 10th September, 17, 24. यहां तक तो ये सब वीकली एक्सपायरी चल रहा है. उसके बाद 15 दिन की एक्सपायरी पर आ गया ये. 10th अक्टूबर, 19th अक्टूबर. फिर मंथली एक्सपायरीज आ जाएंगी. उसके बाद दिसंबर, फिर क्वार्टरली एक्सपायरी मार्च, जून, फिर हाफ ईयरली एक्सपायरी दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, और ये जून 2025 तक जा रहा है. 5 साल आगे इतनी सारी एक्सपायरीज अवेलेबल है. सो व्हाई विल आई गो फॉर कॉल इन द मनी एंड नॉट पुट आउट ऑफ द मनी? सर look, this is very simple. There are 2 ways. Being an individual small player, if you want to play safe, don't take a writer position, take a holder position. क्योंकि मैक्सिमम लॉस पे लिमिट हो जाती है ना प्रीमियम.
अब आपको होल्डर पोजीशन पे स्पेक्युलेट करना है. इफ यू आर बुलिश देन यू विल लॉन्ग कॉल, ताकि भाव बढ़ने पे आपको प्रॉफिट हो. एंड इफ यू आर बेरिश देन यू विल लॉन्ग पुट. तो आपको करना लॉन्ग ही है. इफ यू आर बुलिश देन लॉन्ग कॉल, इफ यू आर बेरिश देन लॉन्ग पुट. फिर बात आती है स्ट्राइक प्राइस की, कि मैं निफ्टी पर बुलिश हूं, पर मैं कितना बुलिश हूं. मुझे लगता है 6 अगस्त तक निफ्टी 100 रुपए बढ़ जाएगा, नॉट मोर देन दैट. तो मुझे फिर ज्यादा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस नहीं लेनी चाहिए. मुझे एट द मनी या थोड़ी सी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए. ज्यादा इन द मनी ले लूंगा तो प्रीमियम ही बहुत महंगा हो जाएगा. So similarly, the same thing goes with put option also, sir. If I'm bearish, तो मुझे put option ले लेना चाहिए ताकि प्राइस गिरने पे मुझे फायदा और बढ़ने पे नुकसान ना हो. बट अब क्या मैं इन द मनी पुट लूं या आउट ऑफ द मनी? देखिए, इन द मनी में तो महंगा प्रीमियम लगता है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए. अब या तो आप बात करिए एट द मनी या आउट ऑफ द मनी. अगर आप थोड़े से बेरिश हैं तो एट द मनी ले लीजिए. अगर आप बहुत ज्यादा बेरिश हैं तो आउट ऑफ द मनी जाके लीजिए, तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा छोटे से प्रीमियम पे. एंड अतुल सर, यूजुअली पीपल डोंट डील इन अ सिंगल ऑप्शन, दे मेक स्ट्रेटेजीज. लाइक आप स्ट्रेडल बनाते हैं, उसमें एक कॉल बिलोंग करते हैं, एक पुट बिलोंग करते हैं. तो भाव गिरेगा तो भी प्रॉफिट है, बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट है. फिर स्ट्रैंगल बनता है, स्ट्रिप, स्ट्रैप, बटरफ्लाई स्प्रेड, कॉन्डोर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, और इन सब का अपोजिट स्प्रेड. वो सारी स्ट्रेटेजीज आप ले सकते हैं. सो इट डजंट गो इन आइसोलेशन, इट गोज इन कॉम्बिनेशन. अब जब ये आप बटरफ्लाई स्प्रेड बनाते हैं ना, तो आप एक लोअर स्ट्राइक प्राइस और एक हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल शॉर्ट कर देते हैं, और मिडिल प्राइस पर 2 कॉल ऑप्शन लॉन्ग कर लेते हैं. ऐसे करके एक पूरी स्ट्रेटेजी बनती है. राइट सर? Still, if you want to ask further, you can please ask it. Okay. All right. So we were here. Put option, call option, European, American, Bermuda, in the money, at the money, out of the money. These are options, and these are the payoff of options. So let's start option valuation after the break. क्योंकि ऑप्शन वैल्यूएशन की फाइल एक बार खुल जाएगी तो फिर लंबी चलेगी. नहीं परवीन सर, आई एम नॉट गोइंग टू कवर सच स्ट्रेटेजीज बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस. Because this time is already short to cover the syllabus itself, so I'm really sorry, I won't be able to cover that. Right sir, so it's 125. Let's go together at 225. Okay. All right sir, thank you. 230. Sure sir. आज आप बार्गेनिंग मोड में हैं सर. ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड. चलिए सर, तो फिर मिलते हैं वापस.
Okay, welcome back to the session. Sir, is it last session with you? Most probably, sir. Even I am not sure about the schedule. Okay. So, yes, most probably. So usually I take maximum up to 31 hours of session. But So, here, so I think then we have more time. नहीं, but यहाँ नहीं, अभी आज नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं out of 50 hours of training मैं ज़्यादा से ज़्यादा 31 hours पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि उसके बियॉन्ड पूरा लॉ आता है. I am not good at law. But here, some diversified portfolio is always better. तो थोड़ा सा कुछ फाइनेंस पार्ट भी और फैकल्टीज भी लेंगी सर. अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आई विल टेक रिमेनिंग फाइनेंस पार्ट आल्सो. Yes, sir. Please keep your diary open. Yeah, sure, for sure, yes. आप ऐसे जनरली क्या सीए फाइनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं क्या सर? हाँ सर, मैं मतलब काफ़ी टाइम मैंने व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिस इन 99 तो मैं फुल टाइम प्रैक्टिस में था और मेरे साथ एक पार्टनर भी हैं और पार्ट टाइम में पढ़ाता था 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे. स्लोली ग्रेजुअली मुझे एकेडमिक्स ने बहुत अट्रैक्ट करा तो मैं फुल टाइम इसमें आ गया और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस. इसमें बोरियत फील नहीं होती है क्या सर? एक ही चीज मतलब रिपीटेशन बार बार वही वो चीज पढ़ाओ. हाँ, कभी कभी होता है सर ऐसा. अभी नहीं, प्रोफेशनल इसमें तो नहीं होता है, बट वो जो स्टूडेंट्स वाली क्लास आप बोल रहे हैं ना सर, वहाँ कभी कभी होता है ऐसा. वहाँ कभी होता है, बट आई वॉज पैशनेट अबाउट इट मैन, तो मुझे अच्छा ही लगता है ज्यादा करके. मतलब व्हेन आई स्टूडेंट सर, तो मैं अपने दोस्तों को पढ़ा दिया करता था. उनको जो भी चीजें दिक्कत आती, समझ में नहीं आती, तो कहीं ना कहीं अंदर से कुछ. आपका बेसिक ज्यादा इंदौर में ही है मतलब? हाँ सर. तरुण सर, जी सर. तरुण सर, एक क्वेश्चन है मेरा. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस का जो शेयर है, इनकी सर वैल्यूएशन कैसी है? जैसे इनके पास अभी इतना इन्फ्यूजन हुआ है, डिफरेंट बायर ने इनका शेयर्स लिया है, तो सब अलग अलग प्राइस पे हुआ है सर. वो हुआ है, लेकिन सर क्या लग रहा है, जैसे ये शेयर अभी काफी आगे भी भाग रहा है, मतलब लॉन्ग ऑप्शन पे है, लॉन्ग पे है. लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है सर, क्योंकि अब ये इसका जो रिलायंस का फ्यूचर अगर कहीं पर नीचे जाएगा तो वो आफ्टर मुकेश अंबानी हो सकता है कि किसी दिन उनकी उम्र के साथ में अगर वो अपने जो एंसेस्टर्स मतलब जो आगे बच्चे हैं उनके हाथ में जब वो देंगे तब वो आगे उसको कितना अच्छा चला पाएंगे, दैट गॉड नोज. लेकिन जब तक मुकेश अंबानी जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें तो ये बिजनेस सर आगे ही बढ़ना है, इसने पीछे कहीं नहीं जाना है. बहुत कैलकुलेटेड पर्सन. ये एमआर रोड कैसा है आपका इंदौर में एरिया? सर वो तो इंदौर का सबसे प्राइम है सर. वो MR10 जो जिसको बोलते हैं ना, सुपर कॉरिडोर बोलने लग गए उसको आजकल. तो वो सुपर वहां पर अभी क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या? सुपर कॉरिडोर पे सर माल पक गया है वैसे अब तो. नहीं, एक्चुअल में मेरा एक पार्टी से वसूली करना है सर. फिर तो ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा है. वसूली के केस में तो सर कहीं भी हो ले लेना चाहिए. वसूली के केस में अभी मेरे को तो फायदा हो गया ना, तरुण जी से जान पहचान हो गई, लेके फिर आपको बोल दूंगा सल्टा दीजिएगा किसी को. नहीं, MR10 में भी बहुत लंबा एरिया है, अगर उसमें भी वो सुपर कॉरिडोर है. वो 10 नंबर MR रोड पे कोई प्रोजेक्ट है, जो कोई होटल प्रोजेक्ट वगैरह रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें वो पहले काफी झमेला भी हुआ था पॉलिटिकल वगैरह का. एक तो टोल के पास में है, वो होटल बन नहीं पाया, वो बीच में ही रह गया. हाँ, वो बीच में रुका हुआ है. काफी टाइम के साथ में कॉमर्शियल वो भी है, बंगलो वगैरह भी है. एक होटल बीच में रुक गया, उसके साथ में मैं उसमें लेने वाला था हाउस, पर लकीली मोदी ग्रुप का है वो, कोई मोदी ग्रुप का है.
नहीं अच्छा है सर, एक बार थोड़ी डिटेल आप मुझे शेयर करना तो मैं आपको मैं लेता हूँ डिटेल तब। मैं एक्चुअल रेट लेके दूंगा कि वहाँ क्या है। इंदौर में ठीक है, प्रॉपर अभी रुक गया है सर, प्रॉपर्टी मार्केट सब जगह रुका होगा, तो इंदौर सभी जगह रुका हुआ है। और जो ये आप एरिया बोल रहे हैं ना, ये अच्छा है, ये जब भी अब नेक्स्ट चलेगा, आज नहीं 10 साल बाद मार्केट चलेगा, 5 साल बाद चलेगा, तब ये एरिया तो उठेगा सर, ये बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे ही कोई क्लाइंट का है, वो वहाँ पर माल पड़ा हुआ है। नहीं आप बताइएगा, मुझे डिटेल दीजिएगा। ओके। और एक फ्लैट तरुण जी को दिला दीजिएगा रिकवरी में। अरे सर, मेरा पोर्टफोलियो, मैं डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाता हूँ, तो खुद डाइवर्सिफाई नहीं करता, कुमार फूटी अंडे में खाता है ना सर। दुनिया को मैं डाइवर्सिफिकेशन पढ़ाता हूँ कि डाइवर्सिफाइड रखो पोर्टफोलियो। मैंने खुद ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करा कभी। और एक्सपोजर एक जगह पे ठीक नहीं रहता है। और मैं इतना कैपिटल मार्केट पढ़ाता हूँ यहाँ तो ठीक है, बट आई डोंट डील, क्योंकि मेरा बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है कि अगर मैं आपको एडवाइस दूं कि आप लाख रुपए लगा दो, या आप मुझे एडवाइस दो कि लाख लगा दो, तो मैं 10 लाख लगा दूंगा, वो फिर खुद पे कंट्रोल नहीं, इसलिए आई स्टे अवे फ्रॉम कैपिटल मार्केट। सर, हैव यू एवर ट्राइड कैपिटल मार्केट? सर हाँ, मैंने एक्चुअली तो करा नहीं, क्योंकि सर हैविंग नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग, और कंटिन्यूअसली उसको अपडेट करना अलग बात हो जाती है, वो फुल टाइम काम है सर। मेरे पास टूल्स हैं, मैं टेक्निकल भी काफी सीखा था और फंडामेंटल भी, लेकिन आपको रोज का 2-4 घंटा अगर आप नहीं लगाएंगे तो अच्छा काम नहीं कर सकते। और विथ माय एकेडमिक्स आई वाज सो मच ऑक्यूपाइड, अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, बट बीमार भी टाइम होके देखना पड़ता था कि अगर थर्सडे को बीमार हुए हैं तो उसको रोक के रखो ताकि संडे तक ठीक से बीमार हो जाए। तो ठीक है सर। गुड सर, गुड, ग्रेट। चलिए सर। सो सर, अब हम आते हैं एकदम कोर की तरफ, विच इज वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। Terminology is what I am using. It is not standard across the board. Some people use this, some people may use other terminology also, sir. So here it is, VC is value of call option. VC is value of call option. When I say value of call option means option premium. अभी हमने NSE की साइट पे प्रीमियम देखा, वो तो प्रीमियम प्रिवेलिंग इन द मार्केट हो गया कि भाई ये वाला ऑप्शन है, इसका प्रीमियम 106 रुपए 35 पैसे है, अब आपको अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो मत लो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आइडियली होना क्या चाहिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे VC। VP इज वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, दैट इज पुट प्रीमियम। VS इज करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, जैसे अभी निफ्टी 11,11073 पर था, दैट इज VS। E इज द स्ट्राइक प्राइस, वो बीच में लंबा कॉलम था जिसमें 90 स्ट्राइक प्राइसेस थी, दैट इज एक्चुअली E, स्ट्राइक प्राइस। तो अब इन ऑप्शन की जो वैल्यू है सर, वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। करंट मार्केट प्राइस, नंबर 2, करंट मार्केट प्राइस यू डोंट चूज, इट सिंपली प्रिवेल्स। स्ट्राइक प्राइस यू चूज, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। टाइम टू एक्सपायरी यू चूज, 1 week, 1 month, 1 year, whatever। Risk free rate of interest prevails, you don't choose it। There may be a question, why risk free rate of interest, why not cost of capital? बिकॉज जितने भी प्राइसिंग होती है वो सब आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी पर बेस्ड होता है। आर्बिट्रेज का मतलब होता है सर, बाइंग फ्रॉम द मार्केट वेयर द प्राइस इज लो एंड सेलिंग इन द मार्केट वेयर द प्राइस इज हाई। तो इंदौर सराफा में गोल्ड अगर 53,000 है, और दिल्ली में सराफा मार्केट का कोई नाम है सर स्पेसिफिक, या कुछ जगह? उच्चा महाजनी। प्रवीण जी, एक बार फिर से बोलिए। उच्चा महाजनी। अच्छा, आपको टाइप करना पड़ेगा, तो बड़ा डिफिकल्ट नाम दिख रहा है। सर मेरा ना लैपटॉप था, हैंग हो गया है, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। अमर टाइप कर देंगे, अमर। हाँ, कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम बताया आपने, मेरे फर्दर कहीं एग्जांपल में काम आएगा ये तो। अच्छा, कुच्चा महाजनी। कुच्चा महाजनी, मेरा नाम नहीं, कुच्चा। एंड महाजनी तो मेरा नाम तो आ ही गया है इसमें। आपके आसपास ही है। व्हाट इज दिस कुच्चा महाजनी? ये सराफा मार्केट, चांदनी चौक के सर सराफा मार्केट है।
चाहिए। ओके, चांदनी चौक के सराफा मार्केट है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पर स्क्वायर फीट रेट अगर कहीं का है तो वो यहीं का है। अच्छा, अच्छा मार्जिनी, वाह। तो सर मान लीजिए उधर आपके कुछ मार्जिनी में गोल्ड का प्राइस 50,000 है नहीं, बट आई एम सेइंग इंदौर में से 53,000 है, सो आई विल बाय फ्रॉम दिल्ली मार्केट एंड आई विल सेल इन इंदौर मार्केट, एंड दैट वे आई विल इंस्टेंटली मेक प्रॉफिट। उधर खरीदने का सौदा करा, इधर बेचने का, डिफरेंस अमाउंट मेरा प्रॉफिट होगा। बाइंग फ्रॉम द मार्केट वेयर द प्राइस इज लो, सेलिंग इन द मार्केट वेयर द प्राइस इज हाई इज आर्बिट्रेज। There are 3 characteristics of arbitrage, sir. Number 1, no investment. आज खरीदो आज ही बेच दो, पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। Number 2, no risk. चूंकि मैंने फोन पे दोनों सौदे एक साथ कर लिए, एक इधर एक इधर, तो अब मेरा सौदा करने के बाद रेट फ्लक्चुएट भी होता है, तो आई एम नॉट अफेक्टेड because my deal is already entered into. So no risk, no investment, no risk, and positive return. You buy it 50,000, you sell it 53,000. Even if some transaction cost is there, still I'll make a profit. No investment, no risk, positive return. Arbitrage किधर भी करने को मिले तो आपको किसी को motivational speech नहीं देनी पड़ेगी कि go and do the arbitrage. Everybody will automatically do arbitrage. So all pricings are actually based on arbitrage pricing theory, और arbitrage होता है risk free, और इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ली जाती है दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्यूचर्स की प्राइसिंग भी रिस्क फ्री रेट पर ही होती है, फॉरवर्ड्स की प्राइसिंग भी रिस्क फ्री रेट पर होती है सर। देन वॉलेटिलिटी, ये ना रियल लाइफ का सबसे बड़ा खतरनाक फैक्टर है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस स्क्रीन पे दिखती है, स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हैं, टाइम टू एक्सपायरी यू चूज, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इजीली एक्सेसिबल फॉर एनीबॉडी। व्हाट यू डोंट नो इन रियल लाइफ इज वॉलेटिलिटी. If you look at the historical volatility, that RIL was fluctuating 30% per annum. So maybe in future it will fluctuate by 50% or it will fluctuate by 10% only. तो historical volatility may or may not prevail in future. सबसे बड़ा जो खतरनाक फैक्टर रियल लाइफ में है वो volatility है। बाकी सब चीजें तो नोन होती है, तो ऑप्शन प्राइसिंग अदरवाइज बहुत इजी है इस volatility को छोड़कर। अब ये 5 फैक्टर पे ऑप्शन प्राइसिंग डिपेंड करती है, बट कंसिडरिंग ऑल 5 फैक्टर्स एट अ टाइम विल बी वेरी टफ। तो हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग लेंगे सर, बेबी स्टेप्स लेंगे। पहली स्टेप में हम ना सिर्फ 2 फैक्टर कंसिडर करेंगे और ऑप्शन वैल्यूएशन करेंगे। देन लर्निंग स्टेप 2 में विल कंसिडर 4 फैक्टर्स एंड देन विल मेक वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। तीसरी स्टेप में वी विल कंसिडर 4.5 फैक्टर्स। थर्ड स्टेप में विल कंसिडर 4.5 factors, that is partial volatility only, and make valuation of option. Learning step number 4 पे जब मैं आऊंगा, then we will consider all 5 factors to make valuation of option, and that will be the real life valuation. बाकी तो learning steps है. So let's first make valuation of option considering these 2 factors only. So my learning step number 1 is valuation of option at expiry. So what do I mean by at expiry? So like one of the expiry is 6th of August. You can see here on the screen. It is 6th of August is the expiry of option. One expiry of option is 6th of August. And market closes at 3:30 p.m. So I am making valuation of option not today, but I am making valuation of this option on 6th of August at 3:29:59 p.m. 1 सेकंड पहले, ऑप्शन एक्सपायर होने के 1 सेकंड पहले मैं ऑप्शन का वैल्यूएशन कर रहा हूं। दैट इज आई एम मेकिंग वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी। नाउ हियर द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज current price of the stock minus the strike price you have chosen. So suppose current price of the stock is 1,000 rupees and you choose that I want to buy this share at 950 rupees after 1 second because you're making valuation at expiry. तो जो चीज 1000 की है आप बोल रहे हो मुझे 1 सेकंड बाद वो 950 में खरीदना है. So you're asking a favor of 50 rupees. That's why the premium itself will be 50 rupees. अभी इसमें टाइम वैल्यू कुछ भी कंसिडर नहीं हुई है. This is just intrinsic value of the option. But if you choose the strike price to be 1050, that stock worth rupees 1000, I would like to take call option at 1050, then the price is unfavorable. And usually, if you make the calculation, it is minus 50. But premium cannot be negative. Negative premium means
writer is paying premium to the holder. That never happens, sir. Therefore, whenever call option or put option premium appears to be negative, you treat it as 0. That simple. That's it. Full stop. Put option में formula flip हो जाएगा. Instead of VS minus E, it will become E minus VS. Because this is E. So call option is exercised when VS is above. Put option is exercised when VS is below strike price. That's why this is E minus VS. तो मानो कि शेयर जो है वो 1000 का ही है, but you choose a strike price of 1060. 1000 का शेयर है, you choose a strike price of, or let's change the example little bit. चलिए ठीक है, doesn't matter. आपने थोड़ा strike price ऊपर का ले लिया, 60 rupees का favor you are asking, so the premium will be 60. But you say I want to sell it for 950, something worth rupees 1000 today, so it will be negative premium and will be considered as 0. तो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि why should I believe in this formula? So this is just a theory. This is the ideal thing. Actual thing may be different. If market E and V, yeah. Sir, E is strike price. Look here. E is exercise price, so that will be easy to memorize. E for exercise, V for value, and S for stock. So current value of stock. So now market doesn't believe this formula. They say, "अरे तुमने formula दे दिया, हम क्यों मानेंगे इसको?" Market says actual premium is rupees 30 only. So market is dealing this option at 30 rupees. So something worth rupees 50 is available for 30. So it is undervalued, sir. तो undervalued है तो खरीद लेना चाहिए immediately. So you long this call option. You become holder of this call option. Pay 30 rupees prevailing premium and immediately buy this option. After 1 second, this option will expire and market price will still remain 1000. And you have a right to buy at 950. So you will immediately exercise this option, and on exercise of this option, you will get 50 rupees. So you paid premium 30, and on exercise of option, you are getting 50 rupees, immediate 20 rupees ka profit. So every rational person will queue up. लाइन लगाएंगे लोग कि अरे ये 30 में डील हो रहा है, चलो खरीद लो. So there will be buying pressure on call option, and you know the economics. In case of buying pressure, call option premium will start rising क्योंकि sellers तो जो हैं उतने ही हैं मार्केट में, बायर अचानक बढ़ गए. So 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 भी हो गया ना ये प्रीमियम बाइंग प्रेशर में, तो भी arbitrage will not stop because you buy it for 45 and immediately you exercise it for 50. And make a profit of 5 rupees. So eventually it will reach 50 rupees. Moral of the story is very simple. Believe in this formula. Right, sir? But you know, making valuation at expiry, this is simply the intrinsic value, sir. 1000 की चीज 950 में खरीदना है ना, तो 50 का फेवर मांग रहे हो, 50 रुपए प्रीमियम दो. And share worth rupees 1000, you want to sell for 1060, give premium of 60 rupees. As simple as this. Now let's talk about learning step number 2. So when I talk about learning step number 2, here I am making valuation of option before expiry. So option will expire on 6th of August, or maybe after 6 months option will expire. But I am valuing it today, but ignoring volatility. I am ignoring volatility. Look, sir, जब मैंने at expiry valuation किया, तो time to expiry becomes 0. When I make valuation at expiry, time to expiry becomes 0. If time to expiry is 0, risk-free rate of interest is useless. If there is no time to expire, there will be no volatility also. इसलिए ये तीनों चीजें ignore हो गई. अब हम बोल रहे हैं make valuation before expiry.
So time to expiry is say 6 months, that is half a year. So risk-free rate of interest will also play its role because the time gap is there. So these 4 factors will be considered. We are ignoring volatility. We are assuming if the share is worth ₹1,000 today, even after 6 months, it will remain at 1,000, neither increase nor reduce. Formula is going to remain same, sir. So call option was VS minus E. Again, it is VS minus E, but instead of E, now it is present value of E. So why are we calculating present value of E and not present value of VS? Why is it so? Look, VS is current value of stock, sir. What is VS? It is current value of stock. So और किधर present value निकालेंगे? E is the strike price at which you will buy share after 6 months. 6 महीने बाद share खरीदना है. So you will have to calculate. You will have to calculate price, present value. Just a second. You will have to calculate present value for this. VS is already current. Strike price will be used at expiry. That's why you are calculating present value of strike price. But sir, we studied that to calculate present value, one should do 1 plus R to the power T. Sir, there are 3 ways to calculate present value. I'll tell you what are those 3 ways. Just give me 1 minute. Yes, it's here. You know, in place of 1 plus RT, one can also take 1 plus R raised to the power. That is what we studied, na? That present value is equal to future value divided by 1 plus R raised to the power n. So, you know, this one is simple interest. This one is compound interest, discrete compounding, 3 months, 6 months, 1 year. और इससे भी अच्छा कुछ चाहिए, so that becomes e to the power RT. E is the exponential function, which is a value of 2.71828. E to the power RT, sir. Now that is continuous compounding. You know, discrete compounding is twice a year, 4 times in a year. Continuous compounding is infinite times compounding in a year. So in all original formulas, you don't use 1 plus RT, rather than you use e to the power RT. But for the sake of simplicity, we are using 1 plus RT. So let's see. Let's take the example. So I was saying you, suppose the share is worth ₹1,000 today. That is VS. Strike price you have chosen to be in the money. Favorable, 950 में खरीदूंगा. Say the risk-free rate of interest is 10% per annum. And time to expiry is half a year. So current price is 1,000. I will buy at 950, favorable price. And 10% is risk-free rate of interest. Half a year is time to expiry for the option. So it's like 950 upon 1.05. 10% साल का है तो आधे साल का 5% है, इसलिए 1.05. So present value will be 904 rupees. So value of option will be 95.24. So in the previous example, at expiry, the price was 50, but this time it is 95.24. Because actually value of option comprises 2 components. One is intrinsic value, and other one is time value. Here, value of option is 95.24. उसमें से 50 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है सर. 1000 का शेयर है, आप बोल रहे हो मैं 950 में लूंगा, तो 50 रुपए प्रीमियम तो वैसे ही देना बनता है ना. 1000 का शेयर 950 में लूंगा तो 50 रुपीज प्रीमियम तो वैसे भी आ गया. तो जो रिमेनिंग 45.24 प्रीमियम आपको दिख रहा है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. देखिए ना, 950 हैज बिकम 904.76. 950 has become 904.76.
So it reduced by 45.24. यही तो time value है. So value of option is intrinsic value plus time value. Now let's again say people disbelieve कि हम क्यों इस फॉर्मूला को माने. हो सकता है ये गलत हो और मार्केट बोले कि नहीं नहीं, actual value of call option is just 60 rupees. No, it's not 95.24. Why should we believe in any formula made by anybody? So market participants disregard this formula and they start dealing with each other at 60 rupees premium for this option. Now we know that this is underpriced. This is the fair value of option and this is the actual option premium. It is undervalued, sir. And if anything is undervalued, you must buy it. So I'll buy call option today at a strike price of 950 by paying a premium of 60 rupees. But sir, buying only is never an arbitrage. You buy at one place, you sell at other place, that is arbitrage. अब देखिए, आपने call option खरीदा है सर. You became call option holder. You have right to buy the share. अब option को छोड़िए. You have right to buy the share. So after 6 months, probably you will exercise this right and you will buy shares. मतलब 6 महीने बाद आप शेयर खरीदने वाले हैं. तो आज आपको शेयर बेचना चाहिए. This is not geographical arbitrage. This is time arbitrage. वहां बेचूंगा तो आज खरीद लेता हूं. Buy call means right to buy. Right to buy means you will be buying share. You will be buying share, so you need to sell it now. सब मैं सेल कैसे करूं? मेरे पास शेयर होना भी तो चाहिए. ठीक है, मान लेते हैं आपके पास शेयर नहीं है, तो आपके पास एक दोस्त होगा, है ना, जैसे अमरदीप सर के पास में परवीन सर है. आपके पास एक दोस्त होगा जिसके पास ये शेयर होंगे. उससे उधार लेके बेच दीजिए, वापस खरीद के उधारी चुका देंगे. सर मेरे पास शेयर भी नहीं है और ऐसा दोस्त भी नहीं जिसके पास शेयर हो. दोस्त मीन्स सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम है मार्केट में, वहां से आप ले सकते हैं. नहीं सर मेरे पास कुछ भी नहीं है. तो आपके पास शेयर नहीं है, बट मार्केट में किसी के पास तो होगा ना, क्योंकि ये कंपनी है तो शेयर होल्डर तो होंगे. वो बंदा इस आर्बिट्रेज को करेगा, आप मत करिए. Here you are buying call, hence indirectly you are buying share. So you should sell stock today. अब आज शेयर बेचेंगे तो you'll get 1000 rupees. That's the price. So net 940 rupees will be in your pocket. Why to keep the money idle? So you will invest this 940 rupees for 6 months. आपके पास शेयर था, 10 साल रखने का इरादा था, पर आर्बिट्रेज के लिए आज बेच दिया, कल वापस खरीद लेंगे. डोंट वरी. I'll invest this money. Why do I buy call option? Because it is undervalued. Why do I sell stock? Because somewhere I am buying, so somewhere I need to sell. Why do I invest money? Because I have got money by selling stock. Now after 6 months, अभी तो position perfect बन गई. After 6 months, the call option will expire, and we are assuming that 1000 rupees share will remain at 1000, and your strike price is 950. तो 1000 की चीज आपके पास 950 में लेने का राइट है. एक्सरसाइज करिए और 50 रुपए ले लीजिए. कैश सेटलमेंट, नॉट द डिलीवरी सेटलमेंट. Now sell stock position you created just to balance the buy call position. Now buy call position expired, so you should cut your sell stock position also. How to cut it? Earlier I sold stock, so now I'll buy stock. There is no volatility, so I'll be able to buy it at 1000. Invest money. 940 rupees I'll invest. So 940 into 1.05 I'll have to do. 940 into 1.05. That is 987. If I make a net of these three items, 987 plus 50 is 1037. Minus 1000 is this. This is 37. Now look here. The three conditions of arbitrage are fulfilled. First condition, no investment today. देखिए आज का कैश फ्लो 0 हो गया, no investment today.
सेकेंड कंडीशन, नो रिस्क। अभी कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपको ये 950 आपको देना है, ये श्योर है। रिस्क तो वैसे भी नहीं क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल ही नहीं है। एंड पॉजिटिव रिटर्न, लुक हियर, पॉजिटिव रिटर्न। पर ये रिटर्न मुझे कब मिल रहा है? आफ्टर 6 months। इफ आई कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस रिटर्न, so I should divide this 37 by 1.05. So present value of my future return is 35.24. You know why 35.24? Ideal premium, actual premium, premium undervalued by 35.24. Moral of this story: this is profit making arbitrage position, so everybody will start buying call. So there will be buying pressure on call option. So 60 will rise to say 70, 80, 90, 95. As soon as it becomes 95.24, this profit will become zero and market will be in the equilibrium position. Again, moral of the story: believe in this formula. This formula. सर ये कोई डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये एक फॉर्मूला याद करिए, आपका सारा काम हो जाएगा। पुट ऑप्शन, बट मैं केवल फॉर्मूला लिखता हूं तो आप उस पर डाउट करेंगे, तो मैंने एक बार प्रूव कर दिया। पुट ऑप्शन तो E माइनस VS होता है, तो बस वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ E माइनस VS हो जाएगा। सो स्ट्राइक प्राइस चूजन इज सपोज 1100 इन द मनी, 1000 का स्टॉक में 1100 में बेचूंगा, प्रीमियम निकालता हूं तो ये 47 आ जाता है। नाउ आफ्टर प्रूविंग ऑल दिस, देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सर ये फॉर्मूला बहुत इजी है, VS माइनस E, बस E की जगह हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ E। अब आप देखिए ये जो टेबल है ना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। relation between current market price and value means premium, ठीक है ना, वो तो हम जानते हैं, and value of call option, relationship between current market price and value of call option. Look at this formula and tell me, if VS rises, what should happen to VC? Should it rise, fall, remain constant, or will be uncertain? Perfect, sir. It will rise. So if VS rises, VC also rises, and vice versa. They move in same direction, hence the relationship is direct. Direct relation means if one goes up, other one goes up. If one comes down, other one comes down. Direct relationship. Look at E. If E rises, if E, strike price, rises, what happens to value of call option? That is called premium. VS is current market value of stock. V for value, S for stock. V for value, C for call. Exactly ना सर, अगर E बढ़ेगा तो ये माइनस होना है, तो VC तो डेफिनेटली क्या होगा, कम हो जाएगा. So that's inverse relationship ना, one rises, other one falls. Inverse relation. Logically also, अगर आप स्ट्राइक प्राइस बढ़ाएंगे तो आप बोल रहे हैं आप इन द मनी कॉल ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी कर देंगे.
इंस्टेड ऑफ 950 मैं तो 1050 में खरीदूंगा। तो आप इन द मनी को क्या कर देंगे, आउट ऑफ द मनी, तो ऑप्शन तो सस्ता होना ही है, इनवर्स रिलेशन। Okay, if R, risk-free rate of interest, rises, what happens to VC, sir? एक मिनट एक बार फिर से आंसर पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि पिछले आंसर और इस आंसर के बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा। जिन्होंने पोस्ट कर दिया वो भी वापस पोस्ट कर दें। इफ आर राइजेस, व्हाट हैपेंस टू वीसी? So Shubham ji and Amardeep sir is saying rise, Jatin sir is saying fall, Sanjay sir is saying fall. सर बस फॉर्मूला की तरफ देखना है और आंसर करना है, तो कुछ ओके। तो चलिए हम देखते हैं सर, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, बड़े डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट छोटा हो जाएगा। तो ये जो नंबर हाईलाइटेड आप देख रहे हैं ये रिड्यूस हो जाएगा। हायर रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे तो सर प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और छोटी वैल्यू जब माइनस करेंगे तो वीसी अपने आप बड़ा आएगा। If R rises, present value of E reduces. So you will be deducting a smaller number. So result will be comparatively higher. So if risk-free rate of return rises, VC also rises. Direct relation. Okay. सर हेलो। Yes sir. सर एक छोटा क्वेश्चन है, अगर सर कॉल का प्रीमियम ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा आ रहा है कॉल का एज कंपेयर टू पुट, तो ये नहीं लगता सर मार्केट में बुलिश मोड में है, मतलब आगे कुछ तेजी आने वाली है मार्केट में? नहीं सर, कॉल और पुट को आपस में कंपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर हम करते हैं इसके लिए सर, तेजी को देखने के लिए ना एक टूल यूज होता है, उसको बोलते हैं, जैसे फ्यूचर मार्केट की मैं पहले बात करूं रादर देन ऑप्शन, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। यानी लोगों ने सौदे कर लिए और अभी तक वो सौदे काटे नहीं। लोग सौदे करते हैं 3 महीने बाद की एक्सपायरी के, बट दे डोंट कैरी इट फॉर 3 मंथ्स। वो तो अगले दिन अगले हफ्ते उसको रिवर्स कर दे, काट लेते हैं सौदा। तो जो लोगों ने सौदा कर लिया और अभी तक सौदा काटा नहीं है वो कहलाता है ओपन इंटरेस्ट। अगर ओपन इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग सौदे को कैरी कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, और साथ में प्राइस भी बढ़ रही है, तो इसको बुलिश देखा जाता है इस सिचुएशन को। ओपन इंटरेस्ट राइजिंग, प्राइस राइजिंग, सो इट इज बुलिश। अब ये स्नोबॉल इफेक्ट होगा, ये और बड़ा होता चला जाएगा। उसने पता कैसे लगता सौदे नहीं कटे हैं? ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्क्लोज होता है सर। ओपन इंटरेस्ट ये यहीं पे अगर अपन देखें तो इसमें भी होगा शायद। ये देखिए OI लिखा हुआ है ना यहाँ, OI। जी जी जी, दिस इज ओपन इंटरेस्ट। अब ये इतनी ये वाली स्ट्राइक प्राइस में तो ओपन इंटरेस्ट दिखेगा नहीं। आप यहाँ देखिए, ये 11,100 में ओपन इंटरेस्ट जो है 16,07,475 निफ्टीज का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ 6,39,150 का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता चला जा रहा है डे बाय डे और प्राइस भी बढ़ रही है तो ये बुलिश है, और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और प्राइस कम होती जा रही है, तो दिस इज बेयरिश सिग्नल सर। कॉल और पुट को हम आपस में नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही अलग अलग है। उसके कंपैरिजन होते हैं बट वो थोड़ा अलग तरह से। अब सर टी अगर हम यहां देखें, इफ टी राइजेस, तो हम ज्यादा दिमाग ना लगाएं, तो जैसा आर का हुआ था वैसे ही टी का होना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ साथ खड़े हैं। If T rises, then present value reduces. If present value reduces, then VC increases. तो बताइए सर, रिलेशन कैसा हुआ? T के बढ़ने पर VC का क्या होगा? आप तो सिर्फ ही बताइए, if T rises, what happens to VC?
Perfect. If T rises, direct risk-free rate of interest also, then VC also rises. चलिए सर, वॉलेटिलिटी की तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यही चीज पुट ऑप्शन को लेकर के देखते हैं। पुट ऑप्शन में फॉर्मूला फ्लिप हो गया है, ऐसा होने की जगह ऐसे हो गया है। ये कॉल है तो ये पुट है। ये रहा पुट का फॉर्मूला सर। अब इसमें आप देखिए, अगर VS बढ़ा तो व्हाट विल हैपन टू VP? एक मिनट, मुझे अब इसके बाद आंसर पोस्ट करिए। इफ VS rises, what will happen to VP? एग्जैक्टली तो एक बढ़ने पे दूसरे का कम होना is inverse relation sir. If current market price and value of put option are inversely related. Okay, if E rises, strike price बढ़ा दिया आपने, पहले बोल रहे थे मैं 1000 में सेल करूंगा, अब आप बोलते नहीं मैं 1100 में सेल करूंगा। If E rises, wait a minute, मुझे एक, हाँ अब आप आंसर पोस्ट करिए सर। अगर E बढ़ गया तो VP का क्या होगा सर? Exactly. Direct relation. Logically, that's also true. कि E बढ़ना मतलब आप in the money होते जा रहे हैं और महंगा बेचूंगा मैं। अब देख के सर, संभल के सर जवाब देना। If risk-free rate or time rises, what happens to VP? Exactly. The relation is actually inverse. तो सब मिला के सर अगर आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, VC is equal to VS minus E upon 1 plus RT, तो उससे आपका एक कॉल ऑप्शन फिलअप हो जाएगा। एंड नोटिस पुट ऑप्शन इसका अपोजिट है, डायरेक्ट इनवर्स, इनवर्स डायरेक्ट, डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट इनवर्स। तो अगर एक याद हो जाता है दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। VS is value of stock, current market price sir. VS is current market price, आज का भाव शेयर का। VS is value of stock, V for value, S for stock, राइट सर। अब वॉलेटिलिटी को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी एक्चुअली रिस्क को इंडिकेट करती है, तो इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं। वॉलेटिलिटी पढ़ेंगे पर उसके पहले समझ दें। सपोज आप एक इंश्योरेंस कंपनी है और मैं आपके पास लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए आता हूं। एक आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है तरुण, दूसरा एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है महेश। आपने पूछा तरुण क्या करते हैं तुम, क्या करते हो तुम? मैंने बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूं, ठीक है, मैं वैल्यूएशन प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है, और मैं एकेडमिक सेशंस लेता हूं, फैंटास्टिक। महेश से पूछा महेश आप क्या करते हैं? महेश बोलता है मैं बाइक राइडर हूं, डेथ वेल में, मेले में, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता हूं मैं बिना हेलमेट पहने।
अब आप इंश्योरेंस कंपनी है, दो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, तरुण और महेश, किससे ज्यादा प्रीमियम मांगेंगे सर? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाइक राइडर से ही मांगेंगे। राइट, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना, तो आप प्रीमियम भी ज्यादा मांगेंगे। दिस इज फॉर श्योर, हायर द रिस्क। मतलब ये तो हर बार होता है ना, जब 9/11 के टाइम से देखता आ रहा हूं मैं, 9/11 के बाद हिंदुस्तान में अमेरिका पे जब अटैक करा था ओसामा बिन लादेन ने, पॉपुलरली नोन एज 9/11, 9/11 के बाद में इंडिया में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए थे, क्योंकि इंडिया की इंश्योरेंस कंपनियां अपने री इंश्योरेंस यूएस कंपनियों से करवाती है, वो यहां से लेके वहां उतार देते हैं आगे, और यूएस इंश्योरेंस कंपनियों को लगने लगा कि वर्ल्ड इज अ रिस्कियर प्लेस टू लिव नाउ, उन्होंने अपना री इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ दिया, तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया। चेन्नई में फ्लड आया कुछ साल पहले, 6-7-8 साल हो गए होंगे, तो कई कारें डूब गई, और वो फ्लड उसमें कवर था, तो वो कारें डूबने से इंजन जाम हो गए, तो काफी क्लेम देना पड़ा। तो मेट्रो सिटीज में जहां फ्लड के चांस है, सब जगह उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया। अभी कोविड-19 के बाद भी देखिएगा आप, अभी तो ठीक है, कुछ पॉलिसीज कवर करती है इसको, कुछ लोग फोर्स मैज्योरे क्लास भी लगा देते हैं, बट एनीवेज ज्यादा रिस्क होगी तो आप ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे, दिस इज फॉर श्योर, ये बात तो एकदम पक्की है। 100% परफेक्ट है ये। चलिए, अभी इस वॉलेटिलिटी को कंसिडर कैसे किया जाए सर? अब जो है एक बड़ा डेंजरस जोन अब चालू होता है कि इस वॉलेटिलिटी को कंसिडर कैसे किया जाए। तो अब हम जा रहे हैं लर्निंग स्टेप नंबर 3 पर, विच इज नेम्ड एज बायनोमियल प्राइसिंग मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पे आजकल। प्री लॉकडाउन सिचुएशन में बायनोमियल कभी पूछा ही नहीं जाता था, तो मैंने पढ़ाना भी बंद कर दिया था, इस पे क्यों टाइम वेस्ट करें। सर आप लोग तो सब प्रोफेशनल्स हैं, बट स्टूडेंट्स की क्लास लो तो एक नई प्रॉब्लम आती है, अगर आप सब कुछ पढ़ा दो तो स्टूडेंट्स आर अनहैप्पी। सर आप क्या क्या पढ़ा देते हो, इसमें से कुछ भी तो आता नहीं है, क्यों पढ़ाते हो फालतू चीजें? बायनोमियल प्राइसिंग मॉडल आता ही नहीं था, कभी नहीं आया, बट पोस्ट लॉकडाउन के बाद तो उनके सब पेपर ही बदल गए। नाउ दे आर आस्किंग दिस आल्सो। बट वैसे भी सर हमको पढ़ना सभी चाहिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल एंड वी शुड नो एवरीथिंग। So we are making valuation of option before expiry, considering partial volatility. और रियल लाइफ असाइनमेंट में भी ये काम में आता है। आई डोंट डू रेगुलर प्रैक्टिस, बट फॉर लास्ट 1.5 years, like from January, February 2019, I'm doing valuation practice, तो ये काम में आता है सर। Valuation of option before expiry, here it is saying considering partial volatility, मतलब आपने क्या माना है कि there are only 2 possible prices. So share is worth ₹1,000 today, so it will be either 1100 or 900. It will be either 1200 or 800. There are only 2 probable prices. In real life में तो there are n probable prices. Real life में ऐसा नहीं कि 2 ही भाव होंगे, 2 में से एक ही होगा, 4 में से एक भी हो सकता है, 40 में से एक भी हो सकता है। There are n possible outcomes, but here we are considering that there are only 2 possible outcomes. अच्छा सर एक मिनट, इसमें मैंने बोल दिया था ना कि यहाँ देखिए बाकी सब जगह ये कॉल और पुट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों साथ हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ने पर चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों का प्रीमियम बढ़ता है। हम कंसिडर कर रहे हैं बायनोमियल में कि बस 2 ही भाव पॉसिबल है, ये असम्पशन है। लाइफ में तो 2 नहीं, हजारों भाव पॉसिबल है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, VS, दिस इज करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, ₹1000। एट द एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन, मान लो 6 months ऑप्शन है,
So after 6 months, stock price will become 1100 or it will become 900. Upside value of stock. Upside value of stock and downside value of stock. ऐसे में कोई मुझे बोले U यानी कि upside factor कितना है, तो I will say this U upside UVS है ना, so this U is actually 1.10 ना, VS into U is UVS 1100, and if somebody asks me what is D, DVS में D कितना है, तो I'll say 0.90. 1000 into 0.90 is 900. ऐसा जरूरी नहीं है एक जैसा ही प्लस माइनस हो, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, प्लस ज्यादा माइनस कम ये भी पॉसिबल है. Now E is the strike price, so you are taking in the money option 950 rupees. And two more information we need. So R is risk-free rate of interest, which is 10% per annum, and T is time to expiry, which is 0.5 years. This is the whole question. तो अभी इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि we have considered volatility, and now we have to make valuation of this option. सर अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो एक 3 स्टेप बाइनोमियल कैलकुलेशन होता है या फिर एक बाइनोमियल ट्री होता है. तो हम दो में से कोई एक देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट विल कंज्यूम अ होल लॉट ऑफ टाइम. सो जो भी हम देखें, लेकिन आंसर जो है वो यहां से स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का. फर्स्ट आई विल कैलकुलेट अपसाइड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. अपसाइड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट एक्सपायरी. तो हम जानते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट एक्सपायरी इज VS माइनस E. तो अगर एक्सपायरी पे शेयर 1100 का हो गया और मेरी स्ट्राइक प्राइस 950 ही है, definitely I'll exercise call option. Recall that call option is exercised only when the price rises up above the strike price. So this is 150 rupees. Option exercise करके 150 मिलेगा. This is upside value of call UVC. Downside value of call option. It is downside value of stock minus E. But after 6 months, the price is not 1100. After 6 months, if the price is say 900 rupees, so it will be negative. So we'll consider it to be 0. अब देखिए इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं. तो इसमें से जो एक तरीका है वो तो कुछ इस तरह से कि मैं एक बाइनोमियल ट्री बना दूं, जहां मैं बोलता हूं कि जस्ट अ मिनट, मुझे एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करके वहां से कुछ कॉपी करके लाना पड़ेगा. राइट सर. तो अभी मैं आपको ट्री मेथड बता रहा हूं, स्टेप मेथड नहीं बता रहा. 1000 rupees share, it will go up to 1100 or come down to 900 in 6 months time. If it goes up to 1100 na,
then the value of call option will become 150 rupees क्योंकि 950 की strike price है. If it comes down to 900 rupees तो negative तो होता नहीं है. So here the value of call option is 0 rupees. सर देखिए अब कितना आसान है. अब आपको ये मालूम है कि 6 महीने बाद कॉल की वैल्यू या तो 150 होगी या 0 होगी. तो आज कॉल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बहुत आसान है ना. 6 महीने बाद के लिए आपके पास दो वैल्यूज है, तो पहले तो उसका एवरेज निकाल लीजिए. 150 और 0 का एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए और उस एवरेज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए. कैलकुलेट एवरेज ऑफ 150 एंड 0, तो 6 महीने बाद की एवरेज प्राइस आ जाएगी. पर आपको आज की प्राइस चाहिए तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. दैट्स इट, दैट इज वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. बट एवरेज जो है ना, सिंपल एवरेज नहीं होगा, वो वेटेड एवरेज होगा. 150 और 0 का एवरेज वेटेड एवरेज होगा. और जो हम इनको वेट असाइन करेंगे वो होंगे P और 1 माइनस P. जो 1100 की प्राइस है इसको हम वेट असाइन करेंगे P, और जो डाउनसाइड प्राइस है उसको हम वेट असाइन करेंगे 1 माइनस P. बट हाउ टू कैलकुलेट P इन 1 माइनस P? आप उसको प्रोबेबिलिटी नाम दे सकते हैं, बट टेक्निकली प्रोबेबिलिटी बोलना सही नहीं होता. P कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है सर. मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, अदरवाइज look here sir. So this is 1.05, 1 plus RT. Downside factor is 90%. Upside factor is 1.10. Again, downside factor is 90. So it's 0.15 upon 0.20. So P is 0.75. If P is 0.75, 1 minus P is obvious, no? 1 minus P will be 1 minus 0.75. That is 0.25. तो हमको 150 और 0 जो कि ऑप्शन की वैल्यू एट एक्सपायरी, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा बाय गिविंग ए वेट ऑफ 0.75 एंड 0.25, और उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो करंट फेयर वैल्यू आएगी सर. फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस. You take upside value of call option, give it a weight of P. You take downside value of call option, give it a weight of 1 minus P, and then divide it by e to the power RT. E to the power RT means 1 plus RT. So if I try to do that, ना, देखिए एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, then I'll explain it. सर अभी इसमें कैसा होने वाला है, 150 इंटू 0.75 प्लस 0 इंटू 0.25. ये तो वेटेड एवरेज हो गया कॉल ऑप्शन की वैल्यू का. और फिर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करूंगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 1.05. सो दैट इज 112.5 अपॉन 1.05. देखिए एट एक्सपायरी वैल्यूएशन वाज 50 रुपीस. बिफोर एक्सपायरी वैल्यूएशन इग्नोरिंग वॉलेटिलिटी वाज 95.24. Now before expiry valuation using volatility is even higher, 107.14. ये बाइनोमियल ट्री वैल्यूएशन प्रोसेस है सर. अभी क्या है कि आपने यहां दो पॉसिबल प्राइसेस ली है, लेकिन और आपने ये एक ही ब्रांच बनाई है जो कि 6 महीने की है. दिस इज ओवर.
लेकिन अगर आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, कि 6 मंथ्स का एक प्राइस स्टेप बनाने की जगह 3-3 महीने के 2 प्राइस स्टेप बनाइए, तो 2 पॉसिबल प्राइस की जगह आपके पास में 4 पॉसिबल प्राइस हो। रादर देन आप 2-2 महीने के 3 स्टेप बना दीजिए, 2 महीने 2 महीने 2 महीने के 3 स्टेप, तो 2 4 6 8 2 to the power 3 8 पॉसिबल प्राइसेस हो जाएगी। ऐसे अगर आप 6 महीने में 180 स्टेप्स बना देंगे टाइम के, एक एक दिन के, तो 2 to the power 180 ब्रांचेस निकल आएंगी यहां से, और 2 प्रोबेबल प्राइसेस कवर होने की जगह इनफिनिट पॉसिबल प्राइसेस या n प्रोबेबल प्राइसेस कवर हो जाएगी। So that will be 3 step, 4 step, n step binomial tree. Yes, but to begin with, we can make valuation. How to remember formula? Sir, अभी आपको एक ही फॉर्मूला जो है वो रटना पड़ेगा, वो है P। तो देखिए उसको याद रखने का तरीका ये है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि u माइनस डी अपॉन u माइनस डी, और जो u है उसको आपने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस आर टी से, तो 1 प्लस आर टी माइनस डी अपॉन यू माइनस डी, ये एक फॉर्मूला याद करना है। तो 1 माइनस पी तो बहुत सिंपल है। अच्छा ये भी सिंपल है क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज तो निकाल रहे हैं, 2 प्रोबेबल प्राइस है, उसको पी और 1 माइनस पी का वेट असाइन करके वेटेड एवरेज निकाल लिया और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 प्लस आर टी से आप डिवाइड करते ही हैं। दिस इज द वे टू मेमोराइज इट सर। Okay, Shailendra sir is asking what is the main object of this exercise? Would you request to give background on this? सर मान लीजिए कि आपका क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको बोलता है कि हम ओसीडी इशू कर रहे हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, कि इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करे और चाहे तो उसको डिवेंचर के फॉर्म में रिडम्पशन ले ले। तो अब जब आपको ओसीडी नाम की सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करना है, करना ही पड़ेगा सर। तो 2 वैल्यूएशन होते हैं उसमें, एक प्लेन डिवेंचर का वैल्यूएशन होता है। अच्छा इन्वेस्टर के पास चॉइस है कि वो शेयर ले सकता है कंपनी का, तो इन्वेस्टर के पास शेयर खरीदने का कॉल ऑप्शन हो गया, तो आपको एक डिवेंचर का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और एक कॉल ऑप्शन का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब इसमें बड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि यहां अब इन लर्निंग स्टेप्स, इसलिए हमको ऑप्शन वैल्यूएशन सीखना जरूरी है। बट हम ये सब क्यों सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेप 1, लर्निंग स्टेप 2, लर्निंग स्टेप 3, ताकि सर पूरा बैकग्राउंड हो आपके पास में कि ये सब है क्या। अभी मैं अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा उसको देख के तो आप बोलेंगे कि, फिर आप एक सवाल पूछेंगे कुछ लोग कि ये कितने मार्क्स का आता है, आई विल से 5-6 नंबर का। आप बोलेंगे ठीक है उतना तो छोड़ सकते हैं। तो सर अभी हम ये जो पढ़ा ना बायनॉमियल प्राइसिंग मॉडल, ये रियल लाइफ में भी काम में आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो अगला मॉडल हम पढ़ने वाले, जो मोस्ट डिफिकल्ट मॉडल है, वो सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन का ही वैल्यूएशन करता है। तो यूरोपियन ऑप्शन का वैल्यूएशन करने के लिए ब्लैक एंड शूल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूज होता है, और अमेरिकन ऑप्शन का वैल्यूएशन करने के लिए बायनॉमियल प्राइसिंग मॉडल ही यूज किया जाता है सर। हाँ सर जतिन जी, डेफिनेटली मैं ये वर्ड फाइल शेयर करूंगा सेम जी ड्राइव लिंक पर। तो बायनॉमियल प्राइसिंग मॉडल तो अमेरिकन ऑप्शन के वैल्यूएशन में रियल लाइफ में यूज होते हैं सर। वहां ये 2-3 स्टेप के नहीं 180 स्टेप्स के बनते हैं, फिर वो एक्सेल में ही बनाने पड़ते हैं। बट यहां पे हम दो प्रोबेबल प्राइस या फिर 2 की ब्रांचेस बना रहे हैं। अगर मैं ऑल इनफिनिट प्रोबेबल प्राइसेस को कंसिडर करना चाहूं, लर्निंग स्टेप नंबर 4, अभी हमने पार्शियल वॉलेटिलिटी को कंसिडर करा है, तो in that case you know what will happen, then I'll be using Black and Scholes option pricing model.
So now I'm considering all 5 factors: current value of stock, strike price, risk-free rate of interest, time to expiry, volatility or full volatility. If I want to make valuation using that, there are 5 steps for calculation. And these are the 5 steps, sir. Calculate D1, calculate D2, calculate ND1, calculate ND2, and finally calculate the value of call or put option. अब सर ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि अभी तक की हर लर्निंग स्टेप के पीछे मैंने आपको एक लॉजिक दिया कि ऐसा क्यों होता है. बायनोमियल का भी देखा जा सकता है, बट इसका लॉजिक हम नहीं देख सकते क्योंकि ये इंटीग्रल कैलकुलस के डीप फॉर्मूला से डिराइव्ड है. तो इसका लॉजिक इज बियॉन्ड स्कोप. वो तो 15 घंटे 10 घंटे की स्पेशल क्लास लगा दें सिर्फ इस फॉर्मूला के डेरिवेशन पे, तब जाके होगा. So step 1 is calculate D1. D1 is natural logarithm of VS upon E. VS is value of stock, E is strike price, plus R plus half of sigma square into T upon sigma under root T. R is risk-free rate of interest, T is number of years to expiry. एक ही एक्स्ट्रा चीज इसमें आई है, वो है सिग्मा. सिग्मा है वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक, 30%, 40%, 10%. जब D1 कैलकुलेट हो जाए इस खतरनाक फॉर्मूला से, तो D2 इस दूसरे खतरनाक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए. When you are done with D1 and D2, then calculate ND1. Now, for ND1, you need to refer standard normal probability distribution table, Z table, the bell-shaped curve. अगर आपको कुछ याद आए तो इस तरह की एक कंसेप्ट होती है. अगर कुछ याद पड़े आपको कि मुझे ये Z0 है, मुझे Z1 की वैल्यू देखनी है, तो मुझे ये एरिया का मेजरमेंट चाहिए, या फिर मुझे ये पूरा क्यूमुलेटिव एरिया का मेजरमेंट चाहिए. तो अगर D है, से दिस इज D1, D1 इज इक्वल टू 1, तो ND1 जो होगा वो इस एरिया का मेजरमेंट होगा. उसकी टेबल्स आती है, रेडीमेड टेबल्स. सो टेबल में देख के हम D1 को बना देंगे ND1 और D2 को बना देंगे ND2. और सर उसके बाद आएगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन. अब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो एक बड़ी खुशी की बात ये होगी कि अपना बेसिक फॉर्मूला अभी भी जिंदा है. VC इज इक्वल टू VS माइनस E. सबसे पहला फॉर्मूला याद करिए, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी. वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी, VS माइनस E. इट इज स्टिल अलाइव सर. फिर हमने बोला था कि E मत लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ E ले लीजिए. तो देखिए वो भी आ गया यहाँ. तो जो लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था VS माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ E, देखिए हाईलाइटेड एरियाज को, इट इज हियर. 2 एक्स्ट्रा चीजें आ गई है. VC में मल्टीप्लाई, VS में मल्टीप्लाई हो गया ND1 और E में मल्टीप्लाई हो गया ND2. अदरवाइज बाकी फॉर्मूला पुराने वाले जैसा ही है. ND1 को ऑप्शन डेल्टा या हेज रेशो कहा जाता है. सर क्या हमको ऐसा कभी कैलकुलेट भी करना पड़ेगा लाइफ में? तो वो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है सर, इस सब को करने की जरूरत ही नहीं है. आप एक वेबसाइट पे जाइए जिसका नाम है option-price.com. चैट बॉक्स में लिंक है ना, उसको क्लिक कर दीजिए. ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट. तो
ऐसे किसी रेडी कैलकुलेटर पे जाइए, अंडरलाइंग प्राइस कितनी है 1000 रुपीज, एक्सरसाइज प्राइस 950, सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, डेज अंटिल एक्सपायरेशन 180 डेज, 182 डेज, क्योंकि हमने 181 कर लेते हैं, क्योंकि हमने 6 मंथ्स की एक्सपायरी लेनी है, इंटरेस्ट रेट हमने ली थी 10% पर एनम, डिविडेंड यील्ड ऑन द स्टॉक 0, डिविडेंड को हम नहीं ले रहे, वॉलेटिलिटी हम कुछ भी मान लेते हैं 30% पर एनम. So current stock is currently trading at 1000 rupees. I have chosen in the money price for call option at 950. Option will expire after 6 months. Risk free rate is 10%. Dividend I am ignoring. Volatility is 30% per annum. Say for example, calculate. I click calculate. ये देखिए सर, अभी जो आंसर 107 आ रहा था ना बायनोमियल में, वो ब्लैक एंड शूल्स में कितना आ रहा है 136 एंड साउंड्स लॉजिकल आल्सो. अब याद करिए, सबसे पहला आंसर आया था 1000 माइनस 950 50, दूसरा आंसर आया था 95 रुपीज क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू को कंसीडर करा था, तीसरा आंसर आया 107 क्योंकि उसमें दो वॉलेटाइल, दो प्रोबेबल प्राइस कंसीडर की थी. अब यहाँ सारी प्रोबेबल प्राइस कंसीडर कर लिए तो ना ये 50 है, ना 95.24 है, ना 107 है, दिस इज 136.987. न D1 कैलकुलेट करना है, ना D2, ना IND1 ना IND2, ना VC का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली यू हैव द आंसर. आप अपनी खुद की एक्सेल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी यही सब कैलकुलेट हो जाता है. वॉलेटिलिटी मींस फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग. तो हमने क्या करा कि मान लो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी निकाली, तो पिछले 6 महीने में जो भी शेयर का प्राइस हुआ था उसको एक के नीचे एक लिख दिया, 1000, 950, 980, 970, 960, 1010, एक के नीचे एक लिख दिया, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगा लिया. प्राइस की जगह हम रिटर्न की वॉलेटिलिटी निकालते हैं तो वो और बेटर हो जाता है, बट ठीक है, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर लेना है. एक के नीचे एक 6 महीने की प्राइसेस लिख दी और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाया, वॉलेटिलिटी आ जाती है. फ्लक्चुएशन इन प्राइस 30% पर एनम. ये है सर ब्लैक एंड शूज का सोल्यूशन. मैन्युअली करने जाएंगे तो लेंदी होगा, किया जा सकता है. अब आप तो एक चीज नोट करिए कि कॉल की प्राइस आ रही है 136 और इसी सिचुएशन में पुट की प्राइस है 41. ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ऐसा क्यों है. Why call option is expensive and put option is cheaper. हेलो. यस सर. सर ये स्ट्राइक प्राइस 950 है ना? 950 बिल्कुल सही. हाँ, तो फिर सर 950 पे बैठे हैं आज और हम 1000 का देख रहे हैं कॉल. राइट. कॉल का स्ट्राइक प्राइस 950 पे नहीं सर, सही नहीं लग रहा. कॉल का प्राइस तो नहीं आपकी डायरेक्शन तो सही है सर. 950 पे तो 1000 का नहीं होना चाहिए सही रेट. 950 तो 75 76 के आसपास होना चाहिए. अगर स्ट्राइक प्राइस 950 है और अगर कॉल का हम कॉल ले रहे हैं 1000 की, स्ट्राइक प्राइस 950 है और शेयर मार्केट में 1000 पर बिकता है. हाँ, और आपने चूज किया है कि आप 6 मंथ्स के बाद में 950 में लेना चाहते हैं. तो ठीक है सर, फिर 950 पे ले रहे हैं तो 50 रुपीज तो वैसे ही हमारा रेट कम है ना. अगर हम 86 रुपीज इसमें प्रीमियम हो गया. 950 में
सारा जवाब एक ही शब्द में मिलेगा, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। तो ये तो इन द मनी है सर, ये आई थिंक। ठीक है, कॉल ऑप्शन इन द मनी है कि पुट ऑप्शन इन द मनी है सर? ये कॉल ऑप्शन इन द मनी हुआ ना, ठीक बात है। कॉल ऑप्शन इन द मनी हुआ, पुट ऑप्शन तो नहीं, आउट ऑफ मनी है, कॉल ऑप्शन इन द मनी हुआ ना, क्योंकि रिस्की है, मतलब हायर प्रीमियम मिलेगा इसमें, हायर प्रीमियम में आएगा ये। करेक्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये कॉल ऑप्शन है तो ये इन द मनी है। यस यस। क्योंकि 1000 की चीज आप बोल रहे हैं कि मैं तो 950 में लूंगा, तो वो इन द मनी हो गया। 50 रुपए से इन द मनी हो गया वो। यस यस, 50 रुपीज। लेकिन पुट ऑप्शन में यही 50 रुपए से आउट ऑफ द मनी हो गया, बिकॉज प्रीमियम कम हो, 1000 यू वांट टू सेल इट फॉर 950 ओनली। तो पुट ऑप्शन में यही क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। तो जहां कॉल ऑप्शन 50 रुपए से इन द मनी है, वहीं पुट ऑप्शन 50 रुपए से आउट ऑफ द मनी। तो देखा जाए तो दोनों में एक तरह से 100 रुपए का डिफरेंस हो गया, एक 50 रुपए इन द मनी, एक 50 रुपए आउट ऑफ द मनी। और इसीलिए टेंटेटिवली प्रीमियम में भी 100 रुपए का डिफरेंस है, एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन सर नॉर्मल मार्केट में इतना फर्क होता नहीं है सर। अगर 950 का साइज मैं आपको दिखा, मार्केट में इतना होता नहीं है, मार्केट में ये मेरे हिसाब से 38 86 87 हमने 6 महीने का ऑप्शन लिया है ना। हाँ, ऑप्शन ज्यादा लिया है। हाँ, आप इसको अगर मंथली देखें तो 86 ऑप्शन 87 होना चाहिए, 86 87 मैक्सिमम। और 7 दिन का ऑप्शन करेंगे तो 53 आ गया ना, ये देखिए ना, 53 रुपीज आ गया हुआ। अगर इसको 1 मंथ का करेंगे तो आई थिंक 86 87 का देखना सर, 1 मंथ करना ही। हाँ हाँ, वो तो सर वो तो डेज पे तो डिपेंड करना ही है ना। 69, हाँ तो 86 भी ज्यादा होगा, ये होना चाहिए। 6 मंथ की वजह से आया है। राइट। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि कॉल ओवर वैल्यूड है और पुट अंडर वैल्यूड है, ये दोनों की फेयर प्राइस ही है। हाँ, इसको अगर आप 1000 रुपीज कर देंगे तो दोनों की प्रीमियम काफी नजदीक आ जाएगी, क्योंकि इन दैट केस बोथ ऑफ देम विल बी एट द मनी। तो फिर प्रीमियम, अच्छा रेट भी 10% नहीं होता, रेट को हम 6% या 5, शॉर्ट टर्म का है तो 5% भी ले सकते हैं। फिर वॉलिटिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए, अगर एट द मनी कॉल और पुट है तो दोनों की प्रीमियम लगभग क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस बचता ही नहीं। राइट सर? सर ऐसी सिचुएशन है अगर माइंड में, तो अगर हम इसमें पैसा नहीं कमाना है, पैसा बनाना है, तो सर एक इसका 1000 का F&O परचेज करें और 950 नहीं सर, ये अगर प्राइस चल रही है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम सॉरी, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर कॉल ऑप्शन आपको 32 में मिल रहा हो, या कॉल ऑप्शन 40 का चल रहा हो, या पुट ऑप्शन ऊपर नीचे हो, देन ओनली फिर एक पुट कॉल पैरिटी थ्योरी होती है। उससे 4 चीजों में आप एक साथ पोजीशन लेते हैं कि आपने लॉन्ग कॉल किया और साथ में शॉर्ट पुट कर दिया और साथ में स्टॉक सेल कर दिया और साथ में इन्वेस्ट मनी करा। 4 पोजीशन एक साथ लेते हैं तो जाके वो पुट कॉल पैरिटी की आर्बिट्रेज बनती है, तब पैसा कमा सकते हैं। वो भी तब जब रियल लाइफ का प्रीमियम इससे कंसिडरेबली कम या ज्यादा हो। थोड़ा कम ज्यादा होने में तो उतना तो आप ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन चार्जेस में ही पिट जाएंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और उन सब में ही पिट जाएंगे, थोड़ा कम ज्यादा होने तो कंसिडरेबली। जैसे सर ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, हमने लिया 1000 का शेयर का प्राइस चल रहा है, हमें है कि 1100 हो सकता है, वी आर बुलिश 1100, और डाउन में 900 जा सकता है। अगर इसमें एक हेजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं कि मैं इसको 1000 का F&O परचेज किया और 1100 का मैंने कॉल सेल किया, मतलब कॉल मैंने राइट किया, और 900 रुपीज का पुट परचेज किया मैंने। आपने कॉल राइटर बने और 1100 का होल्डर बन गए और साथ में F&O खरीदा और साथ में मनी बोरो, ठीक है मनी बोरो नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो फ्यूचर ले लिया है, मनी नहीं बोरो कर रहे हम। पुट कॉल पैरिटी ही है ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसको पुट कॉल पैरिटी कहते हैं। पुट कॉल पैरिटी तभी काम करती है जब डिसइक्विलिब्रियम हो सर, मतलब ये वो ऐसा हो, मतलब वोलेटिलिटी है तभी हो पाएगा। अगर सेम रेट पे बंद होता है एक्सपायरी पे, फिर तो लॉस हो जाएगा।
हाँ, अगर नहीं वॉलेटिलिटी भी नहीं, मान लीजिए ये प्रीमियम जो आइडियली हमने यहाँ निकाला 36 आया, अब हम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे गए तो वहां ये 40 रुपीज मिला, ओके, बस तो फिर अब हम कॉल राइटर बन के पैसा कमा पाएंगे, फिर बिल्कुल कमाया जा जैसे हम ये सिचुएशन, हमने सिचुएशन लिया ना सर, 1000 का चल रहा है शेयर का रेट चल रहा है, हम बुलिश देख रहे हैं इसको 1100 और बीरिश देख रहे हैं 900, लेकिन मेरे को हेजिंग करनी है, पैसा कमाना है, तब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 1000 पे एक बस एफएनडो लिया। नहीं सर, वो क्या है आप जो बोल रहे हैं ना, उसको करने के लिए हमको एक बहुत लंबी सारी एक चीज खोलनी पड़ेगी। सब कर सकते हैं सर, लेकिन पहले डिसइक्विलिब्रियम होना चाहिए। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है ना, तो ले दे कि हिसाब किताब सब बराबर हो जाएगा। सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी पॉसिबल होती है आर्बिट्रेज करने की। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये होती है कि कॉल ऑप्शन को आप लॉन्ग कर लें, पुट ऑप्शन को आप शॉर्ट कर दें, स्टॉक को आप सेल कर दें और मनी को इन्वेस्ट कर दें। ये एक स्ट्रेटेजी। और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि आप कॉल को शॉर्ट। मनी इन्वेस्ट क्या है? मनी इन्वेस्ट का नहीं समझ में आया सर, व्हाट इज मनी? ये आपने क्या है, इसको आप एफ&ओ में ले गए, मैं इसको कैश मार्केट में ले जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो ये आप स्टॉक बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे। शॉर्ट, लॉन्ग और सेल स्टॉक की जगह मैंने बोल दिया बाय स्टॉक, और मनी मैंने कर लिया यहाँ पे बोरो। तो सर अगर क्या हो गया है कि मान लीजिए जैसे अब ये यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो है 36 और 32, तो कॉल 36 है और पुट 32 है। अब ये टेंटेटिव ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट लेने की जगह, और जो स्टॉक है वो 1000 है, और जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 1000 है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ली है 5%, और टाइम टू एक्सपायरी जो लिया है वो 30 डेज लिया है। अब ये तो हो गया पूरा आइडियल सेटअप। दिस इज होल आइडियल सेटअप। लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसा हो जाए कि बाकी सब चीजें तो सेट है जैसी है, पर ये कॉल जो है ये चल रहा है 45 रुपीज पर, यहां आ गया डिसइक्विलिब्रियम। जब तक ये डिसइक्विलिब्रियम नहीं आता है किसी भी एक आइटम में, तब तक कोई आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे कुछ भी मिलने जाने वाला है नहीं। अब जैसे ही मैंने देखा कि कॉल ऑप्शन ओवर वैल्यूड है, इसलिए मुझे कॉल ऑप्शन क्या कर देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, यानी कि शॉर्ट कर देना चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरे पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं, इसमें कॉल शॉर्ट होता है स्ट्रेटेजी नंबर 2 में। तो इसलिए अब मुझे स्ट्रेटेजी नंबर 2 अगर मैं बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे, अगर मान लीजिए ब्रोकरेज 0 ही लग गई, जो कि है नहीं, 9 रुपए का प्रॉफिट होगा माइनस जो भी ब्रोकरेज और चार्जेस है, मान लो 2 रुपए चार्जेस लग गए, तो 9 - 2 7 रुपए का मुझे फिर नेट प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये सब एक्सरसाइज सिर्फ तभी नहीं सर, 7 रुपए कॉल में हमें प्रॉफिट नहीं आएगा, कॉल में तो हम शॉर्ट कर रहे हैं, लॉस आएगा हमारे को। सर स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं। पूरी स्ट्रेटेजी में जहां आपको कॉल बेच के 36 रुपीज मिलने चाहिए थे, वहां कॉल बेच के आपको 45 मिल रहे हैं, तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा सर। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर आप कहेंगे तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है सर, वो हमारा टाइम खा जाएगी। आप कहेंगे तो फिर किसी और दिन हम ऑनलाइन आके मैं दिखा दूंगा आपको वो। सर इस स्ट्रेटजी में अगर हम कॉल बेच रहे हैं तो साथ में एफ&ओ भी तो परचेज कर रहे हैं ना सर। अगर मेरा कॉल मेरा 9 रुपए बढ़ा तो एफ&ओ 50 रुपए बढ़ जाएगा, वहां से 50 रुपए आ गए मेरे पास। आप स्क्रीन पे देखिए ना, मैं देख रहा हूँ सर। ये जो आप एफ&ओ के थ्रू बोल रहे हैं, उसको मैंने कैश मार्केट के थ्रू बता दिया है। वो भी बात है, कैश मार्केट से भी बात तो लेने की एक ही पड़ेगी, क्योंकि एफ&ओ में भी तो ब्याज भुगतते हैं ना सर। ठीक है, ठीक। आप स्पॉट खरीदेंगे तो आपको आज के भाव पे मिलेगा, एफ&ओ में लेंगे तो आज का भाव प्लस ब्याज जोड़ के मिलेगा। मतलब 1000 का शेयर आपको एफ&ओ में 1000 का नहीं मिलेगा ना, वो 1010 रुपए का मिलेगा आपको, और यहाँ 1000 का 1000 में मिलेगा और ब्याज दे दूंगा मैं, तो वो बात बराबर बैठती कि आप कैश में बोरो करके कैश में खरीद लें या आप एफ&ओ में खरीद लें, इट इज वन एंड सेम थिंग। वो एक पैसा भी कम लगता है ना सर एफ&ओ, तो ब्याज के वाला तो अगर देखें तो 10% में मिलता है। चलो सर, अरे सर ठीक है, ये चलिए अपन इसको कर देते हैं।
और वो स्ट्रेटेजी जो प्रूव करने की बात होती है ना, वो वैसे ही प्रूव होती है, क्योंकि अब मुझे यहाँ 2 स्ट्रेटेजी प्रूव करनी पड़ेगी कि एक तो फ्यूचर भी करेक्टली प्राइस्ड है। मान लीजिए फ्यूचर ओवर वैल्यूड निकल गया तो मेरा ये जो बाय ऑप्शन है मुझे महंगा पड़ जाएगा फ्यूचर में। ये भी हमको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर भी करेक्टली प्राइस्ड हो। कई बार फ्यूचर भी अंडर प्राइस्ड या ओवर प्राइस्ड होते हैं, तो फिर आपको साथ में एक स्ट्रेटेजी और भी यहाँ चलानी पड़ेगी कि जो आइडियल फ्यूचर प्राइस है दैट इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर आरटी, मतलब उसमें ब्याज जोड़ करके आना चाहिए। वो भी एक चीज एडिशनली प्रूव करनी पड़ेगी। वो बात सिर्फ प्रूव करने के लिए इसलिए मैंने वैसा लिखा। तो मैं फ्यूचर में बाय कर लूंगा तो मुझे नहीं देना पड़ेगा कुछ, पर फिर भी उसमें मार्जिन मनी देनी पड़ जाएगी, तो मेरे को उसका ब्याज कंसिडर करना पड़ जाएगा। उसलिए मैंने यहाँ पे इसको कैश मार्केट लिख दिया था। सो वो प्रूव करने के लिए इजी होता है, बस वैसी वाली बात है। तो अभी आप क्या होगा, ये जो पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना सर, तो इसमें आपने यहाँ एक शॉर्ट पोजीशन लिए और वहां आपको ये 9 रुपए का प्रॉफिट देके जाएगी माइनस जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हो। लेकिन अब बात अगर प्रूव करने की है तो सर आधे घंटे का कार्यक्रम है, वो प्रूव होगा और बड़ा बेहतरीन ढंग से परफेक्टली प्रूव होगा। लेकिन हम नहीं अभी सर अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप कहेंगे तो अपन किसी दिन ऑनलाइन आ जाएंगे और वी विल डिस्कस इट सर। जूम कॉल हम 1-to-1 कर लेंगे सर। पुट कॉल पैरिटी बोलते हैं सर इसको एग्जैक्टली। चलिए सर, तो ये एक बात हुई ब्लैक एंड शूल्स की। ये देखिए मैंने पुट कॉल पैरिटी, मैंने उसको मैं ओपन नहीं करना चाहता था, अदरवाइज ये पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला होता है माइनस वीसी प्लस वीपी इज इक्वल टू माइनस वीएस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। अब आप इसको कैश मार्केट से भी चला सकते हैं, फ्यूचर से भी चला सकते हैं। अब मैं एक चीज यहाँ पे सर फाइनली अब और डिस्कस करना चाहता हूं और फिर हम इस ऑप्शन चैप्टर को क्लोज करेंगे और एक थोड़ा सा वो स्वॉट एनालिसिस वगैरह की थ्योरी बची हुई है उसको डिस्कस करेंगे सर। ऑप्शन प्रेजेंटेशन कहाँ चला गया? कुछ अजम्पशंस के ऊपर भी अब यहाँ पे 2 मॉडल है सर, एक ब्लैक एंड शूल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है और दूसरा है ब्लैक शूल्स एंड मैटन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ब्लैक शूल्स एंड मैटन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एक तो दिस फॉर्मूला वाज डेवलप्ड बाय फिशर ब्लैक, मायरन शोल्स एंड रॉबर्ट मैटन और इट्स अ नोबल विनिंग फॉर्मूला सर। नाउ what are the assumptions under the black and Scholes option pricing model? The option is European. आप अमेरिकन ऑप्शन का वैल्यूएशन करना चाहें वो ब्लैक एंड शूल्स से नहीं होता है, उसके लिए आपको बायनॉमियल प्राइसिंग मॉडल यूज करना चाहिए and can only be exercised at expiration. ये ऑप्शन सिर्फ एक्सपायरी पर ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। Number 2, no dividends are paid out during the life of the option. 6 months का ऑप्शन है एबीसी लिमिटेड के शेयर पर,
तो इस 6 महीने में एबीसी लिमिटेड कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, देन ओनली दिस फॉर्मूला विल गिव यू अ राइट आंसर। अगर डिविडेंड देगी तो फिर ब्लैक शूज एंड मेल्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल हमको यूज करना पड़ेगा। मार्केट्स आर एफिशिएंट, दैट इज द मार्केट मूवमेंट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करके और एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मार्केट की मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, it is showing me your internet connection is unstable. Am I audible clearly? Yes. Yes, okay. There are no transaction cost in buying the option. ठीक है सर, ये ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज पर लगने वाला जीएसटी, टर्नओवर टैक्स कुछ भी नहीं लगने वाला है। The risk-free rate and volatility of the underlying are known. Risk-free rate is known, volatility of the underlying is known, and they will remain constant. अगर volatility बदल गई तो फिर ऑप्शन की वैल्यू बदल जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। The returns on underlying are normally distributed. याद है वो ऐसा बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया था, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर थोड़ा सा ऐसा या ऐसा झुका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड कहलाता है। थोड़ा ऊंचा हुआ है तो लेप्टोकर्टिक, नीचे दबा हुआ है तो प्लेटिकर्टिक कहलाता है। वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यूरोपियन ऑप्शन है, नो डिविडेंड इज पेड, मार्केट इज एफिशिएंट, there is no transaction cost, risk-free rate and volatility are stable, and return are normally distributed. These are the underlying assumptions of Black-Scholes model, and if it goes wrong, your option pricing will also go wrong. Formula we have already gone through. This is VC formula, this is VP formula, this is D1 and D2 formula. Now, there is one more thing which is called Black-Scholes and Merton option pricing model. One additional factor here is the dividend yield is also considered over here. I'm sorry. Where is my screen? Yes, it is here. So dividend is also considered. How do I consider dividend now? That's a question. तो सर डिविडेंड कंसिडर करने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप जो VS लेंगे वो करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस PV, प्रेजेंट वैल्यू, ऑफ डिविडेंड ले लीजिए। If it is a dividend paying stock, तो VS is not current value of stock. It is current value of stock minus present value of dividend. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड डिडक्ट करना है। तो सर अब मुझे एक बात बताइए कि अगर डिविडेंड आ जाए जो कि पहले नहीं था, यानी कि अब डिविडेंड बढ़ जाए, इफ डिविडेंड राइजेस, व्हाट विल हैपन टू VC, कीपिंग इन माइंड दिस एडजस्टमेंट? If dividend rises, what will happen to VC? Okay. Amardeep sir is saying reduce, Jitin sir is saying fall, Shubham ji is saying fall. Right, sir. If dividend rises, the present value of dividend will be deducted from here. If I deduct present value of dividend, VS will reduce. If VS reduces, VC will also reduce. So relationship between dividend and call option is inverse. Put option will have a direct relationship. You know why?
क्योंकि डिविडेंड आएगा तो VS कम हो जाएगा, और VS अगर कम हो गया यहां तो VP बढ़ेगा, VS कम हुआ तो VP बढ़ जाएगा। And that's a direct relationship. तो डिविडेंड बढ़ना मतलब VS कम होना, बस। तो जो VS का इंपैक्ट है उस तरह से आप देखेंगे तो डिविडेंड का इंपैक्ट समझ में आ जाएगा सर। अब इसमें सर एक छोटी सी चीज और होती है जिसको कहते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। देखिए अगर यूरोपियन ऑप्शन है तो वो वैल्यू हो जाएगा ब्लैक एंड शोल्स से, लेकिन अगर अमेरिकन ऑप्शन है तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है बायनोमियल प्राइसिंग मॉडल से। लेकिन अगर किसी और तरह का कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है जैसे एशियन ऑप्शन, एशियन ऑप्शन कुछ अलग ही होता है। अभी तो आप क्या कर रहे हैं कि मैंने 950 की स्ट्राइक प्राइस ली, एक्सपायरी पे जाके प्राइस 1100 दिख रहा है तो 1100 माइनस 950 आई विल रिकवर 150, तो आप एक्सपायरी प्राइस ले रहे हैं। लेकिन एशियन ऑप्शन में क्या होता है, एक्सपायरी प्राइस लेने की जगह अगर आपने 6 मंथ्स का ऑप्शन लिया है तो 6 महीने में प्राइस जितना जितना भी अप डाउन हुआ है उन सबका एवरेज प्राइस निकालते हैं और उसमें से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करके और फिर ऑप्शन एक्सरसाइज होता है। तो क्लोजिंग प्राइस भले ही 1100 आया लेकिन एवरेज प्राइस अगर 1200 है, so it will not be 1100 minus 950 is equal to 150 that I will recover. If average price during the 6 months period is 1200, so 1200 minus 950 I will recover 250 as the call option holder, sir. That is Asian option. इस तरह के कुछ डिफिकल्ट ऑप्शन आ जाए तो वो ना तो यूरोपियन से हैंडल होते हैं, ना तो वो ब्लैक एंड शूल से हैंडल होते हैं, ना बायनोमियल से, वो हैंडल हो सकते हैं मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन से। Let me tell you, Monte Carlo simulation is not option pricing technique. Monte Carlo simulation संजीवनी बूटी है, रामबाण दवा। आज के लैंग्वेज में बोले तो स्टीरॉइड्स, कार्टिसोन। जिस चीज का इलाज किसी भी चीज से नहीं हो पाता हो उसका इलाज मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन से हो जाता है। अब मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन को अगर मैं थ्योरी में समझाऊंगा तो शायद थोड़ा समझ में कम जाएगा। हम उसको एक प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करते हैं सर। एक एग्जांपल देखिए सर, काफी सारी चीजें हैं तो हम बहुत स्लो से नहीं जा सकते उसमें। मॉन्टे कार्लो में ऑप्शन प्राइसिंग में नहीं, इन जनरल बता रहा हूं। मुझे एक बिजनेस करना है और उसमें 3 चीजें अनसर्टन है कि कितनी क्वांटिटी हर साल सेल होगी, कितनी सेलिंग प्राइस होगी हर साल, और कितनी वेरिएबल कॉस्ट होगी। राइट सर? तो मैंने सेल्स क्वांटिटी एस्टिमेट करी कि इट विल बी 1000, 1500 और 2000 विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3, 0.5 एंड 0.2। ये चीज मैंने एस्टिमेट कर ली। ठीक है सर। अब ऐसे ही सेलिंग प्राइस को भी मैंने एस्टिमेट करा कि मेरे बिजनेस में सेलिंग प्राइस या तो 100 रुपीज पर यूनिट या 110 या 150 आएगी, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.1, 0.8। वेरिएबल कॉस्ट को भी मैंने, ये भी एक अनसर्टेन वेरिएबल है, ये 80, 90, 100 या 110 होगा विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1, 0.2, 0.1, 0.6। प्रोबेबिलिटी का टोटल हर बार 1 आता है, दिस इज श्योर। अब सर मुझे क्या करना है, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मतलब
प्रैक्टिकली किसी चीज को जमीन पर उतारने से पहले कागज पर उसके ट्रायल रन्स चला करके देख लो। तो जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं ना, उसके पहले उनको जमीन पर जीरो ग्रेविटी वाले रूम में रख करके ट्रेनिंग दी जाती है। वो जीरो ग्रेविटी रूम पता है सर क्या है? वो सिम्युलेटर है। और वो जो एक्सरसाइज वहां चल रही है वो सिमुलेशन है, यानी रियल पोजीशन जैसी एक सिचुएशन छोटा प्रोटोटाइप क्रिएट करके उसमें रन चला के देख लें, और वहीं पे फेल्योर आ जाए तो फिर 500 करोड़ रुपए ना लगाएं, और यहां ये सक्सेस दिखे तो फिर 500 करोड़ रुपए लगा दें। सिम्युलेटर मतलब एक आभासी सिचुएशन, एक वर्चुअल सिचुएशन हम क्रिएट कर ले, पेपर पर चलाएंगे हम इसको। तो सर मैं इस बिजनेस को किए बिना इसका एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूं, तो एक तरीका पता है इसका क्या है? मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उस बॉक्स के अंदर में ना 10 चिट बनाऊंगा, चिट, पेपर चिट फोल्ड करने वाली। उसमें से 3 चिट पर मैं लिखूंगा 1000 फोल्ड करूंगा, बॉक्स में डाल दूंगा। 5 चिट पर मैं लिखूंगा 1500 बॉक्स में डाल दूंगा। 2 चिट पर लिखूंगा 2000 और उसको बॉक्स में डाल दूंगा। 3 5 2 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, तो 10 चिट मैंने डाल दी। ऐसी 10 चिट एक दूसरे बॉक्स में सेलिंग प्राइस की जाएगी, ऐसी 10 चिट एक तीसरे बॉक्स में वेरिएबल कॉस्ट की जाएगी। अब मेरे पास 3 बॉक्स हैं। मैंने एक छोटे बच्चे को बुलाया, उसको बोला बॉक्स 1 को शेक इट वेल एंड ड्रॉ अ चिट, and he draws a chit and the sales quantity is 2000 units। ठीक है, दूसरे बॉक्स चिट वापस अंदर डाल दी, दूसरे बॉक्स से एक चिट निकाली, सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज, वापस अंदर डाल दी। तीसरे बॉक्स को हिलाया, उसमें से एक चिट निकाली, वेरिएबल कॉस्ट इज 90। सो 100 सेलिंग प्राइस, 90 वेरिएबल कॉस्ट, 10 रुपीज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2000 यूनिट, माय प्रॉफिट इज 20,000 रुपीज। मेरा 1 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास 20,000 के प्रॉफिट का बिना बिजनेस किए। ये सर बहुत छोटा सा एक मॉडल है, इससे बड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल चलते हैं। अब एक ट्रायल रन के एक्सपीरियंस से तो मैं, अब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए 18,000 है, सो माय कंट्रीब्यूशन इज 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज 18,000। उसको मैं माइनस करा, 2,000 का प्रॉफिट आया। अरे मैंने बोला इस बिजनेस में तो प्रॉफिट है, चलो करें। नहीं 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 नहीं, एक ट्रायल रन से मैं एक्सपीरियंस नहीं लूंगा, मैं 1,000 5,000 1,00,000 ट्रायल रन चलाऊंगा। 1,00,000 ट्रायल रन पेपर चिट पर मुश्किल है। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, आपको दिख रहा है कि ये एक्सेल है, बट एक्चुअली ये एक्सेल नहीं है। इसके फ्रंट में एक्सेल है, इसके बैक में एक लाइसेंस्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर काम करता है। कितने ट्रायल रन चलाने हैं? मैंने कहा 5,000 ट्रायल रन चला के दीजिए। ओके, अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो आपके पास ये थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा। मेरे पास तो एकदम तेजी से चलता हुआ दिखेगा, वो जूम की प्रॉब्लम है। देखिएगा 5,000 ट्रायल रन शुरू होते हैं अब। दो 2,000 हो गए, 2,700, 3,000, 3,200, 3,800, 4,000, 4,500, 5,000 ट्रायल रन हो गए। इस 5,000 ट्रायल रन में on an average quantity sold आई 1441, on an average selling price आई 140, on an average cost आई 101 and on an average profit आया 55,913। न केवल अब मेरी फिक्स कॉस्ट 18,000 है, मैं माइनस कर लेता हूं तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, मुझे करना चाहिए। न केवल ये फाइनल आंसर आया, बल्कि मुझे स्टेप बाय स्टेप जो पूरा कुछ भी एनालिसिस चाहिए जो किया जा सकता है, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सब कुछ एनालाइज किया जा सकता है कि इस बिजनेस में किस तरह की रिस्क इन्वॉल्व है। ये कहलाता है सर प्रोसेस मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वेरिएबल डिफाइन करिए। यहां 3 वेरिएबल थे, सेल्स क्वांटिटी,
सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिर वेरिएबल एस्टिमेट, वेरिएबल की रेंज एस्टिमेट करिए, जैसे यहां 1000, 1500, 2000, ये 3 और यहां ये 4। डिफाइन द वेरिएबल, estimate the range of variable, assign a probability distribution. The probability distribution you are seeing on the screen is the discrete probability distribution, sir. It can be continuous, normal distribution, positively skewed distribution, negatively skewed distribution, Kurto's leptokurtic platykurtic distribution, triangular distribution, log normal distribution, जमाने की चीजें हो सकती है। Define variable, define range of variable, define probability distribution, start making trial run, calculate result of each trial run, repeat the process for many trial runs, calculate average, and on the basis of that experience, take decision. This is called Monte Carlo simulation, sir. So a typical MCS calculates the model hundreds or thousands of times, each time using a different randomly selected value. हर बार अलग चिट निकाली जाएगी. The completed simulation yields a large result pool, 5,000 results, with each result based on random input values. These results are used to describe the likelihood or probability of reaching various results in the model. फाइनल आंसर तो आ गया कि 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन 20,000 का प्रॉफिट की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50,000 के ऊपर के प्रॉफिट की क्या प्रोबेबिलिटी है, 20,000 से 30,000 के बीच के प्रॉफिट की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑल दोस क्वेश्चंस विल आल्सो बी आंसर्ड. The Monte Carlo method is based on generation of multiple trials to determine the expected value of a random variable. Vital to the execution is assumption that each variable activity being simulated is not influenced by other variable. So variable cost is not influenced by selling price is not influenced by quantity sold. This is the assumption of Monte Carlo simulation. किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स ऑप्शन का वैल्यूएशन अगर हमारे सामने आ जाए, तब फिर हमको सर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन यूज करना पड़ता है. सर अब ऑप्शंस में तो कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, हमारे सिलेबस के लिए दिस इज सफिशिएंट. ये ठीक एक लेवल हमने अचीव कर लिया है. अभी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम एक 5-7 मिनट का आज टी ब्रेक नहीं लेंगे सर, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा. एक इनफॉर्मल, महात्मा गांधी ने कहा था कार्यांतर ही विश्राम है, चेंज ऑफ एक्टिविटीज रेस्ट. So now I'm offering you one change of activity, sir. In the chat window, I have posted one link. This is one feedback form. You can say networking form. So RVO अपनी जगह पर अपना फीडबैक लेगा, RVO सारी फैकल्टीज का भी फीडबैक लेगा, मैनेजमेंट का भी लेगा. आई एम नॉट टेकिंग दैट. मैं सिर्फ अपने लिए फीडबैक ले रहा हूं. आप इसमें चाहें तो एनोनिमस भी रह सकते हैं, चाहें तो डिटेल दें तो बेटर है सर. आपकी पर्सनल डिटेल भी मैं इसमें पूछ रहा हूं कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ करते हैं. पता नहीं, कल शायद साथ में हमको असाइनमेंट करें. मे बी टुगेदर वी कैन सिनर्जाइज. जस्ट क्लिक दिस लिंक सर एंड fill it up with your all details. 5 मिनट के लिए आप चाहें तो कैमरा बंद कर सकते हैं, फिर वापस ऑन कर लीजिएगा फीडबैक के बाद. ओपन हो रहा है ना सर फॉर्म? ये
ये है ये है So I just request everybody to do it now, क्योंकि ये सेशन खत्म होने के बाद सब प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी सर। फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। Amardeep sir has done it, Parveen sir has done it, Vishwanath sir has also done it. At least write your details. सर कभी वैल्यूएशन के लिए कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं सर फोन पे। सर डेफिनेटली ये आपको कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट आता है, जस्ट फील फ्री। मेरा नंबर उधर पीडीएफ फाइल पर भी है। जी 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 सर, मैं एक बार यहाँ पोस्ट भी कर देता हूँ। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हूँ आपके, बट व्हाट्सएप ग्रुप तो कई बार नहीं भी देख पाते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो आप मुझे पर्सनली कोई भी डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर वो फिर व्हाट्सएप पे नहीं सॉल्व होता है तो सर हम फिर कॉल पे भी बात कर लेंगे। सर अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन कभी अरे के साथ कोई वैल्यूएशन के लिए आता है तभी वेलकम। मतलब अभी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो फैंटास्टिक, अदरवाइज भी वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आती है, जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट मी। मेरे लिए भी वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही होता है। मोर यू वर्क मोर यू लर्न सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कोई सिंपल डाउट्स हैं, मॉडरेट डाउट्स हैं तो आप वैसे ही मुझसे पूछ लें, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत कॉम्प्लेक्स कोई असाइनमेंट है तो हम साथ में कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। Who is left? I hope everybody has done it. Anju ma'am, have you submitted it? Sanjay sir and Atul sir. Yeah, submitted. I have submitted. Okay, great sir. Sanjay sir probably has also submitted. And Shalinder sir. Okay, done it. Fantastic. Okay. Okay, probably Anju madam is left. Do it, ma'am, whenever you get time at the earliest. So here I go now. This is great. Okay. Yes, sir. मेरे एक्चुअली थोड़ा नेट में इशू है, कैन यू शेयर द लिंक अगेन? वो श्योर सर, बिल्कुल। मैं वापस से लिंक पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज द लिंक सर। ये सारी चीजें सर एक बार आपको वापस पढ़नी होगी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम इन सबको अप्रोच किया है तो आई अंडरस्टैंड। अभी आप मुझे फर्स्ट टाइम बिठा करके इनकम टैक्स पढ़ा देंगे तो मेरी हालत इससे ज्यादा खराब हो जाएगी। सीए डेज में पढ़ा था सर, वो दिन और अभी का दिन, उसके बाद टैक्स प्रैक्टिस की नहीं है, तो
कंपनी लॉ है, सेबी गाइडलाइन है, ऐसे मुझे पढ़ा देंगे तो मेरे तो सब सर के ऊपर से चला जाएगा। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गिव सम टाइम टू इट, राइट सर। अभी क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हमको इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्लाइंट कि वो हमको कैश फ्लोज का फोरकास्ट दे, कैश फ्लो नहीं तो कम से कम बैलेंस शीट P&L का फोरकास्ट दे, और हम उसको रिव्यू करें, हमारी ड्यूटी ये बनती है। पर हम कैसे रिव्यू करें, उसके लिए तो हमको नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बिजनेस होने के साथ साथ बिजनेस की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस होती है उसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। यानी जो अब हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं उसमें these are strategic decision making tools. So your chief executive officer of the company, your director of finance, CFO of the company, you are in the board of directors of the company and you have to take decision. तो ये कुछ चीजें आपके लिए यूजफुल होती है। So we will be discussing Michael Porter's 5 forces, core competencies model, SWOT analysis, General Electric model, which is also named as McKinsey's model, Arthur D. Little matrix, known as ADL matrix, and the pestle approach. So first one is Michael Porter's 5 forces. खुद का बिजनेस हो या फिर आप वैल्यूअर हैं और क्लाइंट का बिजनेस का आप एनालिसिस कर रहे हैं, Michael Porter developed the 5 factors model as a way to organize information about an industry structure to evaluate its potential attractiveness, क्योंकि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी तभी उसमें काम करने वाली कंपनी फ्यूचर में ज्यादा पैसा बना पाएगी। So one thing is bargaining power of the buyers. Say let's talk about your company only. You have 3 buyers only. One buyer is out of your 100% of sale. One buyer is having 70% buying, second is having 20% buying, third is having 10% buying. तो प्रैक्टिकली आप एक ही बायर पर डिपेंड कर रहे हैं सर, ऐसे में उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। अगर वो नाराज होता है तो आपका बिजनेस कोलैप्स होता है। रादर देन अगर आपके 5000 1500 बायर्स हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज्यादा नहीं होती है। The bargaining power of buyer generally determines the ability of the buyer to push the price down. This happens when the buyers are concentrated or when the volume purchased by buyers is very high. ये एक नेगेटिव पोजीशन है, इसको आप या तो कैश फ्लोज में एडजस्ट करिए लोअर सेलिंग प्राइस के थ्रू, या इसको एक बिजनेस रिस्क मानते हुए हायर रेट से कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, अगर रॉ मटेरियल का आपका सिर्फ एक ही सप्लायर है जो मार्केट में कई लोगों को सप्लाई करता है, तो हिज बार्गेनिंग पावर विल बी मोर, और वो कभी भी प्राइस बढ़ाएगा आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ देयर आर मेनी सप्लायर्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो हम एक को स्विच करके दूसरे पे जा सकते हैं, लोअर प्राइस हमको मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बनी रहेगी। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सर ये सबसे डेंजरस थ्रेट है रियल लाइफ का, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। फर्स्ट 2 थिंग्स एंड नेक्स्ट 2 थिंग्स आर प्रिडिक्टेबल। You can see it coming towards you. You can prepare yourself. You can defend yourself against it. At least you can try for it. But threat of substitute is all of a sudden. It's like the guerrilla war. Suddenly you're from nowhere and they attack you and you are not prepared. Threat of substitute. वो कैमरा बनाती थी ना कंपनी, वो कैमरा रील, फूजी, कोडेक, डिजिटल कैमरा आया, बिजनेस वाइप्ड आउट, खत्म। डिजिटल कैमरा के बिजनेस को एक दिन मोबाइल ने खत्म कर दिया। मोबाइल फोन तो खैर कई चीजों को खा गया, डिजिटल कैमरा और रील वाला कैमरा उसमें से एक हुआ। कभी आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट डेवलप हो जाएगा, यू नेवर नो, और सडनली वो आपके ऊपर अटैक करेगा एंड यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू मैनेज इट, क्योंकि वो तो डिफरेंट जार्गन से आ रहे हैं, वहां तो आपका कुछ समझ ही नहीं है उस बिजनेस में। तो आपको थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स,
ये एक रेगुलर चीज है। क्या आपका बिजनेस ल्यूक्रेटिव है, इंडस्ट्री में खूब प्रॉफिट है, क्या दूसरे लोग अंदर आसानी से आ सकते हैं? आर देयर एंट्री बैरियर्स पुट बाय द गवर्नमेंट और पुट बाय द साइज ऑफ द इंडस्ट्री? देन फाइन, नोबडी विल कम इन। बट इफ देयर आर नो एंट्री बैरियर्स और इजी एंट्री बैरियर्स आर देयर, देन दिस बिजनेस इज नॉट वेरी मच प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। हमारे यहाँ तो एक दुकान चलती तो उसके देख के लाइन से 4 दुकानें उसी के पास में खुल जाती है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, राइवलरी अमंगस्ट फर्म, एग्जिस्टिंग कंपटीशन किस तरह की? इफ इट इज ऑलरेडी कट थ्रॉट कंपटीशन, then the profitability will be normal, no extra profit can be made. And if you are in a kind of monopoly oligopoly situation or ease at competition, then there are more profit potentials. अब ऐसा ही एक दूसरा मॉडल है, कोर कॉम्पिटेंसीज मॉडल। यानी बाकी सारी बातें छोड़िए, अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो आपका कोर कॉम्पिटेंस है, जिसको कोई दूसरा पर्सन इजीली इमिटेट नहीं कर सकता, then you are the winner, then you will survive, you will make profit and you will remain there for a long period of time. So core competence is actually important. Core competency is a distinctive or unique skill or technological know-how that creates distinctive customer value. Apple को आप देखिए, the type of processors, the type of hardware, the type of software they use in iPhone, iPad and everything, unbeatable. कोई क्रैक ही नहीं कर सकता है। तो एक बार मैंने एप्पल आईपैड खरीदा और but later I realized I am the Windows and Android person, I am not Apple. In this world there are 2 type of people, Apple people and other people. So I am other. I invested 1 lakh plus money in the iPad with all kind of stuff. In 3 days I realized this is not my cup of tea. फिर मैंने उसको रख दिया। बाद में मैं उसका पासवर्ड ही भूल गया, 4 digit पिन। Nearly impossible to crack. डेटा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। खैर उसमें मेरा डेटा नहीं था। ओके, सेम ईयर शुभ। तो फिर वो मैंने 5,000 रुपए देके उसका पासकोड तोड़वाया। सर एप्पल की हर चीज महंगी पड़ती है। वो भी पासकोड ऐसे टूटा है कि अब मेरा डेटा जो पुराना था वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो अब एक नया प्रोडक्ट हो चुका है। वो जो गया वो तो गया, बट हाँ आगे अब आप इसको स्टोरेज फ्रेश 2 पहुंच के नया यूज कर पाओगे। कोर कॉम्पिटेंस है सर, कुछ भी कोई दूर तक कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। एंड्रॉइड में 16 कोर प्रोसेसर आ जाए तो एप्पल का 3 कोर 4 कोर प्रोसेसर उनसे मच बेटर होता है। गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी है सर, सर्च इंजन, कोई इमिटेट नहीं कर सकता आज तक उसको। हैं बाद में लोग आए लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। 3 tests are useful to identify core competence. End product is benefit. मैंने जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है, पर क्या वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है? नंबर वन एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट। गूगल की बात करिए, एंड प्रोडक्ट, वाह व्हाट अ सर्च इंजन, जो चाहे सब मिल जाता है। हमारी जिंदगी अगर फोन गूगल नहीं हो, सर्च इंजन नहीं हो, तो हम तो काइंड ऑफ अनाथ हो जाएं। Access of a wide variety of market. Google is present in many countries in the world. Difficult for competitors to imitate, क्योंकि लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने जो एल्गोरिथम अपने कॉलेज डेज में बनाया था और बाद में जो इंप्रूवमेंट किया, that was so robust that you cannot create such a thing. तो सर हम उसको कॉपी कर लेंगे। वो तो हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं फटाफट। तो वो मैंने फिर वो तो पेटेंटेड होता है ना, कुछ नहीं कर सकते। परवीन जी सेइंग ट्राई ओएलएक्स। सर बहुत ही अच्छा किस्सा है, टाइम दो, 1 मिनट में सुना देता हूँ। मैंने ओएलएक्स पे डाला वो आईपैड, मैंने बोला 1 लाख का है, मैं 70,000 में जो भी प्राइस है मैं दे दूंगा, व्हाटएवर, एक प्राइस डाली। तो मुझे एक भाई का मेल आया कि मैंने 90,000 डाला था, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू था उस टाइम पे, 1,10,000 मैंने लगाया था। तो एक भाई का ओएलएक्स पे रिप्लाई आया कि मैं 90,000 नहीं, मैं आपको 93,000 दूंगा, 3,000 पोस्टेज चार्जेस, इसको बैंगलोर मेरे भाई को भेज दो और मैं एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालूंगा, और वंस इट इज डिलीवर्ड ओवर देयर देन यू विल गेट द मनी।
I smelled that this is a scheme. सामने वाला बार्गेन नहीं कर रहा है, कैसा आदमी है? मैं 90,000 बोल रहा हूँ, 90,000 में अग्री है, कुरियर चार्जेस दे रहा है, वहीं शक हो गया मुझे। 1.5 महीने बाद न्यूज़पेपर में आया कि ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा गया। बार्गेन फिर वो अल्टीमेटली 60,000 में सेल किया सर मैंने 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर जो थिंग इज कोर कॉम्पिटेंसी आपको एक बार अपनी समझ में आ गई ना। कोर कॉम्पिटेंसी में भी इन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके पास है और किसी के पास नहीं है, और कोर कॉम्पिटेंसी में भी इन योर कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। यू आर गिफ्टेड कि आप चीजों को बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर देन अच्छा, कोर कॉम्पिटेंसी जिंदगी भर नहीं चलती है। People one day will either imitate or come up with a better product. So you need to continuously evolve also. Like you guys, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, अपने आप में सीए बनना, सीएस बनना इतना टफ काम है, but you are continuously evolving ना. You have done the IP course, you are doing valuation course, you have done forensic audit, you have done this, that. You know why? Continuously evolve. और अब आपका कोर कॉम्पिटेंस होगा कि हम इंसॉल्वेंसी केस करते हैं और वैल्यूएशन करते हैं। सो दैट्स बेटर। कई एग्जांपल है, आइकिया इसका एग्जांपल है, टेट्रा पैकिंग उसका एग्जांपल है, बट ठीक है, हमको कंसेप्ट समझना, अभी ज्यादा इलॉबरेट नहीं करते हम। देन दिस इज स्वॉट एनालिसिस। Now this SWOT analysis requires the generation of a series of strategic alternatives or choice of future strategies to pursue given the organizational internal strengths and weaknesses and external opportunities and threats. SWOT is strength, weakness, opportunity, threat. बड़े बिजनेस से लेके छोटे से इंडिविजुअल तक SWOT एनालिसिस हो सकता है। Strength and weakness are your internal, opportunities and threats are external. So list your strengths, list your weakness, list the opportunities and list various threats. तो suppose मैंने अपनी strength का analysis किया as a valuer, as a practitioner. So I'll say my clarity of concept in my brain is crystal clear thoughts I have, and crystal clear thoughts I can communicate. That's my strength. So what is my weakness? I am a bad marketing guy. Marketing आती ही नहीं है. Shalinder sir is saying, okay, I'm discussing sir. So marketing नहीं आने की वजह से मैं अपना प्रोडक्ट अपने आप को नहीं सेल कर सकता उतना अच्छा. You go to various conferences and seminars and meet people and exchange card and tell them about your work and talk. You need to be very social. You need to be very good at networking. So that is my weakness. Opportunities, draft valuer bill is there. Valuation का काम बहुत बढ़ने वाला है. So that is the opportunity. And the threat is, there are many threats. So one of the threat is कि ये bill आए ना. Other threat is कि there will be thousands of valuer in 4-5 years time. So the space will be so competitive, and I'm sitting at a class B city, not a class A. That makes some difference actually. So if then when there are more valuers in class A cities, then the work will not get down over here. So that those are the opportunities and threats. But honestly speaking sir, हम opportunities और threats को बहुत अच्छा नहीं पहचान पाते हैं. तो best method क्या होता है? Continuously evolve करते रहिए. Keep throwing stones in various directions. You never know कौन सा पत्थर निशाने पे लगेगा. आपको भी नहीं पता होता है. So don't speculate on one thing too much. आप हर जगह पे एफर्ट करते जाओ. जो दरवाजे खुलते जाए वहां आगे बढ़ते जाओ, जो बंद हो जाए वहां सर मत पटको, दूसरे रास्ते पे चले जाओ. Sir, one question: when will the course for IP for other person other than having 10 years?
सर वो तो अभी 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आईपी में, तो उससे के बिना कोई रास्ता नहीं है। सो शैलेंद्र सर, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन इफ यू कीप फ्लोइंग तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यहां बैठ के बहुत आगे की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, इफ यू कीप फ्लोइंग तो आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज आती जाती है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, if you know it then you can play on your strength। उस एरिया में मत काम करिए जहां आपकी वीकनेस है, उस एरिया में काम करिए जहां आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर वीकनेस को इंप्रूव करने पर काम करें। अपॉर्चुनिटी है तो इनकैश करिए, थ्रेट है तो उससे लड़ने के लिए तैयार होइए या सरेंडर करके दूसरा काम करना शुरू कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट मॉडल, fourth model is General Electric model, GE. What is GE model, sir? It is also named as McKinsey's model. Okay, one question has been posted. Because as an individual, we are unable to assess our threats. So what should be the tool? Yes, sir. As an individual, we are unable to. Sometimes we see the threat, but we are so occupied with our existing affairs that kind of we avoid it. We try to avoid it. ऐसा होता है सर, हम अपने आज के काम में इतने ज्यादा मशगूल होते हैं सर। वो there are three things ना, wasting time, trading time and investing time. We are so busy trading time कि हम investing time को भूल जाते हैं। होता है सर, हम भूल जाते हैं। तो अगर मैंने कहा कि आई वाज सो मच ऑक्यूपाइड विद द एग्जिस्टिंग थिंग्स कि आगे कोई अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आ रहे हैं उसको देखने और उससे लड़ने का टाइम ही नहीं मेरे पास। मैं अगर काम कम करता हूं तो मुझे अपना जो टाइम ट्रेड होता हुआ है वो कम दिखता है कि अरे यार मैं अपना टाइम बेच के पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूं। इसलिए हमेशा अपनी कैपेसिटी से कम काम करिए सर। यस, आई एम सेइंग समथिंग रिडिकुलस बट इट वर्क्स। अपनी कैपेसिटी से कम काम करिए और अपने आप को कुछ फ्री टाइम दीजिए पीरियोडिकली, और उस टाइम में इवॉल्व होइए, सोचिए, नया कुछ करिए। एज अ हॉबी कर लीजिए, एज अ बिजनेस करिए, और एक दिन शायद आप उसी के ऊपर सरवाइव करें। सो दैट इज द थिंग सर। Okay. So now this thing is, this model has been developed by General Electric company with the assistance of continuing firm, consulting firm McKinsey and company. अभी जैसे शायद विश्वनाथ सर ने पूछा था, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ रिपीटिंग वन थिंग? सर राइट सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अपने स्टूडेंट्स वाले साइड पर वो चीज लगने लगी थी, और इसीलिए मैं इस वैल्यूएशन कोर्स में एंटर हो गया, बिकॉज इट अट्रैक्टेड मी कि, एंड आई डिड CFA, you know, in 2006 when I started doing CFA, तो मुझे डिस्करेज करा, वो USA में है, बोले you are well settled, you are not in a job, why are you doing it? मैंने बोला मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ। Same thing I did with the valuation course also. I just entered because I thought it's exciting and it gave me an opportunity. मैं अपॉर्चुनिटी देख के इसमें एंटर होता, कुछ भी नहीं हो सकता था। I entered because I found it to be exciting, challenging, कुछ नया करने को मिलेगा, थोड़ी बोरियत भी दूर होगी। So I entered here and doors of opportunities have opened in valuation practice. So General Electric model was developed for General Electric by McKinsey. So it can be named as McKinsey model also. दो चीजें हम यहाँ देखते हैं सर, एक बिजनेस की स्ट्रेंथ कि हमें क्या ताकत है, और दूसरा मार्केट की अट्रैक्टिवनेस कि मार्केट में क्या अवेलेबल है। इन दोनों को मिला के 3 कलर डेवलप होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन इज गो, मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट, बी अग्रेसिव। येलो इज कॉशन, स्टॉप, सोच समझ के पैसा लगाओ। रेड इज परमानेंटली स्टॉप, अब पैसा मत लगाओ, जो है वो भी निकाल दो। मार्केट अट्रैक्टिव है कि नहीं वो जज होगा साइज ऑफ द मार्केट से। बड़ा साइज है तो मार्केट अट्रैक्टिव है,
मुकेश अंबानी जी कई बिजनेस स्टार्ट एयरलाइन में, वो है ही नहीं। उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इतने रेगुलेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो इज नॉट देयर। जिस दिन उनको लगेगा कि ये मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ लोगों का मार्केट है ना, मोबाइल फोन तो हर आदमी का मार्केट है। इसलिए क्या मार्केट का साइज बड़ा है, क्या मार्केट फ्यूचर में ग्रो करेगा, इज दिस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल, व्हाट इज द करंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री, ये सब चीजें बताती है कि वेदर यू शुड एंटर इनटू दिस बिजनेस और नॉट। ओके, मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट क्या मैं इस काम को करने के लायक हूं? सो व्हाट इज माय प्रेजेंट मार्केट शेयर, कैन माय मार्केट शेयर ग्रो इन फ्यूचर, व्हाट इज माय प्रेजेंट प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, व्हाट इज माय ब्रांड इमेज, आर माय कस्टमर्स लॉयल टू मी, व्हाट इज माय प्रोडक्शन कैपेसिटी, व्हाट आर माय टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, उससे मुझे अपने बारे में पता चलेगा। अब सर, ये साइड पर मार्केट अट्रैक्टिवनेस है, ये साइड पर बिजनेस स्ट्रेंथ है। सिर्फ मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज वेरी हाई, बहुत बड़ा मार्केट है, फ्यूचर में ग्रो करेगा, प्रॉफिटेबल भी है, एंड माय पोजीशन इन द मार्केट इज स्ट्रांग, ग्रीन, मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट, गो अग्रेसिव। मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज वेरी हाई, but my position is average, ठीक है सर, still I'll go ahead. Market attractiveness is high, but my position is weak. बाजार कितना भी बड़ा होगा, but इस समंदर में मैं नहीं तैर सकता, cautious. Market attractiveness is medium, I am strong, go ahead. Both are average, me and market, cautious. Market medium, I am weak, stop. Market is low, छोटा बाजार है, प्रॉफिट नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग, स्टिल बी कॉशियस। आप स्ट्रॉन्ग होके क्या करेंगे, बाजार में कुछ है ही नहीं। मार्केट लो, यू आर एवरेज, मार्केट लो, यू आर वीक, रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, येलो येलो येलो, जी मॉडल सर। ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स, ADL मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो यहां है सर, उसके पहले यहां पर है कि हम दो चीजें देखते हैं। एक, माय कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री, ये जी मॉडल से मिलता है, वो 3x3 मैट्रिक्स था, ये 5x4 है। और ये स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, इंडस्ट्री इज इन एम्ब्रॉयनिंग पोजीशन, नेसेंट स्टेज, इन्फेंट स्टेज में इंडस्ट्री स्टार्ट ही हुई है, इंडस्ट्री ग्रोथ में है, इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है, इंडस्ट्री एजिंग एंड डिक्लाइनिंग है। In my position in the industry, dominant kind of monopoly, strong, favorable, tenable means vulnerable, and weak मतलब बिल्कुल खत्म। एक रो को हम एक्सप्लेनेशन लेते हैं, बाकी सबका वैसे ही आएगा। So I am dominant, and market तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, फास्ट ग्रो, अग्रेसिवली पैसा लगाओ, बिल्ड बैरियर्स, मैं आ गया हूं और किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, एक्ट ऑफेंसिवली, जो अंदर आ रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दो, दैट्स बिजनेस। माय पोजीशन इज डोमिनेंट, और मार्केट ग्रोथ स्टेज पे आ चुका है। ई कॉमर्स मार्केट इन इंडिया ग्रोथ स्टेज पे है, Amazon, फ्लिपकार्ट डोमिनेंट पोजीशन में है, फास्ट ग्रो, बहुत पैसा लगाओ, नए एम्प्लॉय लाओ, अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, लेकिन साथ में अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने का काम करो, renew and defend your position and act offensively, अभी भी दूसरे लोगों को कुचलना है आपको। मार्केट डोमिनेंट बट मार्केट इज मैच्योर, तो हम मार्केट में मेरी पोजीशन डोमिनेंट है, बट स्टील है, दूसरे कुछ बिजनेस है, वो सब मैच्योर पोजीशन पे आ चुके हैं, ऑटोमोबाइल है, ग्रोथ है लेकिन तो भी टुवर्ड्स मैच्योरिटी, ग्रोथ तो पॉपुलेशन की वजह से। Defend your position, attend cost leadership and act offensively। अभी फास्ट ग्रोथ नीचे आ जाएगा, आपकी प्रायोरिटी रहेगा डिफेंड पोजीशन। मार्केट इंडस्ट्री एजिंग हो चुकी है, डिफेंड पोजीशन, रीन्यू, कंसीडर विड्रॉल। माय पोजीशन इज फेवरेबल, नॉट डोमिनेंट, एंड मार्केट इज एजिंग, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मींस डिसइन्वेस्ट।
So this is the industry life cycle stage, and this is my position in industry. ADL metrics, strategic decision making tool. This is, sir. And the last one is pastel. P for political. Political factors are how and to what extent the government intervenes in the economy and the activeness of the corporates. जिस कंट्री में पॉलिटिकल इंटरवेंशन बिजनेस में बार बार बहुत ज्यादा वो अनफेवरेबल पोजीशन है आपके लिए, और गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगी हो, जैसे कि करंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, सो दैट्स गुड थिंग फॉर बिजनेस. इकोनॉमिक, ठीक है, गवर्नमेंट लिबरल है, बट मेरी इकोनॉमिक पोजीशन वेनेजुएला जैसी हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूंगा? आई कैन नॉट डू एनीथिंग. मेरी इकोनॉमिक पोजीशन इंडिया जैसी है, चाइना जैसी है, जापान जैसी है, वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड अपॉर्चुनिटी. सोशल और सोशियो कल्चरल ऑल्सो आई कैन से. स्पेशल फैक्टर अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड हाउ कंपनी ऑपरेट्स. आप देखिए ना, हिंदुस्तान में कितना ही वेस्टर्न कल्चर आ जाए, हम आयुर्वेद से और पुरानी चीजों से आज भी जुड़े हैं. बाबा रामदेव ने पतंजलि से ये प्रूव कर दिया, और उसके बाद सारी एफएमसीजी कंपनियां उस रास्ते पे चल पड़ी. उनके टूथपेस्ट में भी अब तुलसी है, नमक है, पता नहीं क्या क्या है, लौंग है. उन्होंने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए मार्केट में. उनको लगा कि हिंदुस्तान की जनता को इसी से प्यार है, यहाँ कोको कोला से ज्यादा जो है वो तुलसी काढ़ा बिकने वाला है, तो वो बनाओ और बेचो. सोशियो कल्चर इम्पैक्ट. Technological factors that can determine the barriers to entry, minimum efficient production level, and influence outsourcing decision. Legal factors का मतलब है कि लॉ किस तरह से हमको सपोर्ट करता है या पनिश करता है. एंड एनवायरमेंटल, बहुत सारे एक्टिविस्ट अगर आपके यहाँ पर है. कुछ चीजें तो आपका बिजनेस एनवायरमेंट से डायरेक्ट अफेक्ट होता है नहीं होता है पर डिपेंड करती है. टूरिज्म इंडस्ट्री है, फार्मिंग है, इंश्योरेंस है, वो सब डायरेक्टली अफेक्ट होती है, बट इनडायरेक्टली भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती है. आपको बड़ा सारा कोल माइन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वहां एक्टिविस्ट आ गए कि कोल माइनिंग होगी तो फिर यहाँ पे लैंडस्लाइड होगी, वाटर पॉल्यूट होगा, व्हाटएवर, तो यू विल सफर, एंड वाइस वर्सा. So this is pastel analysis, sir. You need to do it before taking any strategic decision. So now there are some simple questions on this. The capability of an organization which help it gaining competitive advantage over its competitor. Competitive advantage over its capability of organization which helps it in gaining competitive advantage over its competitor is classified as managerial competency, core competency, organizational competency, or workforce speciality. Right, sir? Correct answer is B actually. C is just to confuse you कि आप मैच करेंगे organization नहीं. This is core competency. Which of the following SWOT elements are internal factors for a business? सर इंटरनल आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस. मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, मार्केट में अवेलेबल थ्रेट्स. अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आर एक्सटर्नल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल. सो आंसर इज ए. इन विच पोजिशन ऑर्थर डील लीडल मैट्रिक्स कंपनीज आर जनरली, ये हमने पूरा मैट्रिक्स पढ़ा नहीं था. वल्नरेबल इन फेस ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन from stronger and more proactive companies in the market.
अगर आप डोमिनेंट हैं तो कंपटीशन से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, फेवरेबल हैं तो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, टेनेबल हैं तो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, या स्ट्रांग हैं तो कंपटीशन से ज्यादा अफेक्ट होते हैं? You are affected by competition with bigger players if you are dominant, tenable, favorable or strong. Sir, the answer is actually tenable. तो dominant तो सबसे ऊपर है, वो दूसरों को परेशान करेगा. फिर strong है, उसके बाद favorable है, उसके बाद tenable है, उसके बाद weak है. वीक इसमें दिया होता तो हम उसको चूज करते, पर वो नहीं दिया है, तो फिर डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल, वीक. From the list below, identify which factor does not form one of the 6 key areas of Pasteur's analysis. That's correct. Ecological. बाकी सब तो हैं पेस्टल में. In a SWOT analysis, the difficult cash flow situation of the business will be treated as difficult cash flow situation of the business. Difficult है तो strength तो नहीं हो सकती, difficult है तो opportunity भी नहीं हो सकती. So it must be either weakness or threat. Situation of the business, not of the industry, huh? So it must be weakness. थोड़ा लैंग्वेज की क्लैरिटी नहीं है, बट इट इज योर पर्सनल सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन. So that's it for the day, sir. So I would like to say all the best to all of you. काफी सारा मटेरियल मैंने जी ड्राइव पर ऑलरेडी शेयर कर दिया है सर, और बचा हुआ भी मैं बहुत जल्दी से जो आज पढ़ाया हुआ है वो भी सारा कुछ आई विल पुट ऑन द जी ड्राइव immediately. Thank you so much for your lectures throughout last 3 days. We have never seen you, tired. You are always active. Sometimes we thought that being a teacher, you are always been, very passionate to give lecture. Thank you, sir. Even though it should be from our side that we should have been, more passionate than you. Thank you, sir. Thank you for your kind words of थैंक यू appreciation. सर, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी क्लास लेगी. सर मुझे कुछ चीजों का असेसमेंट फिर भी हो गया है, आप अभी सब अच्छा बोलेंगे, लेकिन आई नो कि वो टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से हम चीजों की बेसिक्स में डीप डाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए एक एवरेज पेस मेंटेन करनी होती है वो भी कहीं जरूरी हो जाती है. तो आई नो कि जहां जिस चीज पे हमारा बैकग्राउंड नहीं होता वो चीजें फिर हमको ऐसी ओवरहेड लगती है कि अरे ये तो सब सिर के ऊपर से चली गई, बट एक बार आप उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें वापस अंदर आ जाएंगी. तो आई रिक्वेस्ट कि आने वाले 3-4 दिन में ही वापस आप नेक्स्ट क्लास लें, उसके पहले ही एक बार इससे एक जस्ट क्विक रीडिंग ही कर लीजिए, ज्यादा परेशान भी ना होए, तो भी ये एटलीस्ट रह जाएगा दिमाग में सर. Yes, Jatin ji, I wish that all of you clear the examination in first attempt itself. All right, sir. So I'll take your leave. Remaining things I will post soon. Thank you, Parveen sir. Thank you, sir. Thank you, Vishnu. Thank you. Tata, bye bye. Bye-bye. Bye. All right, sir. Thank you. एक पार्कशीट के मोड़ पे एक बच्चा गुलदस्ता लेके खड़ा था, तो एक जन ने उससे गुलदस्ता लिया तो उसकी नजर उसके पाँव की तरफ थी. वो बच्चा भी बेचारा नंगे पाँव था, तो चप्पल नहीं पहनी, धूप का महीना था, यही सुना मेरे को. तो
ये सब बोल रहे हैं